इस कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश के तमाम आयामों पर विकास को लेकर, कृषि के क्षेत्र से लेकर हम चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है मुख्यमंत्री जी आपका। और मैं चूंकि मध्य प्रदेश की अपनी एक गौरवशाली परंपरा है, मैं स्वयं मध्य प्रदेश से हूं, तो मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है कि मध्य प्रदेश से हूं। कुछ तो है जो हमारे साथ शेष रहता है, इसलिए मध्य प्रदेश विशेष रहता है, हमारी गौरवशाली परंपराओं के तौर पर, हमारे अपनी संस्कृति के तौर पर। और कार्यक्रम की शुरुआत में देरी न करते हुए सबसे पहले इस खास कार्यक्रम में जो चीज है, हम सबसे पहले जिसकी शुरुआत करेंगे वो है आजादी के अमृत महोत्सव पर इंडिया टुडे का विशेषांक स्पेशल एडिशन, जिसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा राज सर से। तो ये अनावरण कार्यक्रम, जिसको अभी हाल में मुख्यमंत्री ने अनावरित किया, पुस्तक का विशेषांक। अब कार्यक्रम की शुरुआत से पहले बात आती है कि इस कॉन्क्लेव का मकसद क्या है, क्या मंशा है। तो इस विषय पर, क्योंकि हमने कहा जैसे शुरुआत में कि मध्य प्रदेश की अपनी उपलब्धियां हैं, और खासतौर से अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश पुरस्कृत भी होता है, कृषि कर्मण अवार्ड भी मिलता है, वो तमाम चीजें हैं। तो इस कॉन्क्लेव में बहुत कुछ खास है, जिसके विषय में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आई वुड लाइक टू इनवाइट राज चिंगबा सर, ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर, पब्लिशिंग इंडिया टुडे ग्रुप। वेलकम। Thank you, Amit ji, Mukhyamantri ji Shivraj Singh Chauhan ji. Ladies and gentlemen, I am delighted to welcome you to India Today magazine's first edition of Madhya Pradesh First. We are also deeply honored, Mukhyamantri ji, that you could come and deliver the welcome address despite your busy schedule. And ladies and gentlemen, let's give a very warm round of applause for this. Mukhyamantri ji, I come from Karnataka, but I have a family connection to Madhya Pradesh. My wife's father and all her mamas grew up in Indore, and her grandfather was principal of Holkar College, and her grandmother was principal of the Sai School in Indore. So while she speaks Shuddh Hindi, I don't, because she laughs whenever I make an attempt to do so with my South Indian accent. So I have a complex on this. So I will stick to speaking mostly in English in my welcome address. So to begin, Mukhyamantri ji, for the first 2 decades, India Today magazine has pioneered the concept of the State of the State survey. And I know when we came to your house previously, you have all the state awards lined in your cabinet over there. And this annual survey is considered to be the gold standard for judging the performance of various states. More recently, we started what we call the State of the States, where we focused on a particular state. While the State of the States was a national survey, the State of the State looked at state development, because the state is the microcosm of India's development. The district first, the state, and then the country. If the district doesn't develop, the state doesn't develop. If the state doesn't develop, the country doesn't develop. And so we started the State of the State, and we had come to Madhya Pradesh, and thank you very much, sir. In 2018, you were there to distribute the awards to the various winning states. So we have taken this step further, and we have now started what we call Madhya Pradesh First, because we feel that we have already awarded the districts, we have analyzed the entire development. Now the idea is to present how can Madhya Pradesh, under your leadership and political leadership, become the leading state of the country. That's the whole endeavor of this particular conclave, and we have focused, you've been a veteran leader, more than 15 years now as Chief Minister, as well as this state is very key to the development of India, and the idea is to put together the best brains to come up with an agenda, a vision that you could implement, a lot of suggestions that are there, and we have put together in this conclave major sessions that would look at how to add great value to agriculture, which is one of the mainstays, how to maximize industrial development, what are the challenges for Madhya Pradesh to achieve its target of what you said, $550 billion economy, and how to push forward women, Nari Shakti, which you are focused on,
also how to harness the energy of youth, Yuva Kelly, and interesting panels to discuss the politics of the state. So apart from you, Mukhyamantri ji, we also have pleasure in and the honor that Union Minister for Civil Aviation and Steel, a political stalwart from the state, Shri Jyotiraditya Scindia, will be addressing this gathering, but he'll come live via video. And of course, former Chief Minister of Madhya Pradesh, Kamal Naad ji, will also deliver a keynote address later in the evening. So we make sure it is a very broad-based conclave, very focused on this. Now, I mentioned Karnataka earlier because also, not just because I didn't want to address this gathering in Hindi, but also it is a very good example of an amalgamation of various states. My home state, you will see that it is Hyderabad, Karnataka, there is Bombay, Karnataka, there is also Tamil Nadu, Karnataka, Madras Presidency and Bombay Presidency. And I thought that was a unique combination. But now I find that when I studied Madhya Pradesh, and when I was talking to my wife, actually Madhya Pradesh is a mini India, if you really look at it. And it is a sum of all the parts of the states around it, both its distinct languages, its food and culture. It is created by many. And if you look at the various parts, whether it's the Vindhyas, the Malwa region, Madhya Bharat, Bundelkhand, Chhattisgarh, Mahakoshal regions, I'm talking before the separation of the two, it is one of the most unique miracles in India that you've been able to keep the unity of the state and present it as a cohesive entity despite this diversity that's there. Now, we all know that Madhya Pradesh is primarily an agrarian state, and you're focused tremendously in your tenures as Chief Minister. It has very rich resources, fuel, minerals, agriculture, and biodiversity. It has the highest reserve of stone, diamond, and copper in India. In fact, it is the only diamond-producing state in the country. And that is why I believe that with all these rich resources, Madhya Pradesh's criticality to the India story is now coming to the fore. At one time when we reported Madhya Pradesh in the 80s, when I used to come and tour, there was the great thirst, Pani bhi nahi tha, and it was considered one of the Bimaru states, along with Bihar, Rajasthan, Uttar Pradesh. Madhya Pradesh was there. Today you see a great transformation. The state has made rapid strides in the fields of agriculture. It has emerged the top producer of several crops. I know it's even beat Punjab and Uttar Pradesh in terms of wheat production, which is amazing sort of development that's there. It is also now, under your leadership, emerging as an industrial hub with textiles, auto parts. We've been to Indore. We've seen the kind of development that a lot of the industry, whether it's pharmaceuticals, food processing, and mineral-based industries, it has done extremely well in the past few years. And thanks to you, Mukhyamantri ji, for your vision. Madhya Pradesh is a pioneering state in various welfare programs, which, just to mention a few, the Ladli Lakshmi program, the Kanyadan Yojana, and the Sambal program, these have been followed by other states. It's a good indicator of their success. Because of these various schemes, particularly for women and the youth, you've always been called Mama on this. But I hear that you've got a new terminology, bulldozer Mama, but we'll talk about this later for whatever reasons that terminology has come. But more than that, I think, looking at environment, I'm very happy to see that, and I used to write a lot on environment, and I've come to a lot of the national parks, the tremendous development of these national parks that you've fostered. I think it's very important. And we were just sitting and chatting, and you said you were planting a tree or 3 trees every day. So he's planted, I think now almost, 2,000 trees in these things, or 1,500 trees? Let's give him a very warm round of applause for that thing. Every day in the morning. Every day in the morning he goes at 6, plants a tree, I think, or plants 3 trees, something that we all need to do to ensure that Madhya Pradesh is forested, as well as the rest of the country. And because of that, also, let's not forget the tourism potential the state has. And that is just beginning to unlock itself. So it has tremendous, and another point, because it is located in in the heart of India, the logistics industry could use this as a major center for development. Because from Madhya Pradesh, you can reach all the other states. So if one of the big logistics companies, or 2 or 3 of them come, this could become the hub of the country. And if you look at what's happened in the last 2 decades, and particularly during your tenures, the state annual growth, or the GSDP, which you know more, has been very impressive. And despite the fact that COVID has happened, it is still growing at 10%, which is laudable.
And the other thing is that between 2015 and 16 and 2023, or 22-23, the GSDP increased at a combined annual growth rate of 11.39%. And let's give the Chief Minister a very warm round of applause for that achievement as well. In fact, Madhya Pradesh, as I was mentioning earlier, has always won. When we did the 2021 State of the States Award, it figured among the top 3 best performing big states and also one of the most improved big states in agriculture, particularly. So if you see the turnaround that agriculture has happened, you know, it has been growing at the rate of 10% in the last 2 decades. That's very, very amazing. And that is a transformation that we've seen. It has, powered India's grain production. Of course, in the last couple of years, we have seen how agriculture itself has now contributed to what they call the gross value added thing to almost now increased from 33.85% a decade ago to 46.98% in 2021. So that's an enormous growth that agriculture has contributed. And Mukhyamantri ji, because in your recent efforts, where you looked at Krishi and the farm sector very deeply, you have started maximizing farm income. Well, doubling the farmer's income is now your mission that is there. And if you see, you're focused on value chains of 7 prominent crops that you are doing. We'd like to hear a little more of that when you speak. You've also changed the marketing strategy, we find. And last year you began procurement of the farmers' produce at the farm gate level. The mandi system you've almost given up, and you go directly and purchase, which I think is a revolutionary step to free up the farmers and allow them to produce much more and market them better. So the entire marketing has gone online, and it's one of the most modern marketing systems that we have of agriculture and a model for other states to follow. Briefly, I want to touch about the industrial development of the state, which you've also now, last time when we did the conclave, you had mentioned in 2018 that you were pushing industry, a lot of industry to come into Madhya Pradesh. We see in your budget this time, 2022-23, the government has approved the construction of 2 major industrial parks in Bhopal, apart from one in Indore. We hope that that will come up quickly. We also see 2 special export zones are already functional in the state, and 11 new industrial areas are being developed in various parts of the state. So we've also seen the growth of the auto cluster that is there at Pitampur near Indore, and of course, Mandideep near Bhopal. These are big developments that are there. And according to the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, the cumulative foreign direct investment inflow into Madhya Pradesh now stands at close to US $320 million. Now that is something, quite an achievement, and this has happened between October 2019 and December 2021, not being impacted by the COVID. And let's give the Chief Minister a very warm round of applause for that development as well. And importantly, I think, apart from industry, the Madhya Pradesh government is also focused on medical education and infrastructure. And that is, we've seen even in the recent budget, you've increased the number of MBBS seats from close to 1,000 seats that's there, and 22 new medical colleges will be functional in the state. Also, you've approved, I think, a very important development in Ujjain, the medical devices park, because this is something that India can play a lead role in. And I think Madhya Pradesh is playing that role, and we wish it all success. So also road construction, infrastructure in terms of that. Union government has sanctioned over rupees 1.25 lakh crore, and there are almost 45 highway projects in Madhya Pradesh that is now taking shape. So the other thing I think is your emphasis on environment, apart from planting trees, the renewable energy focus that you've brought about. I think that is also quite amazing. You have the world's largest floating solar energy project with a capacity of over 600 megawatts at the Omkareshwar Dam on Narmada River in the Khandwa district of Madhya Pradesh. And this year, to make it even better, you have announced something like 270 EV charging stations to encourage electric cars to be moving around in Bhopal, Gwalior, Jabalpur, and Indore. All this is remarkable because much of this has happened during the tenure. You're probably, since the last 19 years when a BJP government has been, was voted in, for more than 15 years, you've been the Chief Minister. In fact, in March this year, you have become the longest-serving BJP CM in the country, and let's give a warm round of applause for that as well.
Mukhyamantri ji, I'll end with saying that while in your previous 3 terms, you have marked by many, many initiatives. But unfortunately, in the 4th term, in the commencement of your 4th term, March 2020, the COVID pandemic broke out. And much of your energies were spent on handling and responding to the disease and the crisis that all of us in the country faced. Your 4th term was also marked by a major political challenge where you had to hold 28 by-elections. We know the reasons how the state was formed. I won't get into that. But you passed that political test with flying colors. You were able to win the maximum number of seats in that thing. And you also described all the new members. When people said, can these new 28 or 90 new members that finally were elected, can they mix with this party? And you said, I like the phrase you use, it is like sugar dissolving in milk. And they have been united in that sense. But we would like to listen to you, your experiences in running this government, particularly given the fact that the circumstances in which it was formed. And we also look forward to hearing from you the various initiatives you've taken in the 4th year and your vision ahead, since there's an election going to happen next year. What are the things that you think you've achieved in this? Has it been a difficult task? Or 2 saal hai, what are you planning to do on that? With these few words, let me welcome you to deliver the inaugural keynote address. Ladies and gentlemen, Mukhyamantri ji, Shivraj Singh Chauhan. Thank you, sir. आदरणीय राज्य जी और उपस्थित मित्रों, सबसे पहले मैं देश के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में टीम इंडिया टुडे का और उपस्थित सभी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं स्टेट ऑफ द स्टेट्स मध्य प्रदेश फर्स्ट। तो शुरुआत मध्य प्रदेश से ही हो रही है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज विश्व अक्षय ऊर्जा दिवस है। प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में कुछ भारत की प्रतिबद्धताएं जताई है और मध्य प्रदेश बाकी सब तरह के डेवलपमेंट के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे, इसलिए पर्यावरण जैसे मुद्दों पर बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। अभी राज्य ने कई चीजें आपको बताई। हमारा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ओमकारेश्वर डैम में हम जल्दी उसका काम प्रारंभ करने वाले हैं। रीवा में जो हमारा पावर प्लांट था, सोलर पावर प्लांट 750 मेगावाट का, उस समय सबसे बड़ा पावर प्लांट था। दिल्ली की मेट्रो को भी वहां से बिजली जाती है। इसके पहले नीमच में हमने शुरू किया था। नीमच, शाजापुर, मुरैना, छतरपुर, ये जो अक्षय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, उसमें मध्य प्रदेश बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट तो है ही, हम लेपर्ड स्टेट भी बन गए और जल्दी मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी बनने वाला है। मध्य प्रदेश ने 2 प्रयोग, एक हमारा जो पन्ना का टाइगर जो पार्क था, टाइगर रिजर्व था, वहां टाइगर खत्म हो गए थे। हमने दूसरी जगह से लाके वहां फिर से टाइगर को पुनर्स्थापित करने में सफलता पाई। मैं समझता हूं कि विशेषज्ञ भी यहां बैठे हैं, अभिलाष जी जैसे, वो अपने आप में एक प्रयोग था। और चीता तो देश से खत्म हो गया था। एक दूसरे महाद्वीप से मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो पालपुर में चीता आएगा। तैयारियां पूरी चल रही है। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है और भारत सरकार प्रयास कर रही है, मध्य प्रदेश साथ है।
पर्यावरण की दृष्टि से लगातार हमको न केवल अपने देश को, हर एक राज्य को, क्योंकि जब राज्य करेंगे तब देश करेगा, इसलिए कई तरह के इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं। अब किसी को अजीब लग सकता है, लेकिन मेरे दिन की शुरुआत पेड़ लगाने से ही होती है, क्योंकि हम भाषण देते रहें और खुद ना करें तो उसका असर नहीं पड़ता। जैसे भोजन जरूरी है, वैसे पेड़ लगाना जरूरी है। और अब तो धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे बड़ी संख्या में। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय की सीमा है। हमने एक अंकुर पोर्टल बनाया और लोगों से कहा कि भाई रोज मत लगाओ, जन्मदिन के दिन पेड़ लगा दो, मैरिज एनिवर्सरी पे पेड़ लगा दो, इससे अच्छी शादी की वर्षगांठ और क्या होगी। बच्चों के जन्मदिन पे लगा दो या पूर्वजों की पुण्य स्मृति में लगा दो, तो सहज ही लाखों पेड़ लगते हुए चले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विकास की कहानी तथ्यों से राज जी ने रखी, मैं उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा। कोविड के दौरान, क्योंकि चौथी बार मैं मुख्यमंत्री बना, तो 23 मार्च को मैंने शपथ ली और 24 को लॉकडाउन लग गया। तो पहली प्राथमिकता थी हम कैसे कोविड को कंट्रोल करें। लेकिन उसी समय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, आपदा को अवसर में बदल दो। और उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत हम बनाएंगे। मैं उस समय अस्पताल में एडमिट था कोविड के कारण, मुझे भी कोविड हो गया था। तो लेटे लेटे मैंने सोचा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और वहीं से हमने रोड मैप बनाया। वर्चुअली कई विद्वानों को देश भर के जोड़ा और हमने 4 चीजें उसमें तय की जिस पर हम फोकस्ड तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत ब्रीफली बताऊंगा मैं आपको। एक, हम सब इंफ्रा का महत्व जानते हैं, और एक जमाना था जब गड्ढों में सड़क की, सड़क में गड्ढा की, गड्ढम गड्ढा क्या था मध्य प्रदेश में, वो जानकारी में है। लेकिन सामान्य तौर पे इंफ्रा हमने काफी बेहतर कर लिया है। लेकिन अब हमारे दिमाग में, या हमारे चंबल के बीहड़ थे, कभी वहां डकैत हुआ करते थे। अब डकैत तो बचने नहीं दिए। तो हम अटल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। दिल्ली से बहुत पास है, और दिल्ली, नोएडा, आसपास की जो हालत हो गई आप जानते हैं। हमारा अटल एक्सप्रेस वे केवल सड़क नहीं होगा, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर, नई टाउनशिप्स हम कैसे ला सकते हैं, अनेकों संभावनाओं पर विचार करके हम उस पर काम कर रहे हैं। एक, मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक नर्मदा एक्सप्रेस वे, और उसमें भी हमारे सारे प्रमुख शहर कवर होंगे। और उद्देश्य ये कि केवल एक्सप्रेस वे नहीं, वो मध्य प्रदेश की ग्रोथ का इंजन बन जाए। नई टाउनशिप्स की बात हो रही है। हमने भी इंदौर और भोपाल के बीच में जमीन चिन्हित कर लिए, एयरपोर्ट से लेकर बाकी सारी फैसिलिटी, और एक नया शहर जो उद्योग और रोजगार की अनंत संभावनाएं लिए हो, उसको हमने प्लान किया है। इंफ्रा के क्षेत्र में कुछ प्रमुख चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन इंदौर जैसे शहरों में, भोपाल जैसे, अब उज्जैन से हम शुरू कर रहे हैं। महाकाल महाराज के दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। स्टेशन पर उतरते हैं, बाय रोड जाते हैं, कई बार जाम लगता है, तो हम क्या स्टेशन पर उतरे, ऊपर केवल कार हो, उसमें बैठे, सीधे महाकाल महाराज के मंदिर के पास उतर जाएं। ऐसे कई प्रयोग भी हम, परिवहन के लिए धरती भी, और धरती के साथ साथ आसमान का, पानी का, और आसमान का भी कैसे उपयोग किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, उसका उपयोग करके हम कर सकते हैं। लेकिन केवल इंफ्रा नहीं, 2 चीजों पे मुख्य रूप से हम फोकस कर रहे हैं। एक, शिक्षा, और दूसरा, स्वास्थ्य। मध्य प्रदेश में एक प्रयोग हमने किया है, सीएम राय स्कूल का। देखिए, एक पॉपुलर डिमांड होती है कि हर गांव में स्कूल खोल दो, हर गांव में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल। हमने खोले भी बहुत, उसके कारण बेटियां बड़ी संख्या में स्कूल में आई। लेकिन हर गांव में स्कूल खोल के
अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए टीचर्स उपलब्ध कराना, विशेषकर विज्ञान के, गणित के, बड़ा कठिन काम है। 20, 25, 30 गांव के बीच में एक सेंटर, जहां एक अत्याधुनिक भवन के साथ उसमें लैब हो, लाइब्रेरी हो, प्लेग्राउंड्स हो, स्मार्ट क्लास हो, और रोड्स बहुत बेहतर है। बस जाए बच्चों को लेने, सवेरे बच्चों को ले स्कूल छोड़े, शाम को घर छोड़े आए, और दिल्ली और भोपाल से बैठ के भी कोई पढ़ा सके। एक सीएम राइज स्कूल का कॉन्सेप्ट हमारा शिक्षा की गुणवत्ता ठीक करने के लिए इस साल 370 हमने शुरू किए हैं। बहुत प्रारंभिक अवस्था में, अभी अभी शुरू हुए। बिल्डिंग बनने में तो समय लगेगा, जहां जहां बिल्डिंग मिली हमने शुरू किया। एक और हमने प्रयोग किया, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन कई बार गांव में रहने वाले गरीब और किसान परिवारों से आने वाले हमारे बच्चे प्रतिस्पर्धा में इसलिए पिछड़ जाते हैं कि वो अंग्रेजी में कमजोर होते हैं। अंग्रेजी अच्छी ना जानने का या ना जानने का खौफ उनके दिमाग पे इतना हावी हो जाता है कि वो अपनी प्रतिभा को प्रकट ही नहीं कर पाते। इसलिए मध्य प्रदेश इस बार प्रयोग कर रहा है कि हिंदी की मेडिकल की पढ़ाई भी हम हिंदी में गांधी मेडिकल कॉलेज में इस साल शुरू करने वाले, मातृभाषा में पढ़ाई। हमारी नई शिक्षा नीति में आप सबको पता है कि मातृभाषा में शिक्षा पे जोर दिया गया है। हेल्थ के क्षेत्र में कायाकल्प अभियान हमने प्रारंभ करके नीचे तक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां सारी बुनियादी आवश्यकताओं की, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का अभियान चलाया हुआ है। गुड गवर्नेंस की दृष्टि से कई प्रयोग मैंने, जो तीसरी बात हम कह रहे हैं, अनेकों प्रयोग। डीबीटी आप जानते ही हैं, अनेकों योजनाओं में सीधे खाते में पैसा जाता है। लेकिन उसमें भी मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। हमने तय किया साइकिल का पैसा, जो बेटियों को साइकिल देते थे, बाद में बेटों को भी देना शुरू किया। हमको लगा सीधे खाते में डालना चाहिए। साइकिल खरीदने के बजाय सरकार कहां साइकिल खरीदने के चक्कर में पड़े, सीधे खाते में डाले तो दूसरे साल साइकिलों की संख्या कम हो गई। हमने आते जाते बच्चों से पूछा कि बेटा साइकिल का पैसा दिया था, साइकिल? बोले वो तो पापा ने कहीं और खर्चा कर दे मामा। तो अब हमने इस साल तय किया है ई वाउचर के माध्यम से हम उसको ई वाउचर देंगे, वो साइकिल ही खरीद पाएगा, दूसरी चीज में खर्चे नहीं कर पाएगा। और हमने किसानों को अलग अलग योजना पे जो अनुदान देते हैं उसके लिए भी ई वाउचर, उसका प्रयोग हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो एक नहीं गुड गवर्नेंस के अनेकों प्रयोग। और एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, समय की सीमाएं हैं। अर्थव्यवस्था और रोजगार, आज पूरी दुनिया के हालात आप देख रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश की अब केवल कृषि विकास दर नहीं है। इस साल अगर आप करंट प्राइजेज पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश की विकास दर है 19.76%, देश में सबसे ज्यादा। अगर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का साइज आप देखेंगे, जीएसडीपी, तो पहले कभी 3-4 तक 1 लाख करोड़ के आसपास हुआ करता था। इस साल 11.5 लाख करोड़ से भी हम आगे निकल गए। 800 गुना वृद्धि मध्य प्रदेश ने की है। भारत की जीएसडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान पहले 3.6% हुआ करता था, अब 4.6% हो गया है। हम बढ़ रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे, क्योंकि वो मूल है अर्थव्यवस्था को गतिशील रखने का, उस कारण रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं, उसको अगर देखेंगे तो इस साल 48,800 करोड़ रुपया हमने बाकी सब कठिनाइयों के बावजूद भी रख के और बेहतर काम करने का प्रयास किया है। रोजगार के अवसर कई तरह से सृजित होते हैं, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। 3-4 तरीके जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक, रोजगार से सीधा अर्थ निकाला जाता है शासकीय नौकरियां। हम जानते हैं उसकी सीमा है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक साल में 1 लाख शासकीय सेवाओं में भी रोजगार मिले, उसका पूरा रोड मैप हमने बनाया हुआ है। दूसरा, इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में तेजी से आ रही है। आपने स्वयं बताया, फार्मा सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग। मध्य प्रदेश के ओडी ओपी कई जगह कमाल कर रहे हैं। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो चीजें बना रहे हैं वो बहुत पॉपुलर हो रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा एक तथ्य,
जिसकी गहराई में जाके मुझे भी आश्चर्य हुआ, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का टर्नओवर और सबका मिला लिया जाए मध्य प्रदेश का तो 20,000 करोड़ रुपया है, जो हमारी 40 लाख महिलाएं काम कर रही हैं पूरे मध्य प्रदेश में, और वह मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ताकत दे रही है। तो उसके माध्यम से रोजगार, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से लेकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, हमने प्रयत्न पूर्वक SLVC की मैं हर महीने मीटिंग करता हूं और महीने में एक दिन रोजगार दिवस मनाते हैं। हर महीने एक दिन रोजगार दिवस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, और सारी योजनाओं को एक जगह लाके हमारा टारगेट जो पिछली बार हमने अचीव किया, 12 जनवरी को हमने शुरू किया था कि कम से कम 2.5 लाख रोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स के जरिए हम उत्पन्न करें। फिर जो निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है उसके कारण रोजगार के अलग अवसर, तो उसके लिए बच्चों को ट्रेंड करना। देखिए, स्किल्ड मैन पावर अगर आपके पास है तो फिर काम की कहीं कमी नहीं है। भोपाल में हम ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं सिंगापुर के सहयोग से। बच्चों को हम ट्रेंड करेंगे और ट्रेड भी ऐसे कि जिसमें तत्काल उनको जॉब मिल जाए। हम मॉडल ITI बना रहे हैं संभागीय मुख्यालयों पर, स्किल मैन पावर तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो रोजगार हमारा फोकस है और इस साल हमारा टारगेट है 32 लाख लोगों को सब तरह की योजना मिला के हम रोजगार देंगे, अलग अलग योजनाएं जो मैंने आपको बताई। तो कुल मिला के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के एक संक्षिप्त सब बातें आप जानते हैं, कहना संभव नहीं है। एक रोड मैप मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। देखिए, देश फर्स्ट रहे, ये हम सब का संकल्प और सपना है। हम जो बैठे हैं किसी भी क्षेत्र में, और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। यह देख के हम सबको आनंद और प्रसन्नता होती है। मध्य प्रदेश का योगदान उसमें अधिकतम हो, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और कोई कसर मध्य प्रदेश को आगे ले जाने में नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर आपका स्वागत और इंडिया टुडे को धन्यवाद। Ladies and gentlemen, let's give him a very, very warm round of applause for this. And the Honorable Chief Minister has very kindly agreed to do a question and answer session. And for this, I would like Mr. Saurabh Dwivedi, my colleague and editor of India Today Hindi, and of course the very popular show Lalan Top, to come and join us as part of this, if you don't mind, Mukhyamantri ji. Mic देना. तो मुख्यमंत्री जी, इस सेशन में थोड़ा पॉलिटिक्स भी पूछेंगे इसमें। लेट अस स्टार्ट विथ ये रेवड़ी कल्चर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया वी शुड बी अगेंस्ट द रेवड़ी कल्चर। आपने वेलफेयर स्कीम्स बहुत सारे हैं, यू हैव आल्सो गिवन फ्रीबीज बोलते हैं। व्हाट इज योर पोजीशन ऑन द रेवड़ी कल्चर? मैं प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको बिल्कुल ठीक मानता हूं। रेवड़ी कल्चर का मतलब केवल वोट लेने के लिए ऐसी प्रतिस्पर्धा हो जाए कि मैं फ्रिज दूंगा तो उन्होंने कहा मैं टीवी दूंगा फ्री में, ये भी फ्री में ले लो, वो भी फ्री में ले लो। मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है जो सबसे पीछे और सबसे नीचे जो हमारा गरीब भाई बहन हैं उसका भी हमारे संसाधनों पर हक है, और इसलिए कुछ बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको सहयोग करना, मदद देना वो जरूरी है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनते हैं गरीब के लिए तो मकान खड़ा होता है, वो रेवड़ी कल्चर नहीं है, वो जरूरत है। पीने का पानी पहुंचता है तो रेवड़ी कल्चर नहीं है। अगर इलाज की योजना बनती, हम सब जानते हैं गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास का आदमी कैंसर हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, लीवर की बीमारी हो जाए तो कहां से इलाज करवाएगा? तो उसके इलाज के लिए सहायता करना रेवड़ी कल्चर नहीं है। केवल वोट हथियाने के लिए इनने ये कहा तो मैं ये कह दूं, ये होड़ रेवड़ी कल्चर है जो ठीक नहीं। सौरभ,
शिवराज जी, आप सबसे लंबे समय से बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि सवाल भी बहुत सारे होंगे, पर समय की कमी है तो मैं बहुत ही कट टू कट बात रखूंगा। पिछले दिनों विजुअल्स आए कि कई जगह पानी का भराव, और खबर आई कि मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं कोई बांध ना दरक जाए, कुछ ना हो जाए। धार समेत कई जिलों से प्रदेश ये जानना चाहता है कि जल भराव के मामले में वो कितना सुरक्षित महसूस करें। एक बात तो मैं ये बताना चाहूंगा सौरभ जी के मध्य प्रदेश में जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो सिंचाई होती थी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में, और ये केवल आजादी के बाद की नहीं थी। कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबकी मिला के थी। हमने एक अभियान चलाया। मुझे लगा मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर ले जाना है तो सबसे जरूरी हम कृषि के सेक्टर पर ध्यान दें। आज 44 लाख हेक्टेयर जमीन में हमने सिंचाई की व्यवस्था कर दी, उसको मैं 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाऊंगा। उसका रोड मैप तैयार है, नई नई सिंचाई की योजना पर काम चल रहा है। अब इतने सारे डैम बने भी हैं, बन भी रहे हैं। उनमें से एक डैम था जिससे पानी का सीपेज, और पानी का सीपेज कई डैम से होता है, मतलब पूरा का पूरा पानी रुकता है, ये कभी नहीं होता। आप किसी भी डैम पे जाके अगर देखोगे ध्यान से या दूरबीन लगा के या, तो सीपेज कुछ ना कुछ होता है। वो सीपेज ऐसा था जो जितनी सीमा सीपेज की मात्रा होनी चाहिए उससे ज्यादा था। और जब ये खबर आई तो जनता की जिंदगी हमारे लिए सबसे बड़ी थी, इसलिए लगातार हमने मॉनिटरिंग करना शुरू की। बांध टूटते ही ये तय नहीं था, लेकिन 0.1% भी अगर अचानक टूटता तो तबाही आ जाती। और इसलिए फिर हमने विशेषज्ञों, मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हुई, मेरी अमित भाई से, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी से बात हुई, एक्सपर्ट्स की टीम वहां से भी आई, हमारे भी एक्सपर्ट्स थे, और फिर यह तय किया कि एक डैम में कट लगा के इस पानी को बाहर निकाल देना चाहिए। यह जरूर है कि अगर मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आ सकती है तो फिर मैं सो नहीं सकता चैन से, और इसलिए मैं रात भर बैठा। अब बांध पे कट लगाने में भारी मशक्कत हमको करनी पड़ी। एक तरफ चट्टान, दूसरी तरफ मिट्टी, उस बीच में से काटेंगे तो एक साथ नहीं कटेगा, लेकिन अंततः सुरक्षित तरीके से पूरा पानी बाहर निकाल दिया। अभी भी सारे बांधों पर हम नजर, और ये बांध भी पूरा नहीं बने तो निर्माणाधीन था, गेट वेट नहीं लगे थे इसमें, केवल मिट्टी की पाल बनी हुई थी। जांच के भी हमने निर्देश दिए कि कहां कमी रह गई, उनको भी कोई दोषी होगा छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सारे बांध सुरक्षित है, पूरी नजर रखे हुए हैं हम। लेकिन कई बार ऐसी घटना हो जाती है तो मीडिया से खबरें भी फिर वैसे ही जाती है। अब किसी बांध से जरा सा पानी और फलाने बांध में भी, तो कुछ समय तक वो विषय चलता है, लेकिन हम पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सारे बांध सुरक्षित है। मुख्यमंत्री जी, ये तो अच्छा है ना कि सरकार भी इसी बहाने अलर्ट मोड पर लेती है। आप निर्माणाधीन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। आपका नाम शिवराज है, शिव की नगरी उज्जैन में एक कॉरिडोर है जो बनकर तैयार है। हम कब उम्मीद करें उसके उद्घाटन की? मुझे लगता है कि अभी बरसात में भी काम चल रहा है। देखिए, उज्जैन महाकाल महाराज की नगरी, जहां करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था और श्रद्धा जुड़ी हुई है, वो और अद्भुत बने, ये हमारी कोशिश थी, और अब वो लगभग बन के तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि वो लोकार्पित करें, तो बरसात के बाद ही होगा, क्योंकि बरसात में वैसा कार्यक्रम हो नहीं सकता। तो जब भी समय मिलेगा तब करेंगे। फिर अक्टूबर हो सकता है, नवंबर हो सकता है, जो भी तिथियां तय हो। पीएम की डेट में? जी, पीएम। मुख्यमंत्री जी, आपने बताया आप रोजगार 32 लाख जॉब्स देंगे, आप कहां से मिलेंगे? व्हाट इज योर प्लान टू डू दिस? देखिए, सारी मैंने जो स्कीम्स हैं, एक सरकारी रोजगार, दूसरे गैर सरकारी। अब पिछले साल ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, फिर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को, क्योंकि वो भी रोजगार है, अलग अलग चीजें बनाती हैं वो और उसके बाद बेचती हैं, उनको पिछले साल हमने लगभग 1400 करोड़ रुपया अलग अलग कामों के लिए दिए थे। इस बार 3000 करोड़ का हमारा टारगेट है। मैं किस योजना में कितने रोजगार दूंगा उसको काउंट करके मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्वरोजगार की योजनाओं से, ये फैक्ट्रीज में प्लेसमेंट के माध्यम से, ये जो हमारा पूरा इंफ्रा बन रहा है अलग अलग, उसमें जो प्राइवेट जॉब मिलेगा उसके माध्यम से, और जहां स्किल्ड मैन पावर की जहां जहां जरूरत है वो भी तैयार करके हम जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, जब हम यहाँ पर आते हैं
तो दो तीन चीजें हमें बार बार बताई जाती हैं। एक कहा जाता है कि साहब शिवराज जी 24 घंटे के नेता हैं, रोज सुबह टिफिन बांध के निकलते हैं कि भाई आज प्रदेश में कहां चलना है। वो भोपाल बैठ के नेतागिरी नहीं करते हैं। और एक जुमला उसके साथ चिपकाया जाता है कि हर जगह मैं हूं ना, बाढ़ आई है तो, कहीं उत्सव है तो, हर जगह शिवराज जी पहुंचते हैं। पर राजनीति में इसके समानांतर यह भी देखा गया कि जब आपके पहले के कार्यकाल होते थे तो आपके सहयोगी कैलाश विजयवर्गीय जी कुछ भाषण देते थे तो आधा टेंशन उधर जाता था। और अब हम लोग देख रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी आपके मंत्री हैं, वो लगातार कुछ कुछ भाषण देते हैं या बयान देते हैं तो फोकस उधर जाता है। और विरोधी ये कहते हैं कि साहब शिवराज जी की जो एकमुश्त पकड़ होती थी उसको चैलेंज मिल रहा है। आप इस तरह की टिप्पणियों पे कैसे रिएक्ट करते हैं? कैलाश जी मेरे परम मित्र हैं बचपन से, और नरोत्तम जी विश्वस्त सहयोगी। आप इसी से देख लीजिए कि लोगों को ये लग रहा था कि कांग्रेस से कई मित्र भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनके साथ सरकार हमने बनाई है, तो चलेगी कि नहीं चलेगी, रोज झगड़े होंगे, क्या होगा, इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे दूध में मिल के शक्कर एक हो जाती है, वैसे ही समरस होकर हम सब लोग साथ में काम कर रहे हैं और प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक आपने चूंकि दूध शक्कर का जिक्र किया, मैं ये जानना चाहता हूं, राजनेता के तौर पर आप इतने मंझे हुए हैं, दशकों का अनुभव, कि वो शिफ्ट कैसे होता है कि चुनाव हो रहा है तब नारा है कि माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, और फिर शिवराज जी को उन्हीं ज्योतिरादित्य के साथ सरकार चलानी पड़ रही, तो वो समन्वय किस स्तर पे होता है? समन्वय तो दिल से होता है जी। हो गया है। अगर ईगो आपके अंदर ना हो, सबको साथ लेके चलने की भावना हो, आप दूसरे की भी भावनाओं का आदर करें, तो मैं समझता हूं कि प्रेम से तो पत्थर पिघल जाता है, तो इंसानों की तो बात ही क्या। मैं सचमुच में बता रहा हूं जी, हृदय से बता रहा हूं, केवल आपके सामने कहने के लिए नहीं। मुझे एक दिन भी कभी तकलीफ नहीं हुई काम करने में श्रीमान ज्योतिरादित्य जी के साथ। उनके साथ जो आए थे हमारे मित्र, हमको यही नहीं लगता कि कौन पहले बीजेपी में था और कौन बाद में आया है। सब पूरी तरह से समरस होकर मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, यू आर सच अ वेटरन लीडर आपने, बट रिसेंटली जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट किया, आपका नाम नहीं थे और गडकरी साहब का नाम भी नहीं थे, क्या रीजन है इसमें? ये सर, ये वो सवाल है जो सब जगह पूछा जा रहा है, एलिफेंट इन द रूम। शिवराज सिंह चौहान संसदीय बोर्ड से ड्रॉप कर दिए गए, बीजेपी के सबसे सीनियर लीडर्स में से एक हैं, और दिल्ली में बैठे राजनीतिक टिप्पणीकार कहते हैं कि शिवराज का राजनीतिक भविष्य सिर्फ भोपाल और मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, ब्रांड शिवराज की बाहर भी बात होती है। तो दिल्ली की आकांक्षाएं, दिल्ली में आपका प्रतिनिधित्व, वो बोल रहे हैं डिमोशन कैसे होगा इसे? एक तो मैं ये बता दूं आपको, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक बड़े लक्ष्य को सामने रख के बरसों से काम कर रहे हैं। और जब काम करना शुरू किया था तो हमको पता नहीं था कि हम एमएलए भी बनेंगे। मैं तो इमरजेंसी में, जब मेरी उम्र 17 साल की थी, मैं जेल चला गया था आपातकाल का विरोध करते हुए। 1974 में मैं जेपी मूवमेंट से जुड़ गया था और उसके बाद विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना। कभी कल्पना नहीं की थी कि एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री का तो सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन एक बड़े लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं, वो है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का लक्ष्य। जैसा मैंने बताया कि वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समर्थ भारत का निर्माण, उसके लिए का पार्टी काम कर रही है। अब पार्टी के जब आप कार्यकर्ता हो तो पार्टी ये तय करती है कि आप कौन सा काम करेंगे। देखिए, अगर आप समर्पित कार्यकर्ता हैं तो आपके बारे में तय करने का अधिकार आपका नहीं है। एक टीम है जो सोचती है कि किससे क्या काम लेना है। अब मध्य प्रदेश में हम लोग सोचते हैं किससे क्या काम लेना है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो भूमिका तय कर दे उसको पूरी मेहनत और प्रामाणिकता के साथ निभाना, ये तो मिशन के हिस्से के रूप में आप काम कर रहे हैं। और आपने ये सोचा कि मैं कहां हूं, तो फिर आप उस मिशन का हिस्सा नहीं, फिर आप स्वार्थी हैं। अपने बारे में काहे के लिए? देश के बारे में सोचिए, आपके बारे में पार्टी सोचेगी। और फिर इतना विशाल परिवार भारतीय जनता पार्टी का, एक नहीं अनेकों योग्य व्यक्ति हैं।
तो ये तो प्रवाह है संगठन का, चलता है तो कुछ रहते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रवाह से बाहर निकलते हैं। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। देखिए, कल जन्माष्टमी थी और कन्हैया ने यही कहा था, कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, काम करते चलो। तुम कहो इसकी क्या चिंता करना, करने वाले कर रहे हैं। और इसलिए मैं पार्लियामेंट ने पहले दिन भी कहा था, पार्लियामेंट्री बोर्ड की ये जो टीम बनी है, मैं माननीय नड्डा जी को हृदय से बधाई देता हूं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा देश उसमें शामिल है। रीजनल बैलेंसेज बनाए गए और एक से एक योग्य कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित किए गए हैं। मुझे कतई ये अहम नहीं है कि मैं बड़ा योग्य हूं, मैं तो पार्टी का आभारी हूं। इतने साल से इतने काम मुझे दिए, मैं हृदय से पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे अगर दरी बिछाने का भी कल काम दे दिया जाएगा तो शिवराज सिंह चौहान दरी बिछाने को भी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का हिस्सा मानकर वो काम भी करेगा। ये मन में आ जाना घरे में तो तुम महास्वार्थी हो गए फिर, मैं वो नहीं हो सकता। ये कुशाभाऊ ठाकरे स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का बयान लग रहा है। दो छोटे छोटे सवाल। कृषि को लेकर आपकी छवि है, आप किसान पुत्र हैं और बहुत उत्साह के साथ आप योजनाओं के बारे में बात करते हैं। तो एक तरफ आंकड़े हैं जो मध्य प्रदेश की स्थिति में सुधार की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम जानते हैं कि ये सोशल मीडिया का जमाना है जिसमें कुछ विजुअल डिफाइन करते हैं इमेज को। पिछले दिनों कुछ ऐसी छवियां आई जिसमें लहसुन उत्पादक किसान लहसुन की बोरियों को नदी में फेंक रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं कि सबको उत्पाद का सही मूल्य मिले, कौन सी फसलें समर्थन मूल्य में आ सकती हैं? खेती को लेकर शिवराज सिंह चौहान सरकार क्या नया करने जा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की भी कोशिश यही है कि किसानों की आय डबल की जाए और कई तरह की योजनाएं हैं उनके विस्तार में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। एक बड़ी संख्या अगर किसानों की आप देखेंगे तो छोटे किसान हैं, 80% किसान छोटे होते हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है। मैं पिछले साल की आपको बताता हूं, एक ही साल का केवल उदाहरण दूंगा, मध्य प्रदेश के। हमने सोयाबीन की फसल खराब हुई थी किसानों की, तो सोयाबीन की खराब फसल के लिए हमने मध्य प्रदेश में 7,816 करोड़ रुपया किसानों को खाते में डाला था और 3,000 करोड़ रुपया आरबीसी 6-4 के अंतर्गत दिया था और लगभग उसके नुकसान की भरपाई कर दी थी। अब एक बात आता है कि उत्पादन अगर बहुत हो गया तो कई चीजों के तो समर्थन मूल्य तय है, उस पर सरकार खरीदती है। कुछ चीजों के बारे में विचार करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमको कृषि के विविधीकरण का सोचना पड़ेगा। जिस चीज की जितनी जरूरत है मार्केट का असेसमेंट करके वो हम कैसे लगाएं। तो मध्य प्रदेश में एक प्रयोग किया मैं आपने फार्म गेट की बात कही थी। मैं बिल्कुल नहीं मानता किसानों को बात करो कि मंडी में ही जाके बेचे, क्यों बैठे? अगर कोई दाम उसको घर पे ठीक देता तो घर पे बेचे, अगर खेत पे ठीक देता तो खेत पे बेचे। लेकिन मध्य प्रदेश में हमने एक योजना बनाई है जिसमें हमने तय किया है, सरकार, किसान और प्राइवेट कंपनी या व्यक्ति, कोई भी व्यापारी हो सकता है, अगर उसको जरूरत है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, सीहोर के पास अश्वगंधा और तुलसी की खेती हो रही है, जहां पहले गेहूं की खेती होती थी। गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब गेहूं की जरूरत कितनी, हम आकलन करें और गेहूं से हम दूसरी तरफ कैसे जाएं? तो किसानों का और कंपनी का आपस में बातचीत है, तुम तुलसी लगाओ, अश्वगंधा लगाओ, हम पूरी खरीद के ले जाएंगे, इस रेट पर खरीदेंगे। हमने योजना ये बनाई है कि किसान और प्राइवेट जो भी, केवल कंपनी की बात नहीं करता, कोई और व्यापारी भी हो सकता है, वो रेट तय कर लेंगे कि तुम ये फसल लगाओ, इस रेट पे हम खरीदेंगे। इससे ज्यादा अगर मिले तो किसान बाहर भी बेच सकता है। और जैसे हम एमएसएमईज को या इंडस्ट्रीज को कई तरह की राहत देते हैं, किसानों को भी कई तरह की कृषि उपकरण वगैरह खरीदने में सब्सिडी देते हैं, वैसे ही हम इस तरह की प्राइवेट सेक्टर का कोई व्यक्ति हो या कंपनी हो, उसको भी कुछ सहूलियत देंगे। जैसे पैक हाउस उसको बनाना है, फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, किसान ने कुछ बनाया, हम उसमें कुछ मदद करेंगे, दूसरी कुछ चीजें करेंगे। अभी तक 13 कंपनियां आ गई जिसमें 2 ने काम भी शुरू कर दिया। तो हमको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे और प्रधानमंत्री जी इस मामले में बहुत
गंभीरता से और गहराई में जाके विचार करते हैं। उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, इसलिए लगातार कुछ नई चीजें और करते रहने की आवश्यकता है। एक सवाल है, यू डन सो मेनी वेलफेयर स्कीम्स, आपका नाम भी पहले मामा था, यू लुक्ड आफ्टर। मामा तो अब भी हूं। बट अभी तो और एक ऐड किया है, ये बुलडोजर मामा कैसे आ गया? देखिए, मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में मैं 2005 के अंत में मुख्यमंत्री बना, और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मध्य प्रदेश में डाकुओं का जबरदस्त आतंक था। आप सब जानते हैं, चंबल के बीहड़ों में विशेषकर। हमने उस समय तय किया कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और विदिन एक साल में हमने डकैत गिरोह सूचीबद्ध या तो समाप्त कर दिए या आत्मसमर्पण कर दिया। तब से लेके आज तक डकैत समस्या ने, कोई छोटे मोटे हो जाते हैं बीच में, लेकिन डकैत समस्या ने उस रूप में सिर नहीं उठाया। इसके बाद एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकार थी, मंत्री जी की गर्दन काट दी गई थी नक्सलवादियों के द्वारा, लेकिन नक्सलवाद को मध्य प्रदेश में बढ़ने नहीं दिया। अभी भी हमने एनकाउंटर किए, सिमी के नेटवर्क को हमने ध्वस्त कर दिया मध्य प्रदेश में। और आप भूले नहीं होंगे, याद होगा कि सिमी के कुछ आतंकवादी अगर जेल तोड़ के बाहर निकले थे तो ज्यादा दूर नहीं जा पाए, भोपाल के अगल बगल में ये एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए सब। तो ये मैं केवल ये कह रहा हूं कि ये तो हम पहले से कर रहे हैं। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है हमारी सरकार। और इसलिए अगर गड़बड़ किया मध्य प्रदेश में जी, हमने, जिन लोगों ने गलत तरीके से जमीनों पर कब्जा कर रखा था, दबंग, गुंडे, दादा, आपको आश्चर्य होगा कि हमने लगभग 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है उनसे, और वहां गरीबों की सुराज कॉलोनी हम बसाने वाले, दबंगों से छुड़ा के गरीबों को देने का अभियान हमने चलाया हुआ है। अब वैसे में अगर बुलडोजर चल जाता तो गलत क्या है, लेकिन ये काम हम पहले से करते चले आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, सज्जनों के लिए कोमल, दुष्टों के लिए कठोर और कांग्रेसियों के लिए, क्योंकि कमल नाथ जी और दिग्विजय जी और तमाम जी जो आपके विरोधी पार्टी के मित्र हैं, वो नए सिरे से कह रहे हैं कि देखिए, निकाय चुनाव में आशा अनुरूप प्रदर्शन नहीं हुआ, ग्वालियर हार गए, बार बार दोहराया जा रहा है, और कई शहरों का जिक्र, और फिर वो शिवराज सिंह चौहान कितने समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे, इसको लेकर अपने हिस्से की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। आप अपने पुराने मित्र कमल नाथ जी और दिग्विजय जी को क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये कि आप जिस समय जो है वो काम पूरी मेहनत, लगन, प्रामाणिकता के साथ कीजिए। कल की चिंता कौन करे, अपना काम करते चलो। जब जो भूमिका आएगी मस्ती से करेंगे उसको। कमलनाथ जी अपनी चिंता करें, मेरा ये कहना है, और दिग्विजय सिंह जी भी अपनी चिंता करें। जहां तक स्थानीय निकाय के चुनाव का सवाल है, देखो, मेरे तो मित्र हैं और मैं कभी बिलो द बेल्ट जाके मैंने कभी वैसी राजनीति नहीं की है। हमारे वैचारिक मतभेद हैं, वो डट कर रहेंगे, लड़ेंगे, लेकिन हम व्यक्तिगत स्तर पर हम लोग मर्यादाओं का पालन करने का हम प्रयास करते हैं। इतना जरूर है कि कांग्रेस ने जो मध्य प्रदेश को तबाह किया था 2003 के पहले, वो मध्य प्रदेश भी सबने देखा है। और बीच में 15 महीना के लिए मामा चले गए थे, कमलनाथ जी आ गए थे, तो वो 15 महीने भी देखे। और इसलिए जनादेश हमको मिला उपचुनाव में। कांग्रेस के मित्र भाजपा में आए और वो फिर से चुनाव लड़े, इस्तीफा देकर, और फिर से जीत के आए। तो सरकार हमने चलाई तो जनता के, और जीत के भी ऐसे नहीं आए, 64,000 वोट, 57,000 वोट, 52,000 वोट, भारी वोटों से जीत के आए। तो कुल मिला के तबाही से प्रदेश को वो तबाह करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं। अब ये हमारे मतभेद हैं, बाकी तो वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। स्थानीय निकाय को चुनाव की आप बात कर रहे थे, लगभग 23,000 पंचायत में से 20,000 बीजेपी जीती। नगर पालिका देख लीजिए, नगर पंचायत देख लीजिए, जनपद पंचायत देख लीजिए, जिला पंचायत देख लीजिए, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। निकाय के चुनाव में, नगर निगम में अगर कुछ जगह हार गए तो उसका भी विश्लेषण करेंगे, और लोकतंत्र है ये, तो हार गए तो हार को भी स्वीकार करें और आगे कैसे जीते उसकी योजना बना के आगे बढ़े। मुख्यमंत्री जी, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। लोभ बहुत रहता है जब सत्ताधीशों के साथ बैठते हैं कि खूब सारे सवाल जनता के पूछ लें। मध्य प्रदेश के मामा जी, युवाओं के प्रिय,
और ये मैं कहीं सुनी बात नहीं कह रहा हूं, आपने यूथ महापंचायत की, मैं खुद उस आयोजन में आया था, तो मैंने आपका इम्प्रॉम्प्टू बिना किसी कागज के भाषण भी देखा, और जिस तरीके से नौजवान लड़के लड़कियां उसको रेसिप्रोकेट कर रहे थे वो भी देखा। जब हमने राजनीति के विद्यार्थी के तौर पर शिवराज मॉडल को पढ़ना शुरू किया तो लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में खूब जाना, और यह भी कि दूसरे राज्यों ने उससे सीखा। आपने वहां पर लाडली लक्ष्मी योजना के अगले चरण के ऐलान किए। तो एक तरफ तो ये शिवराज सिंह चौहान हैं जो लड़कियों के बीच, महिलाओं के बीच मामा के रूप में, भाई के रूप में सहज उपलब्ध हैं, नौजवानों के लिए नई स्कीम का ऐलान कर रहे हैं। इसके पैरेलल एक सवाल है जो सोशल मीडिया के ट्रेंड से आता है कि एमपी में रेगुलरली पीसीएस की भर्ती नहीं आती है, और तमाम दूसरी सरकारी भर्तियों को लेकर नौजवानों की बड़ी शिकायतें रहती हैं। मामा जी, मुख्यमंत्री जी एक तरफ ऐलान कर रहे हैं रोजगार का, क्या वो अपने नौजवान मित्रों को, जिनके वो मामा हैं, ये आश्वासन दे सकते हैं कि समयबद्ध तरीके से पिछली सारी भर्तियों को पूरा किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा? क्योंकि इसी मध्य प्रदेश में व्यापम को लेकर भी बहुत चर्चा हुई है, इल्जाम लगे हैं, कार्रवाइयां हुई हैं कि भविष्य में एक ऐसा रोड मैप बने, ऐसी फुल प्रूफ चीज बने कि नौजवान लड़के लड़कियों को अपने हिस्से की नौकरी के लिए अंतहीन इंतजार ना करना पड़े। आपने उस समय भी युवा सम्मेलन में देखा था, रोजगार को लेके मैंने इस पर शिक्षा और रोजगार दोनों, एक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी जैसी योजना मैं बताना चाहूंगा, जिसमें हमने तय किया है गरीब बेटा बेटी हो, किसी भी जाति समाज का, लोअर मिडिल क्लास का हो, इवन मिडिल क्लास का हो, 8 लाख रुपए की आमदनी पर ईयर तक हमने जोड़ा है। अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, IIM, मैनेजमेंट के किसी कोर्स में होता है, देश में होता है, कहीं विदेश की अच्छी यूनिवर्सिटी में भी होता है, तो फीस मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएंगे, प्रदेश की सरकार भरवाएगी। ये फैसला हमने किया था, उस समय मैंने आपको बताया था, ताकि प्रतिभा कुंठित ना हो पाए। अभी जो मैंने आपको जॉब्स की बात कही है, पिछले दिनों सम्मानी कोर्ट के फैसलों के कारण कुछ चीजें अटकी थी, अब उसमें से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, और 1 लाख सरकारी जॉब के साथ साथ स्वरोजगार की योजनाओं के माध्यम से लगभग 32 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का वाकायदा रोड मैप। कुछ तो भर्तियां हो ही गई है, 15-20 हजार शिक्षकों की भर्ती हो गई है, अभी पुलिस की भर्ती अभी 6000 चली रही है, ये शुरू हो रही है, कुछ इसके पहले हुई। ये पिछले वर्षों में अगर आप देखेंगे तो अकेले हमारे पुलिस की जो भर्तियां हुई है वो ही लगभग 40 से लेकर 50 हजार के आसपास हुई है पहले मेरे शासनकाल में। शिक्षकों की भर्ती हुई है लगभग 2 लाख मेरे ही शासनकाल में। आगे फिर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हुए, मैंने जो कहा है बच्चों को हम रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएंगे, और मैंने कहा था कि धन के अभाव में प्रतिभा कुंठित ना हो, इसके भी इंतजाम करेंगे। बच्चे पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और प्रदेश को भी आगे बढ़ाते रहें, ये हमारी कोशिश होगी। मुख्यमंत्री जी, जस्ट 3 minutes लेफ्ट, बिट ऑफ नेशनल क्वेश्चन आपके लिए। बिहार में जो सरकार बदल दिया, नीतीश कुमार जैसे he walked out of the BJP and joined with RJD. What is your view on this development? देखिए, पार्टी ने नीतीश जी को पूरा सम्मान दिया था, छोटी पार्टी होने के बाद भी समता पार्टी के उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा था। मैं मानता हूं कि नीतीश जी के दिमाग में क्या आया ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन जिस ढंग से उन लोगों के साथ जिनका हवाला देके उन्होंने सरकार तोड़ी थी, आप जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया कि सरकार तोड़ी थी। मैं दोहराना नहीं चाहता उन शब्दों को, करप्शन से लेके कितनी चीजें थी, और फिर उन्हीं से हाथ मिला लेना, ये अवसरवाद का निकृष्टतम उदाहरण मैं मानता हूं, निकृष्टतम उदाहरण। और अब जो चर्चा हो रही है आजकल, 2-4-5 दिन में जिस ढंग की चर्चा आई, वो बिहार के लिए शुभ नहीं है। बिहार में विकास के नए आयाम एनडीए की सरकार ने स्थापित किए थे लालू राज के बाद, लालू जी के राज के बाद। ये बिहार के साथ मुझे लगता है बिहार के विकास के साथ धोखा हुआ है, ये ठीक नहीं किया नीतीश जी ने। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसका समर्थन करेगा, और कल जनता भी न्याय करेगी। जो कदम नीतीश जी ने उठाए हैं उसके साथ कोई नहीं जा सकता। You do not think Nitish ji is a rival to Modi ji for prime ministership? देखिए, मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, जो स्टेचर है आज, अब आप भी बाय हार्ट सोचिए, मोदी जी केवल आज देश के नेता नहीं है,
कई मामलों में दुनिया को लीड कर रहे हैं। और इसलिए मोदी जी और किसी की तुलना करना मैं नहीं मानता कि कहीं उचित। कोई बाकी प्रतिस्पर्धा का तो मैं सवाल ही नहीं मानता। आज भी मोदी जी हैं और कल भी मोदी जी होंगे। और राहुल गांधी का बारे, वो आजकल बोल रहे मोदी से डर नहीं हूं मैं, काला पेन नहीं, अगर डरते नहीं तो कहते काय को बार बार मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। अब जो नहीं डरता उसको कहने की जरूरत थोड़ी है। देखिए, राजनीतिक परिपक्वता मुझे कहीं दिखाई नहीं देती कांग्रेस। मतलब मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि कोई अनावश्यक आलोचनाएं करूं, लेकिन जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं मुझे नहीं लगता उनको तो लोग गंभीरता से लेने ही उनको बंद कर दिया है लोगों ने। एक मैंने Last बोल दिया था question आखिरी, and then बिल्कुल we'll- आखिरी सवाल। शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षा क्या है? क्या अब और क्या हासिल करना चाहते हैं? मेरी पार्टी मुझसे जो काम करवाएगी मैं वही काम करूंगा, क्योंकि मैं दोहरा रहा हूं, मैं एक बड़े मिशन का हिस्सा हूं। उसमें मैं कहां रहूंगा ये मैं कभी नहीं सोचूंगा। कई बार गाहे बगाहे दिल्ली आओगे कि वहां जाओगे, मुझे कहीं नहीं जाना। पार्टी कहेगी जैत में रहो तो जैत में रहूंगा, पार्टी कहेगी भोपाल में रहो तो भोपाल में रहूंगा, पार्टी और कुछ कहेगी तो वो करूंगा। देखिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा रख के आप कभी देश का भला नहीं कर सकते। और हम कहते हैं राष्ट्र प्रथम, उसके बाद पार्टी और सबसे अंत में हम। वाह, with that words, let's give him a very warm round of applause. Thank you, Shivraj. Thank you very much for this. Thank you. Thank you. 15 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हमारे साथ खास मेहमान होंगे अगले सत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री।
dynamic and veteran leader of the state apart from the nation. Mr. Scindia, thank you very much for joining India Today live on this video broadcast for the MP First conclave that we are holding. Thank you very much, Raj, and it's always a pleasure to be with the India Today group on your multiple formats of engaging and creating a dialogue across various issues that are concerning the nation. And I have with me my colleague Kaushik Deka, whom you know, Executive Editor, and Amit Tiwari of our newly minted MP Tak. एमपी तक की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं अमित तिवारी। क्या हाल है अमित, कैसे हो आप? कौशिक, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया हूं, बहुत बढ़िया हूं, बहुत स्वागत आपका। Let's begin, Scindia ji, with a question about Madhya Pradesh itself and your vision of the state. You've got another 2 years to go for the assembly elections. What is it that your government has done here? What is it that you wanted to do? Well, I think you'd like me to respond in Hindi or English, Raj? In this question in English, then you can keep moving back and forth. Your this thing. मध्य प्रदेश की संभावनाएं अपार हैं। जब भी मैं अमित को वहाँ मंच पे देखता हूँ तो मेरी चाहत हिंदी की शुरुआत हो जाती है। हमारी संभावनाएं अपार हैं, हम देश के हृदय स्थल में स्थापित हैं और अगर आप देखो, आप उत्तर से दक्षिण कोई व्यक्ति जाता हो या पूर्व से पश्चिम कोई व्यक्ति जाता हो, उसे मध्य प्रदेश के चारों दिशाओं से निकलना ही पड़ता है। हमारी देश की प्राकृतिक संपदाएं, हमारे देश की औद्योगिक क्षमता, हमारे प्रदेश की अध्ययन की क्षेत्र की क्षमता, पर्यटन की क्षमताएं अपार है और मैंने ये सदैव माना है कि मध्य प्रदेश को भी एक राज्य में भी अनेक क्षमताओं के आधार पर देखा जाना चाहिए। And I've always believed that you must look at the comparative and competitive advantages of every portion of our state. The northern portion of our state, which comprises of Gwalior, Chambal and Bundelkhand, has very different advantages compared to, let's say, Malwa or Mahakaushal or the Vind region. Where on one side, if you look at Gwalior, Chambal and Bundelkhand, the opportunities with regard to tourism, the opportunities with regard to infrastructure and industrialization are tremendous. When you look at the Malwa area, that's really our agricultural belt and industrial belt of the state. One of the reasons why Madhya Pradesh has come very high on agrarian production, whether it's dalhan or tilhan, chana ya soybean, a lot of that credit must go also towards the Malwa region. Then when you move towards Mahakaushal, you look at the mineral-rich area of the state. And जो प्राकृतिक संपदाएं हैं हमारे वहाँ, चाहे कोयला हो, चाहे अनेक अदर मिनरल्स हो, उसके आधार पे भी उस क्षेत्र की विशेषताएं में बहुत बढ़त है, which is why you see many power plants, for example, located in that area of the state. And finally, the Vind region, which borders on the one side Uttar Pradesh, has its locational advantages from both an industrialization point of view, a defense point of view, as well as a mineral-rich area point of view. So there are tremendous opportunities across Madhya Pradesh, and that is what our government has been working towards unleashing over the last 15 to 18 years in Madhya Pradesh, which is why you have seen across all indicators, especially in the India Today review that comes out every year, Madhya Pradesh has emerged from its Bimaru status to really a Pragatikarak status across various frontiers. Just a quick follow-up on this. What are the 3 or 4 things you would like to see happen in Madhya Pradesh in the next year or two? What would you like it to focus on? Well, I think the next year or two is too short a window, Raj, to look at ideation, execution, fruition, and the benefits of that percolating down. I think it's important to look at this process as a continuum. Development and progress is always a continuum. It's not something that's it's something that's dynamic and not something that's static.
And I think in the last couple of years, the developments that have taken place across infrastructure, across roads, in the last 1 year, the area of civil aviation, the impetus that I've given in Madhya Pradesh in that area, all have started bearing fruits. In addition to the rapid industrialization, location of industrial plants, Madhya Pradesh is becoming more and more a center of industrial development as well as we see time going by. कौशिक। नमस्कार सिंधिया साहब, मैं हिंदी में ही पूछ लूंगा क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है हिंदी ज़्यादा सब लोग पसंद करते हैं। आप सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, तो इस हिसाब से आपने मध्य प्रदेश की जो सिविल एविएशन कनेक्टिविटी है, आज से इवन 2-3 साल पहले भी जब हम मध्य प्रदेश आए थे, तब से अब जब हम आए हैं, मैंने बहुत एक चेंज देखा है, बदलाव काफ़ी है सिविल एविएशन में। तो मध्य प्रदेश को देश के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने के लिए पिछले 1 साल में आपने कितने कदम उठाए? एक दूसरा थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल है ये कि आप पहले भी मंत्री रह चुके हैं यूपीए गवर्नमेंट में और अब मोदी जी के सरकार में आप मंत्री है, तो दोनों कार्यकाल में काम करने की जो पद्धति है, इसमें क्या अंतर आपने देखा है, क्या अनुभव किया है, दोनों अनुभव में अंतर क्या है, ये थोड़ा विस्तार में बताएंगे। पहले तो मैं आपको कौशिक आपके क्लिष्ट एवं शुद्ध हिंदी के लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूँ। आपकी हिंदी हर दिन और क्लिष्ट और शुद्ध होती जा रही है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे साथ में ये बता दीजिए मैं असम से हूँ। देखिए, मैं मानता हूं कि नागरिक विमानन क्षेत्र देश का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है आवागमन का, और जिस तरीके से शायद रेल के क्षेत्र में एक उत्सुकता, एक महत्वपूर्णता होती थी 80s के दशक में और 90 के दशक में, वही एक उत्सुकता और एक महत्वपूर्णता अब नागर विमानन क्षेत्र में आ चुकी है। इसके पीछे कई कारण हैं। अगर एक साधारण कारण मैं आपको बताऊं तो हमारी जीवन बड़ी व्यस्त हो चुकी है। आज लोगों के पास समय नहीं है व्यर्थ करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने में 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 5 घंटे हम व्यर्थ करें। लोग पॉइंट टू पॉइंट जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं, और यही एक कारण है, मुख्य कारण है। अगर हम देखें कि कोविड के पहले के समय में 19-20 की अगर हम बात करें, तो जहां रेल के द्वारा करीब 18.5 करोड़ लोग केवल फर्स्ट एसी और सेकंड एसी तक मैं ये कमेंट सीमित कर रहा हूं, क्योंकि वही एक सीधा ताल्लुकात नागर विमानन क्षेत्र के साथ रखता है, क्योंकि विमान में भी एयर कंडीशन चलती है। तो 18.5 करोड़ यात्री रेल फर्स्ट एसी और सेकंड एसी से जाते थे, और करीब 14.5 करोड़ यात्री नागर विमानन के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह अपना आवागमन करते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें यह है, या बिंदु इसमें यह है, कि जो रेल का जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है इन दोनों क्षेत्रों में, फर्स्ट एसी और सेकंड एसी में, ये केवल 5.3% है, और नागर विमानन क्षेत्र का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट करीब 10.5% है। तो ये समय भी आने वाला है अगले 10-15 सालों में, जहां नागर विमानन के द्वारा रेल फर्स्ट और सेकंड एसी, केवल फर्स्ट और सेकंड एसी की मैं बात कर रहा हूं, से ज्यादा लोग नागर विमानन के आधार पर अपना यातायात पूर्ण करेंगे। अब मध्य प्रदेश की हम बात करें, जब मैंने कार्यभार संभाला था पिछले जुलाई माह में, तो करीब 1 साल हम मान लें, मध्य प्रदेश में 1296 एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स होती थी एक महीने में, और आज के दिवस पर अगर आप देखो तो 4422 एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स होती हैं। मतलब 242% वृद्धि हमने मिलकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मध्य प्रदेश को दी है केवल 1 साल के अवधि। और उसे अगर आप एक शहर में अगर आप देखो, तो जहां भोपाल की कनेक्टिविटी हमारी राजधानी है, जहां आप लोग आज विराजमान हैं,
भोपाल की कनेक्टिविटी केवल 5 शहरों के साथ होती थी। आज वही भोपाल की कनेक्टिविटी जो 5 शहरों के साथ होती थी, आज 9 शहरों के साथ, 13 शहरों के साथ हो चुकी। तो करीब करीब 300% वृद्धि भोपाल की कनेक्टिविटी में आई। आज भोपाल बिलासपुर के साथ जुड़ा है, चेन्नई, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर, पुणे के साथ अतिरिक्त जुड़ा हुआ है 13 शहरों के साथ। और इंदौर की हम बात करें, जो हमारे लिए मुंबई है, हमारी आर्थिक राजधानी है, इंदौर जो उस समय में 8 शहरों के साथ जुड़ी हुई थी, आज वही इंदौर 19 शहरों के साथ जुड़ी हुई। एक साल में करीब 200% वृद्धि हमने इंदौर के लिए दिलवाई है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमने इंदौर को दुबई के साथ भी जोड़ दिया है। तो ये वृद्धि इन दोनों शहरों, मुख्य शहरों में मध्य प्रदेश की आई। अगर ग्वालियर की हम बात करें, जो मेरा गृह शहर है, ग्वालियर में केवल 5 शहरों के साथ कनेक्टिविटी थी, आज वही ग्वालियर 9 शहरों के साथ कनेक्ट हो चुका है। और जबलपुर की हम बात करें तो जबलपुर केवल 5 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, आज वह जबलपुर भी 9 शहरों के साथ जुड़ा है। तो हर एक बड़े बड़े शहर में कनेक्टिविटी करीब करीब 200 से 300% हम लोग ने बढ़ा दी। अब अधोसंरचना की हम बात करें, एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो जबलपुर में एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना हमारी लागू है 400 करोड़ रुपए की, जहां एक नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल और नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर हम लोग बना रहे हैं। और जबलपुर के रनवे को जो 2000 मीटर की थी उसे बढ़ाकर 2750 मीटर की बना रहे हैं, ताकि बोइंग और एयरबस की फ्लाइट भी जबलपुर में हम लोग लैंड कर पाए। भोपाल और इंदौर के दोनों एयरपोर्ट्स में कार्गो फैसिलिटी हम लोग बना रहे हैं। ग्वालियर के लिए एक नई महत्वाकांक्षी एयरपोर्ट, हवाई अड्डा का स्थापना हम लोग कर रहे हैं। 500 करोड़ रुपए की लागत से ये एयरपोर्ट बनेगा। करीब 20,000 स्क्वायर मीटर का ये एयरपोर्ट बनेगा 4 एरो ब्रिजेस के साथ। तो आने वाले 3-4 दशकों के लिए ग्वालियर की पूर्ण रूप से हवाई जहाज की फैसिलिटी हम लोग आज के दिवस पे हम लोग तैनात करने जा रहे हैं। इसी के साथ छोटे छोटे शहरों में भी हम लोग एक कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रीवा के एयरपोर्ट के लिए हम लोग ने 50 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं और मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर रीवा की एयरपोर्ट को भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और उड़ान योजना के तहत इन छोटे छोटे शहरों को भी हम लोग जुड़ा रहे हैं। करीब 50 रूट्स उड़ान योजना के तहत हम लोग ने मध्य प्रदेश में अवार्ड किए हैं, जिसमें से कई रूट्स प्रचलित भी हैं। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि वे पहले मुख्यमंत्री में से थे जिन्होंने वैट, जो ATF पर वैट लगता है, जो मेरे आने के पहले करीब 24 राज्यों में 20 से 30% तक था, जो एक प्रतिबंध हो जाता है इस आवागमन की सुविधा को जन जन तक पहुंचाने तक। मध्य प्रदेश ने इस 25% वैट को 4% से कम किया है, जिसके आधार पर इतनी फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी भी हम लोग मध्य प्रदेश को दे पाए। तो एक पूर्ण क्रांति आई है मध्य प्रदेश में। और आपके दर्शकों को भी शायद इसका अनुभव मध्य प्रदेश में हुआ होगा, जिसके आधार पर इतनी कनेक्टिविटी एक एक शहर के साथ, मध्य प्रदेश के मुख्य 4 शहरों के साथ जुड़ाव अब बन चुका है। देश के साथ मध्य प्रदेश जुड़ चुका है। मध्य प्रदेश जो देश का हृदय स्थल है, अब देश का हृदय स्थल बनने में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो रहा है। थैंक यू। सवाल का दूसरा हिस्सा आप कर सवाल का दूसरा हिस्सा आपने याद दिलाया कौशिक, धन्यवाद। मैं मानता हूं कि जिस तीव्र गति से प्रधानमंत्री की जो सोच और विचारधारा है कि हर योजना की घोषणा नहीं, लेकिन हर योजना का क्रियान्वयन, और उस क्रियान्वयन के आधार पर उसका लाभ जन जन तक हमें पहुंचाना होगा। हम लोगों की कैबिनेट मीटिंग्स हो, हम लोगों की मंत्रालय की प्रक्रिया हो, सारी की सारी डेडलाइन और कमिटमेंट ओरिएंटेड है, ताकि हर महीने या हर वर्ष एक नई शुरुआत और एक नई क्रांति देश की जनता को हम दे पाए। यही सोच और विचारधारा के साथ कि ये सरकार जनता की सेवा के लिए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी स्लोगन के साथ दिन प्रतिदिन हमारी सरकार कार्य कर रही है। अमित जी, मैं सवाल कर लेता हूं।
अमित बोल रहा हूँ सिंधिया जी, मेरा सवाल यही कि जो शुभकामनाएं मैंने आपको दी थी, पुनः शुभकामनाओं के साथ आगे संभावनाओं पे बात कर लेता हूँ। संभावनाओं का जिनका जिक्र आप कर रहे थे, कुछ सवाल था रीवा का। आपने कहा कि भविष्य में रीवा हो सकता है, कैसे छोटे छोटे शहर, ऐसे और कौन कौन से शहर है एमपी तक के लिए मैं जाना चाहूंगा, और मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ऐसी संभावनाएं हैं, जैसे सागर भी है, रीवा है, जहां पर आपको लगता है कि विस्तार हो सकता है विमानन सेवा का? अमित, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो। मेरी कोशिश सदैव होती है कि मैं दो तरीके के नेता होते हैं। एक वो नेता होते हैं जो कमिटमेंट ज्यादा दें और क्रियान्वयन कम हो, और दूसरे नेता होते हैं जो कमिटमेंट कम दें और क्रियान्वयन ज्यादा करें। मेरा 1 साल का कार्यकाल आपने देख लिया है कि मध्य प्रदेश के लिए हम लोग ने किस तरीके से एक क्रांति नागर विमानन क्षेत्र में हम लेके आए हैं, और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि मेरी हर संभव कोशिश होगी, केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं लेकिन देश के हर छोटे छोटे कस्बे और शहर में भी ये नागर विमानन सेवा हम लोग पहुंचाएं। मैंने आपसे कहा कि रीवा की शुरुआत हम लोग मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर जल्द से जल्द हम लोगों की कोशिश होगी। वर्तमान में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 8 एयरपोर्ट्स मध्य प्रदेश में हैं, जिसमें से 5 ऑपरेशनल हैं, भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, इंदौर और ग्वालियर। इसके अतिरिक्त 3 हमारे एयरपोर्ट्स हैं, खंडवा, पन्ना और सतना और रीवा, जहां हम लोग शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। पर ये सब निर्भर होगा उड़ान योजना के तहत जिन एयरलाइंस की बोली आएगी। उदाहरण के तौर पर जो बोली हमने अभी रखी है उसके आधार पर दतिया के लिए बोली आई है, पंचमढ़ी के लिए बोली आई है और रीवा के लिए बोली आई है। तो हमारी कोशिश होगी पहला हम अपना ध्यान इन 3 एयरपोर्ट्स पर रेखांकित करें, और ये एयरपोर्ट्स में भी हमारी जो नई स्कीम है अमित, जो हमने शुरुआत की, क्योंकि कनेक्टिविटी केवल बड़े बड़े प्लेन्स की नहीं होती, इंटरनेशनल से डोमेस्टिक वाले आने वाले प्लेन्स की नहीं होती, डोमेस्टिक से आपके बड़े मेट्रोज तक पहुंचने वाली प्लेन, इंदौर भोपाल तक प्लेन जाने वाली नहीं होती, लेकिन छोटे छोटे शहर जैसे रीवा तक पहुंचने और रीवा से लास्ट माइल लोकेशन तक। तो एक स्मॉल एयरक्राफ्ट स्कीम मैंने करीब 4 महीने पहले मैंने घोषित की थी, जिसे उड़ान की इस योजना में मैंने सम्मिलित की है। ये सब 20 सीटर हैं, तो 19 सीटर एयरक्राफ्ट, 15 सीटर एयरक्राफ्ट, 11 सीटर एयरक्राफ्ट, और इसमें कई शहरों के लिए बोली भी आई है। उदाहरण के तौर पर दतिया के लिए, पंचमढ़ी के लिए, रीवा के लिए, जो सब 19 सीटर हैं। तो ताकि हम लोग आवागमन की सुविधा आम जन तक हम लोग पहुंचा पाए और छोटे प्लेन्स के साथ भी हम लोग पहुंचा पाए, जिसके सफलता के आधार पर सहूलियत भी आम जन को हो पाए। दतिया पचमढ़ी जो आपने बताया, ये अब नई संभावनाओं के तौर पर दतिया, पंचमढ़ी और रीवा के लिए बोली आई है। अब उसको हमें सफल बनाना है। पहले मैंने निवेदन किया है मध्य प्रदेश सरकार को कि रीवा का एयरपोर्ट हैंडओवर कर लें, क्योंकि उसके लिए 50 करोड़ रुपए भी मैंने रेखांकित कर लिया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वर्तमान का करीब 63 एकड़ है, उसके अतिरिक्त 137 एकड़ की जरूरत है, ताकि ATR की सुविधा भी, बड़े प्लेन की सुविधा भी हम लोग दे पाए। पर शुरुआत हम लोग करेंगे 19 सीटर के साथ। Sindhya ji, I'm going to ask you about the other hat that you wear, the steel ministry, and particularly what it can do for the state. Apparently, there are a lot of small-scale steel industries that make a special kind of steel. There have been problems of skilled manpower, modernization, quality control and research. The recent survey apparently showed a decline in contribution of small-scale units from Madhya Pradesh. What do you intend to do about it? In what way can you help them? देखिए, इस्पात की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देश की प्रगति और विकास में सदैव रही है। वर्तमान में करीब 2% घरेलू उत्पादन का दर सीधा इस्पात के क्षेत्र से दिया जाता है, और अप्रत्यक्ष रूप से अतिरिक्त करीब 5% घरेलू उत्पादन का दर भी इस्पात के क्षेत्र से आता है। हमारी वर्तमान क्षमता देश में, और इस बात का हमें बड़ा गर्व होना चाहिए कि विश्व में हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं इस्पात के। वर्तमान में हमारी कैपेसिटी करीब 154 मिलियन टन पर एनम है,
और हमारा प्रोडक्शन उसका 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के आधार पर करीब 120 मिलियन टन पर एनम है। पर राज जी, जैसे आप समझेंगे कि इस्पात वो उस तरीके की इंडस्ट्री है जिसका कोलोकेशन रॉ मटेरियल के करीब होना अनिवार्य है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन इसका बहुत बड़ा एक कॉस्ट बेसिस बन जाता है। तो जितने भी आपके हैवी मिनरल डेवलपमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे इस्पात हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, ये सब रॉ मटेरियल के समीप लोकेट किए जाते हैं। और हमारे जितने भी माइंस हैं वो ज्यादा करके उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, इस बेल्ट में आयरन ओर के माइंस हमारे रेखांकित हैं। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में इस्पात के सेक्टर में हम लोगों की इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स नहीं, लेकिन हमारी सेकेंडरी सेक्टर यूनिट्स, स्टील इंडस्ट्री वहां अच्छी तरह से स्थापित है। और मैं आपको ये बताते हुए भी मुझे खुशी है कि कोविड के जमाने में भी अगर हम लोग देखें तो 2019-20 में जो करीब 42 हम लोगों के संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित थे, कोविड गुजरते हुए भी आज के वर्ष में, मतलब 2021-22 वित्तीय वर्ष में ये बढ़कर 51 हो गए। तो एक्चुअली बढ़ोतरी हुई है मध्य प्रदेश में कोविड के क्षेत्र में भी, और ये बढ़ोतरी खास करके इंडक्शन फर्नेस प्लांट्स में हुए हैं जहां 9 से 13 बन चुके हैं, और री रोलिंग में हुए हैं जहां 29 से 35 हो चुके हैं। पर यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, और वो है रॉ मटेरियल का, क्योंकि रॉ मटेरियल इस एसएसआई इंडस्ट्री के लिए, सेकेंडरी स्टील इंडस्ट्री के लिए मेनली आपके शिप ब्रेकिंग के स्क्रैप से आता है। और आप अच्छी तरह से भली भांति परिचित हैं कि शिप ब्रेकिंग का स्क्रैप जो है वो ज्यादा करके अलांग, गुजरात से आता है। तो वो कनेक्टिविटी और वो अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है जिस पर हम लोग समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये रॉ मटेरियल का लॉजिस्टिक्स इशू है जिसका समाधान हमें निकालना होगा। Should we move a bit to state politics, Sundarji? And of course, I think this is a question that everyone wants your answer to. In terms of the recent civic polls, there was a feeling that the BJP didn't do that well as it should have, and particularly in Gwalior, where you're supposed to have lost the mayoral elections. What is the trends that is there, and what does this indicate? देखिए, अगर हम इसके आंकड़े देखें तो दो तरीके के चुनाव मध्य प्रदेश में वर्तमान में हुए हैं। एक हुए हैं जिला पंचायत और जनपद के चुनाव, जो ज्यादा करके ग्रामीण अंचल के साथ जुड़ाव रखते हैं, और दूसरा चुनाव हुआ है नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम का। अगर जिला पंचायत और जनपद की हम बात करें, जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो उसमें एक तरफा स्वीप भारतीय जनता पार्टी की हुई है सारे जिला पंचायतों में, सारे जनपदों में। और जहां तक आपने बात की ग्वालियर चंबल संभाग में, तो सारे जिला पंचायत में भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष बैठे हुए हैं, और अधिकांश जनपदों में भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बैठे हुए हैं जो जनता के द्वारा चुने गए हैं। अब आए हम लोग नगरीय निकाय चुनाव में, जहां हम लोग नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम की हम बात करें। यहां भी दोनों श्रेणियों में, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आज उन नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में अधिकांश विराजमान है। जहां तक नगर निगमों की बात करें, हमारे प्रदेश में 16 नगर निगम है, और 16 नगर निगमों में से हम लोग 9 नगर निगम हम लोग जीते हैं। तो पूरी मेजॉरिटी, मतलब 60% से भी ज्यादा नगर निगम में हमारे डायरेक्ट अध्यक्ष बैठे हुए हैं। और जिन नगर निगमों में हम लोग नहीं जीत पाए, उदाहरण हो ग्वालियर या मुरैना या कटनी या जबलपुर, इन नगर निगमों में भी पार्षदों की संख्या की मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो शायद हमारी कमियां रही हों, उन कमियों पर हम लोग विश्लेषण करेंगे और सुधार करेंगे, और जनता का विश्वास हम जरूर दोबारा जीतेंगे। चुनाव में जीत और हार दोनों होती है,
जहां जीत का जश्न मनाया जाता है, वहां जहां हम लोग जीत नहीं पाए हैं वहां विश्लेषण भी होना चाहिए और आगे का मार्ग प्रशस्त हो, आगे का मार्ग का समाधान हो। इस पर हम लोग दिन रात कार्य करेंगे, ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। कौशिक, ये सवाल मध्य प्रदेश का नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि मध्य प्रदेश के लोग भी इस बारे में सोच रहे होंगे। अभी आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने घोषणा किया है कि जो कैप है एयरलाइंस के टिकट प्राइसिंग में, वो हटा दिया जाएंगे। तो जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो एयरलाइंस के बिहेवियर है फ्लाइट में, वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। कई ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सामने आए हैं जो पहले मिठास हुआ करते थे एयरलाइंस के बिहेवियर में, स्टाफ के बिहेवियर में, वो अभी है नहीं। और कैप प्राइसिंग में देखा जा रहा है कि हर बात पे एक तरह से शुल्क लगाया दिया जाते हैं कि सीट का तो है ही, अभी तो कुछ दिन पहले बोर्डिंग पास में भी शुल्क लगाया दिया गया था, और पता नहीं ये कैप हटने के बाद और क्या क्या आ जाएंगे। हो सकता है कि एयरलाइंस में पहले घुसने का भी शुल्क लग जाए। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस मामले में क्या कर रहे हैं कि सर्विस जहां पे खराब होते जा रहे हैं, जो प्राइसिंग है वो ऊपर जा रहे हैं, ये दोनों में एक बैलेंस लाने के लिए क्या करेंगे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री? पहले तो कौशिक, मैं आपके वक्तव्य के साथ पूर्ण रूप से असहमत हूं। अगर आप विश्व भर के सिविल एविएशन नागरिक विमानन के एयरलाइंस को देखें तो भारत की कॉस्ट लेवल्स, आई क्वालिटी ऑफ सर्विस लेवल्स, शायद विश्व में सबसे अत्यधिक या विश्व के सभी देशों के सबसे अत्यधिक देशों में से एक भारत है। क्वालिटी ऑफ सर्विस हमारी एयरलाइंस की बहुत जबरदस्त है। जहां तक आपने मुद्दा उठाया अलग अलग तरीके के शुल्क, हम लोग एक फ्री मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं और आपको जैसे विदित है कि नागरिक विमानन क्षेत्र एक अनरेगुलेटेड सेक्टर हो चुका है, डीरेगुलेटेड सेक्टर हो चुका है। तो एक डीरेगुलेटेड सेक्टर में सारे प्लेयर्स को एक अनुमति देना अपने प्राइसिंग बास्केट में, ये भी अनिवार्य है। कल अगर मीडिया एक डीरेगुलेटेड सेक्टर है और इंडिया टुडे पर एक नियम लागू हो जाए कि आप अपने प्रसारण पे ₹1 से ज्यादा नहीं चार्ज कर पाए, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसके फेवर में होंगे। लेकिन जो आपने मुद्दा उठाया, दो महत्वपूर्ण, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बोर्डिंग पास पर जो शुल्क की बात की गई थी वो हमने रिमूव करवा दिया है ऑर्डर के आधार पर। जब मेरा ध्यान आकर्षित किया गया उस पर, तो मैंने रिमूव किया। हमारी कोशिश ये है, जो कौशिक आपको समझना चाहिए कि हमारी कोशिश है कि सहूलियत और डिजिटलाइजेशन पर हम जरूर जाएं, पर हर यात्री के लिए वो सेवा बोर्डिंग पास की भी अनिवार्य है और उस पर चार्ज नहीं होना चाहिए। और इसलिए वो ऑर्डर हमने निकलवाया जिसके आधार पर बोर्डिंग पासेस पर अब चार्ज नहीं लगाया जाता। जहां तक दो महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए, एक जो मुद्दा आपने उठाया कि प्राइस बैंड्स, फेयर कैपिंग हमने हटाया। हाँ, हमें ये सोचना होगा कि फेयर कैपिंग हमने लाया क्यों। फेयर कैपिंग लाने के पीछे दो कारण थे। सबसे महत्वपूर्ण कारण था कोविड के वातावरण में जहां एयरलाइंस की कैपेसिटी 0 के करीब हो चुकी थी और उनके फिक्स कॉस्ट अभी भी उतने ही लेवल पे थे। उनके लीजिंग कॉस्ट, जब प्लेन सारे के सारे जमीन पर थे, तो उनको एक थोड़ा सेफ्टी नेट देने की जरूरत थी ताकि उनकी रेवेन्यू मिनिमम हो पाए। दूसरे तरफ हमारी ये भी कोशिश थी कि यात्रियों पर ज्यादा भार न पड़े, तो उस फेयर बैंड में एक लो बैंड भी था कि इससे कम आप चार्ज नहीं कर सकते, ताकि एक प्राइस वॉर ना हो कि कौशिक जाके 10 पैसे में बेच दे और राज जी को ₹1 में बेचना पड़े और उनका बिजनेस बंद हो जाए, क्योंकि प्रेडेटरी प्राइसिंग भी बहुत होती है हमारे सेक्टर में। तो एक फ्लोर हमने बना दिया था और उसी के साथ एक हमने हाइट भी बना दिया था कि इससे ज्यादा आपका फेयर चार्ज आप नहीं कर सकते। और मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि पिछले 10 महीने में जो फेयर बैंड हमने इंडिकेट किया था, उस फेयर बैंड के करीब 40-50% अंतर्गत ही फेयर चल रहे थे। और मैंने ये पहले दिन से कहा था
कि आई एम अ बिलीवर इन अ फ्री मार्केट. I do not believe in regulating a sector that has been deregulated. And if I start regulating that, all of you at India Today will be the first ones to criticize me. So I am finding it very strange that when I have removed a regulation which should not have been there in the first place, it was only there because of COVID, उसके बाद भी आज आप बैठ के ये इस विषय पर हमारी चर्चा हो रही है. All our purses are hurting. मैं जानता हूं कि प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपकी जो पहरेदारी होती है, अगर करो तो भी मरे, अगर न करो तो भी मरे. पर फिर भी मैं आपका प्रश्न जनसेवक के रूप में ले रहा हूं. और मैंने जो स्टेबलाइजेशन देखा है, स्टेबलाइजेशन के आधार पर मैं नहीं मानता कि अब वो प्राइस बैंड की कोई जरूरत है. और खास करके एक डीरेगुलेटेड मार्केट में, हमारे मार्केट में इस बात की भी बड़ी खुशी है कि एक नई एंट्रेंट भी आया है. अकाशा एयर के रूप में एक नया एंट्रेंट, जो 20 साल केवल एयरलाइंस बंद होती रहती थी, अब पहली बार एक नए एयरलाइन का जन्म हुआ है. इसी के साथ जेट एयरवेज का एक पूर्ण जन्म भी होने वाला है. तो 20 साल में जहां हमने सुना है किंगफिशर, बाकी एयरलाइन सब बंद होती जा रही हैं, एक दो नए एयरलाइंस की जन्म होना भी एक शुभ संकेत है. और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो 18.5 करोड़ 14.5 करोड़ हमारे यात्री 19-20 में होते थे नागर विमानन क्षेत्र से, आने वाले 5-10 सालों में अगर इसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी जोड़ें जो करीब 6 करोड़ हैं, तो कुल मिलाकर 20 करोड़. ये आने वाले 5-6 सालों में 40 करोड़ तक ये आंकड़ा जाएगा. इसका मुझे पूरा विश्वास. अमित, मैं बिल्कुल सवाल कर लेता हूं. और पहले मेरे सहयोगी कौशिक आपसे सवाल कर रहे थे सिंधिया जी, और आपने बड़ा अच्छे से जिम्मेदारी से जवाब दिया. सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है, दायित्व तो आपका था, आपने भी दायित्व का निर्वहन कर लिया. आसमान विमान के बाद अब मैं सियासी जमीन पर आ जाता हूं. और मेरा सवाल यह, ग्वालियर का एक कार्यक्रम याद आ रहा है मुझको. ग्वालियर के एक कार्यक्रम में, आध्यात्मिक कार्यक्रम में, जैन मुनि थे, उन्होंने भविष्यवाणी की, बड़ी भविष्यवाणी की आपके मुख्यमंत्री बनने को लेकर मध्य प्रदेश के. और उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की होने लगी, क्या 2023 में ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में चेहरा होंगे बीजेपी का? इस पर आपकी प्रतिक्रिया. देखिए अमित, आप मुझे पिछले 20 साल से जानते हैं. बिल्कुल. और मेरे पूज्य पिताजी और मेरी आजी अम्मा राजमाता विजयराजे सिंधिया, मेरे पूज्य पिताजी माधवराव सिंधिया, हमारी सदैव पीढ़ियों से यही कोशिश और यही एक लक्ष्य और यही एक मैं अगर अतिशोक्ति न होगा अगर मैं कहूं कि हमारा एक यही मिशन है, और वो मिशन है जनसेवा, विकास और प्रगति. इन 3 पीढ़ियों ने कभी भी आपको ये मौका नहीं दिया कहने के लिए कि कुर्सी, आशा, अभिलाषा, एम्बिशन एक मूवर रही है कभी भी इस परिवार की. तो मेरा उद्देश्य है, राजनीति मेरे लिए एक माध्यम है, राजनीति स्वतः में एक अंत मेरे लिए नहीं है. जनसेवा मेरा संकल्प है और लक्ष्य है, और राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं. तो अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मैं आपका प्रश्न थोड़ा बदलूंगा कि आपकी जिंदगी में एम्बिशन क्या है, तो मेरे जिंदगी में भी आशा अभिलाषा है. और वो आशा अभिलाषा है कि मध्य प्रदेश के जन जन के दिल में मैं एक छोटा सा स्थान पाऊं, तो मैं अपने जीवन को सफल मांगूंगा. Sindhya ji, it's now 2 years since you've left the Congress. How has the experience been with the BJP? Any regrets? And do you meet Kamal Naad ji and have a chat with him, or you're not on talking terms? देखिए राज जी, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि मैं अपने अतीत पर मैं चर्चा नहीं करता, मैं अपने वर्तमान और भविष्य पे करता हूं. लेकिन मैं ये मानता हूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि जनसेवा का मार्ग प्रशस्त और जनसेवा के प्रति एक कार्यकर्ता के रूप में पूर्ण रूप से संकल्पित होकर कार्य करने की एक वातावरण और एक मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मिला है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी का आभारी हूं. जहां तक मेरे पूर्व मुख्यमंत्री की बात हुई, कमलनाथ जी का, वे मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनका आदर करता हूं, मान सम्मान करता हूं. और क्यों न जब भी हम मिले हम लोग सौहार्दपूर्ण व्यवहार के आधार पर चर्चा करें, विचार विमर्श करें.
मानवता सबसे महान होती है राज जी, राजनीति सबसे महान नहीं होती. And finally, we've got only about 5 minutes left. Let's soar a little bit into the national scene in terms of civil aviation. Where do you see it go? What are the big things you are doing? Four or five big things you're doing in civil aviation that could make the difference, or you'd see a revolution that's happening? देखिए, what I see happening now is that if you look at every industry, Raji, and you've seen every industry grow in India from a very close perspective, and every industry follows an S-shaped curve. And the bottom of the S is when an industry is in its nascency. So growth, the slope, the delta, the growth is at a very low rate. And then you come to the mid portion where growth accelerates tremendously. And then when an industry attains maturity, again, the growth slopes off again. And I believe that we are at the beginning of the mid portion of the S-shaped curve as far as civil aviation is concerned. You're going to see exponential growth in this sector because the demand is there, and along with the demand, the point that Kaushik made, and I want to refute him once more, the cost levels have declined exponentially. You remember 15-20 years ago, a round trip to Bombay-Delhi would end up costing you almost 2 lakhs of rupees. Today, that costs you, a round trip costs you 15,000-20,000 rupees, or 30,000, 25,000 rupees. And therefore, with lowering of costs like we have seen in telecom, come huge volumes. And the industry moves from a low volume, high margin game to a high volume, low margin game. And similar is going to be the experience in civil aviation. Some numbers I gave out to you. When you have 14.5 crore domestic travelers, 6 crore international travelers today, I see that growing and doubling to 40 crores over the next 3 or 4 years. That talks of the potential. If you look at the fleet size in 13-14, we had only 410 aircrafts in India. We have close to 700 aircrafts in India, growing at a CAGR of almost 15%, almost 100 aircraft per year will be added to our fleets in the coming days. The third point, data point for you. From independence till 2013-14, we had only 74 airports in our country. In the last 8 years, we have built out 68 airports, heliports, and waterdromes, taking the number to 141. I see that number growing to almost 220 airports, heliports, and waterdromes over the next 3 to 4 years. So therefore, the ecosystem of civil aviation today is ready to be implanted firmly in India, within India, which was not the case before. What does that mean? That means FTOs, flying training organizations, will be on the rise. We have 34 today. By the end of next year, I propose to raise that to close to 49. 4 have already started operations, 2 in Kalburgi, 1 in Jalgaon in Maharashtra, and 1 in Kaushik's home state in Lilabadi in Assam. And I see that growing to 49 by the end of next year. Also, I see MROs growing in India. It's close to a 2,500 crore industry, of which almost 85% goes abroad in terms of engine servicing. You've heard the announcement by Safran that they will be investing $150 million in Hyderabad at a facility to be set up where almost 1,000 engines will be serviced on an annual basis. So I see many more MROs being set up in India. Along with that, the new technology which the PM has championed which is the drone technology. That is going to take off tremendously in India. We've got a PLI scheme which is almost double the turnover. That turnover, let me indicate to you and your viewers, which was 66 crores in fiscal 2021, has almost grown to 300 crores in fiscal 21-22, almost 3.5x within the period of 1 year. That's the kind of growth you're going to see all across the ecosystem of civil aviation. And I would be not exceeding my brief when I tell you that I look at civil aviation becoming the bulwark of transportation in India in the days to come. Final question, Sindhya ji, and there's a lot of young entrepreneurs in this audience. You talked about drones and freeing up the airspace. Where do you see this go? What is the opportunity you see in the business of drones? Well, the business of drones has to be divided, Rajji, into 2 distinct areas. One is the manufacturing of drones, and the other is the what we call DRAS, drones as a service. As far as the manufacturing of drones are concerned, there are 2 very clear areas which have tremendous potential in India.
One is the manufacturing of the drone itself. And now that we've banned import of drones, you're seeing drone companies mushrooming up across the country that are going to be manufacturing drones. The second is the software that goes into a drone. And this is a huge opportunity for the software industry, because every service that a drone is put to use, has a different software that is required for it. And so the software element, which is the brain of the drone, there is tremendous opportunities for that as well. Now, when you come to drone as a service, the great thing that the government of India and the PM stewardship has done is that I believe that there are three legs that any new industry stands on. The first is policy making, and we were very robust in our policy making by announcing the new scheme for drones, putting across the airspace map within a period of 30 days, which was a record across India, and putting in place many, many other policy steps that are required. The second was the incentivization, which came with the PLI scheme. For an industry with a revenue of 60 crores, we had an incentive scheme over 3 years of 120 crores, which really gave a fillip, and there are 23 industries already that have gotten certification under the PLI scheme as we speak, within a period of 5 months. The third is creation of demand. And Government of India itself has created demand across 15 ministries, where all activities will be undertaken by drones. So case in point for you is Swamitwa, where all the Satbara extracts or the land records are being created by drones across the country today. Case in point for you is agriculture, where spraying of pesticides, spraying of seeds is being done completely by drones. Case in point for you is minerals and mines, where excavation and looking at shafts and new opportunities and safety issues are being looked at drones. So there are many possibilities. The possibility as far as the drone is concerned is immense across the country. And I look at this becoming an employment driver of, I would say, close to 4 to 5 lakh individuals. Because when you go to a drone school, it takes 2 months for you to get certified. And with that certification, you can earn a salary of close to 30,000 rupees per month. And you need to be only a 10th class pass to be able to become a drone pilot at the age of 16 years. So the possibilities for our youth are tremendous. And I look at this sector becoming a huge growth enabler in the days to come. Sindhya ji, thank you very, very much for this erudite, articulate, great clarity and lucidity which you spoke with. There is an audience here that would like to give you a very, very warm thank you and welcome for this thing. And we look forward again to having you again at the India Today conclave, not only in Madhya Pradesh, but elsewhere as well. Thank you very much. Thank you so much, Raj. Thank you, Kaushik. And thank you, Amit. Bahut dhanyawad. Jai Hind. अगले सत्र की हम बात करते हैं, और वो है मध्य प्रदेश की उस विषय से जिसका हमने कहा कि मध्य प्रदेश को पुरस्कार मिलता है कृषि क्षेत्र। और कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश में आखिरकार क्या संभावना है, क्या मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में और हासिल कर सकता है। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे और इस चर्चा को मॉडरेट करेंगे मेरे सहयोगी अनिलेश महाजन। अनिलेश, प्लीज वेलकम। आप सबको शुभ प्रभात। मेरा नाम अनिलेश महाजन है। आई एम डेप्यूटी एडिटर विद इंडिया टुडे मैगजीन। फॉर दिस वंडरफुल कन्वर्सेशन आई एम रियली डिलाइटेड टू वेलकम Ajit Kesari ji. He is Additional Chief Secretary in Government of Madhya Pradesh and handles farmers
Agriculture and Farmers Welfare. I welcome you, sir. Now, may I request Prateek Sharma ji? He's founder of Green and Grains, a wonderful entrepreneur. He's making real breakthroughs in how to aggregate the farm produce. I welcome you, Mr. Sharma. Now, may I welcome Sachin Sharma ji? Sachin ji is Vice President Agribusiness in ITC and stationed here. And after government, if I'm not wrong, they are the largest procurer of food grains. Rudra Pratap Singh ji Chauhan, another wonderful progressive farmer and farmer entrepreneur from Madhya Pradesh. He belongs to Indore. So Chauhan, I welcome you. You know, Madhya Pradesh is a fantastic story as far as agriculture is concerned. We all have seen that in last 10, 15 years, the strides the state has made. And that is the fulcrum of growth in the agriculture sector. And especially, you know, if we look at the competitors or peers around, Madhya Pradesh has set an example. They have improved the area under cultivation for agriculture produce. They have improved the irrigation segment. And that the outcome is in front of us. We are seeing that grains, Madhya Pradesh is now competing with Punjab. Last year, they have beaten Punjab as far as wheat production is concerned. They are number one in various oil seeds and pulses. I congratulate Madhya Pradesh for this. But this also poses a bigger challenge that how, you know, for an agriculture side, how they can improve the lives of farmers, how value-add produces can be added to the basket. And Madhya Pradesh had a real advantage that most of the cash crops, you know, Madhya Pradesh used to be a hub, and now the time has come that Madhya Pradesh can take a leap and be a hub for value-add production, value-add crops and its production in the country. Mr. Kisari, you know, before your session, Chief Minister was here. He was talking good about agriculture. Tell us that, you know, now crop diversification is on the top of the agenda. Now you will have to create a space for, you know, other crops than wheat and rice. So how are you planning, you know, to take this crop diversification to the next level? Thank you, Anilesh. So just to brief, I think already the Chief Minister has made his point, and in which I think definitely agriculture has been his favorite issue for a very long time. Let me give you a very brief why we are here and what we are doing, why exactly we are working in this field right now. There was a decade of growth in Madhya Pradesh that primarily was led by increased agriculture productivity and production. And as you very rightly said, that we are now contributing more to the FCI kitty even more than Punjab. Punjab and Haryana were known as the granaries of the country which were feeding the country. But now Madhya Pradesh has overtaken them also, especially in wheat. We had various developments, but there were various issues also. So primarily this diversification and the new model of agriculture that has come around is driven by a few things. First is that what happens after the productivity has increased? Where does the farmer go? How does he increase his income beyond that point? That's one driver. Sustainable agriculture is another point that we have. Madhya Pradesh, unfortunately, with increasing production and productivity and procurement by Government of India, we also landed up in a situation where the primary focus has been shifting on to wheat and paddy, as in other states, typically Punjab and Haryana. So we wanted to change our tracks in between. There's also another point that we have been trying to make is that we need to attract the youth into agriculture. Most of the farmers that we have who are actually working on the field are middle-aged people. The youth is not getting attracted. They don't find it attractive enough. They prefer perhaps to stay in the cities. So we want to take them back to the farmers. So this was the basic objective. The primary objective is driven by two or three things. First is that
a lot of mechanization, bringing in a lot of use of technology, both for the farmers and also facilitating the farmer, asking the farmer and giving him a concept of a comparative crop. We believe that the farmer, in pure economic terms, is a rational person and takes decisions according to whatever benefits him or gives him most utility, that is a decision that he is going to take. So the basic concept is driven by trying to convince the farmer. We, first of all, try to convince the farmer is that this is a crop which is better suitable for you. This will give you more returns. So it's a concept of giving him a competing crop to what he is doing right now in his field today. And the whole of the crop diversity thing is based on that. We're also increasing mechanization and bringing in use of technology that is going to bring back the youth. We're trying to make agriculture as good as any 9-to-5 job. That's the concept. I should feel pride. I ride on a machine. I go and do this. Must be much better than a sales job or any other job, riding a motorcycle, selling things in a city. Farming should be more attractive and more convenient. So the more convenient that we make it, with various elements of technology, with various elements of mechanization, making life more easier for the farmer, that's what our objective is based on. I think this year the government has launched around 10 schemes, new initiatives ranging from millets to organics to crop diversification, and which I think and I believe is a new paradigm. The traditional approach of the agriculture departments was to give more seeds, bring in better seeds. We are doing that already. It's not that we have left that, we are still doing that. But other than that, these are the newer activities that we have taken up. And in initially, as we just had the Honorable Minister talking about drone technology, we are soon going to open 2 drone training schools from the state government, which would be a subsidized activity. And I believe we would be introducing 500 hiring centers which would be providing services of drones within this year in Madhya Pradesh. We are building use cases. And I believe that the government's role is actually trying to demonstrate things. How we try to demonstrate things is, I'll just take 2 models and then I think more detailed questions can come in later on. The 2 quick examples would be, let us say we take the case of drones. What we are trying to do is that we are building use cases. And what are the use cases that a farmer would like? What are the services that he would like through drones? What is the value that he would be willing to pay for that service? How does it compare well with the present service that he is using? Suppose we talk about pesticide spraying. The farmer is spraying pesticides in a manual way today. What is the efficiency that a drone would bring in? What is the cost saving that a drone brings in for the farmer? That is what we are trying to propagate. That is what we will demonstrate for a year or 2. And we believe that once we have demonstrated and set this principle in the farmer's mind, he would be most willing to accept it on his own. And the next concept is of a crop diversification, plus organics built into that. I think various models will come in. The people that you have here are already better working. They would have more working. But our job is to try to facilitate things for them, not do what they are trying to do. If there is a good enterprising farmer, how do we help him grow better? If there is an enterprising company which is wanting to procure something from Madhya Pradesh, how do we facilitate them and bring about the change in the ecosystem so that they procure more from a farmer while being fair to him? So that's another condition. Fair trade is, of course, an essential condition. So I think the crop diversification and the drone crop diversification, very briefly, is a scheme that if you divert a farmer away from paddy and wheat and you convince the farmer that, yes, this alternative crop is better for you, and I as a company am willing to support you in marketing, that is buy your produce and sell it at the price that I have offered to you. We support the company and the farmer both to try to establish this as a model in the market. So a company typically would take 3 years to get this model established. There's no subsidy that we plan to give on a long-term basis. We're just establishing a model. And all these models are good financially, economically viable models. It's just that the government comes in and tries to establish this
as an operational model with the farmer. So that's primarily what we'll do. Thank you, Mr. Kesari. You know, I have a luxury of, moving from government to straight away to a farmer, which many of the chief ministers and even prime minister doesn't have. So may I bring in Rudra Pratap ji here? The biggest challenge right now the crops of Madhya Pradesh are facing is, getting real value for their crop. If you have to convince, a group of farmers, the best way is to create, one of them as, their ideal rather than convincing him about the government policy. You are one of the successful farmers. Tell us how, Madhya Pradesh farmers can get a better value and how Mr. Kesari can help you in achieving it. Thanks. First of all, I'd like to thank India Today and everybody over here to give us an opportunity. To start with, there's a small, I'll take hardly a minute to compile this. In 97, we started working on potatoes. And at that point of time, nobody knew that there's something known as sugar-free potato. So we went to, we were farming ourselves and we used to go to the next door farmers also. And we started testing the sugar in the potato with the sugar strip. And we were laughed at, ki aloo ko koi diabetes ho gayi kai. And over the period, so this is what I've been talking about, 96, 97. By the time 2007-8 came in, most of the farmers in Madhya Pradesh knew, I have this X variety which I'm growing, whether it was LR, whether it was Jyoti, whether it was Chipsona, it had low sugar, my dry matter is 22. The ecosystem comes out of a merit. And we need to understand what are the merits we are sitting on. So basically everybody knows genotype, everybody knows whether our first is the genotype, the second is the weather conditions, and the third is again the practices. And practices will improve if we have an advantage of these two things coming together. And this is one story which I narrate because by 2007, from 7 till 2014-15, Madhya Pradesh was the state where the potato rates were governed by Madhya Pradesh crops for processed grade. Unfortunately, we lost it to Gujarat. And I would say that that has to be a case study which everybody should go through it. And today Gujarat runs it. 3G, when intervened, the government intervened as 3G as a company in Gujarat, they could get drip irrigation right way at the right time. They could get the right seed companies coming over there and get the right kind of long-term storages over there. And today, across board for potato industry, the first choice for any processor is to go over there and establish, which inherently on a weather side, on a water side, on all other sides, Madhya Pradesh has an advantage and we still can pull it back. Only thing is we need to create that ecosystem in the right way. This is one example which I say, but the biggest thing that I see today is Durham, sir. And I feel that as a government, this is one of the biggest opportunities that has come to Madhya Pradesh. With Croatia and Russia going down, the next 5 years, the Durham is in shortage. And we are the biggest poised, worldwide poised state to provide it, but we need small corrections to be done, sir. Today, our whole MSP procurement, we do not procure durum separately, we do not procure soft wheat separately, we do not procure milling wheat separately. Just these three additions, which is an exchequer today for an exchequer, which is a pocket in the hole, is procurement, your MSP procurement will be profitable for the state, sir. I don't know why this is not being brought in. Same way, we have nearly around 29 crops in Madhya Pradesh. When I compare all these 29 crops, one by one, we can take a case study of them. But the interesting part is we are lucky, we have heavy soils. We have day and night temperature variation, which is more than 16 to 18 degrees. So your translocation of all your food material and the dry matter is better in your produce. Now, we have not been able to sell it. I'm very sure our CM is so proactive, you are there, sir, that these things can be done in Madhya Pradesh. So actually, the point, sorry, I'm cutting you short. Actually, we are also running out of shine. The point which Rudraji is making, if I give you a Delhi's perspective, that country went for, this green revolution in 67, 68. But by 91, we realized that, we need pop diversification. And thereon, we required, higher value product and higher value crops. Madhya Pradesh is in that space right now, where they know that, this higher value crops can give
higher per capita income for the farmers. And now the global markets are much more benign because of the higher prices. I should not say thanks to the Ukraine war, but largely because of the Ukraine war. Now Madhya Pradesh has this opportunity. Now you are also talking about the 550 billion economy. So how Madhya Pradesh is looking at helping these higher value crops get into the export market. Before you answer, I want to bring in Prateek into the conversation. He does aggregation of the exotic and organic produce. The another focus of India right now, how we can bring in higher value to these type of crops. So Prateek, you tell us your experience that how government of Madhya Pradesh and maybe government of India can help you in accelerating and bringing more value to the farmers. If you can get your perspective, Mike is yours. Yeah, so actually, if you talk about sustainability or safe food in general, we lack scalability there. So the research, scientific research has supported more towards the chemical farming. So that the package of practices, which established package of practice, which requires, which is needed into safe food, that was lacking. So that is one area of concern for us. That is one prime focus for us. Second is working with the farmers, because again, we do not have these open mandis for safe food. So you will have to work with farmer, because that another angle to that is bringing that traceability. So unless you work with the farmer, traceability is another thing. So these are three major areas you need to work if you are talking about safe food. This requires a government machinery, because you need to work with scientists, because they have the facilities which can be, which need to be included into this. So government kind of support is required to make the footprints, to develop the models. And this crop diversification, the support for next 3 years, gives us that opportunity where we can establish this model and probably prove it that the organic can be grown at scale, that is scalable. So that kind of a thing requires a government support. So these 3 years are going to give us that opportunity. We are also bringing in another concept called the community guarantee kind of a thing, because certifications, they lack what happens in the current certification system is we are limiting ourselves to the certification at the farm, but the produce does not get certified. There is no way for a consumer to probably take the produce to a lab and get it tested, because it is costly. The labs are not available. So you bring in the consumer towards close to the farmers. You make that community where farmer, aggregator and a consumer, they work in tandem. Probably the consumers visit to a farm, so that traceability comes in, that doubt. So initially we thought that it is availability and affordability was a problem. But later when we discussed that at a larger forum, we realized that traceability is another thing the faith consumer have. So even if you call it as a certified organic, they do not believe it, because again they read that it is not. I mean, there are a lot of loopholes into the complete process into it. So making it a community affair probably answers that portion also. So this requires an organized approach, right? And with a project like crop diversification, gives us the opportunity where we have access to a larger farmer base. We are working with FPOs. We have the scientists available to us. The government support is available to us. And this kind of marketing and branding opportunity which is coming to us with the collaboration with the government, that portion is also taken care of. So here I see a larger benefit to an initiative like us and the responsibility on our shoulder to establish this as a model to replicate probably. Mr. Kesari, this certification thing actually is not a Madhya Pradesh specific problem, but we are encountering similar problems elsewhere as well. But if we have to move towards organic or natural farming, your certification system needs to improve and benign towards farmers and aggregator like Prateek. So tell us, how are you tackling this issue?
And plus, the other points which... So I'll just very briefly, how are we trying to unlock the potential of a high-value crop in Madhya Pradesh? See, you all learn by experiences. The recent example of exports of wheat, that actually became a reality for India because Indian wheat was already overpriced as compared to the world wheat. We say that हम बहुत महंगा खाना खरीद रहे हैं, but the fact is that the MSP that we procure it is way higher than the world prices. So, and therefore there was no choice of export. What Madhya Pradesh tried to utilize this opportunity is establish Madhya Pradesh wheat as a brand. We were not into exporting, but establishing Madhya Pradesh's identity of wheat, as he very well mentioned. You'd be very surprised to know, in the last financial year, the total wheat exports from Madhya Pradesh that was recorded was only 2 lakh metric tons. This year, only before the ban came into force, for 1.5 months, our exports that were recorded was 12.5 lakh metric tons. How did we do it? It was a simple change in strategy. First of all, we insisted that all wheat being exported out of Madhya Pradesh origin be recorded as Madhya Pradesh origin, because the country that is importing should also realize that it is coming from Madhya Pradesh. We gave dossiers along with that. What is the benefit of Madhya Pradesh wheat? How is Sharbati wheat advantageous? How is the Madhya Pradesh durum wheat advantageous? And we are the only state in the country which actually records this variety at the stage where the trader buys from the farmer. So as of today, we are recording previously what happens in the mandi. If the farmer is selling wheat, it is recorded as a transaction of wheat. Today we record 8 varieties of wheat in the same transaction, which variety of wheat it is. We also record the grade of the wheat. We have realized the potential when we are talking about mechanization. We are understanding the potential of selling an A-grade wheat at a higher price. We are now soon going to offer the farmer this once we have built the facility. So the wheat is recorded whether it is A, B, C grade, because the customer obviously wants to get a neat and clean wheat. He is willing to pay a higher price for that. We do that. We are also recording whether it is organic or non-organic crop. So all these traceabilities are now being created at the mandi level, at the first point of transaction. That is helping us establish a chain. We are working with the India Brand Equity Foundation to build a brand of Madhya Pradesh agriculture products abroad to all those people coming in. So all these things were missing previously. And the problem actually with all the people was, and we still realize that, I'll just close with the example of wheat here, is that most of the Madhya Pradesh wheat or India wheat that is exported is sold as milling quality wheat. We don't have a facility in the country where we are able to tell what is my protein content, what is my gluten content as a standard. So as not even Madhya Pradesh, as a country we should realize that there are certain things we are not doing. Canadian companies have a whole list. This is my quality of wheat. Koreans want a wheat for pasta or for noodles making where they want a 14% protein content in wheat. Do we have a record keeping of that? No. So that's what Madhya Pradesh has been trying to build in the last 2-3 years. See, as far as the cost of organic certification goes, it's a difficult question to answer. When we talk about FSSAI norms, it has to be tested for 146 pesticide residues. Then only it can be certified as organic according to FSSAI norms. So ultimately, I think most of the people that are trying to sell, what we are also trying to promote, is a locally produced, locally consumed, and with a local, I would say, slight building of confidence. So most people are selling organic as pesticide-free, organically grown. So everybody has to build a trust, and they have developed their own models. What we are trying to do is that through our schemes, we are trying to open more labs, provide cheaper facilities, because the testing has to be done by various entities which are NABL certified. Perhaps a government lab would not be NABL certified easily because of our practices. But yes, we are trying to support many companies by providing them testing facilities who are exporters or who are into organic facility. A community testing or a pool testing as a model is being tried, certain extent supported by government, till the market is willing to pay a price.
of the testing also, because ultimately the market will have to pay and include that as a price. But till the time people understand the value of that, perhaps the government's role is to facilitate that and lower the prices for them. Sachin, here if I can bring you in, the major component of crop diversification is actually understanding the crop. And for understanding the best ways to understand the data and understand how crops are grown in certain part of the country, and ITC for longest of the years, they are into it. So now Chopal 4.0 is ready. So tell us that how digitalization would help Madhya Pradesh, and how you are planning specifically for the state, how farmers can take benefit out of it. That's a very good question, Anilesh. So ITC actually in agribusiness started its e-Chopal from Madhya Pradesh, and I would say that was the first model of using technology at a large scale in field of agriculture. And since then we have worked on various crop value chains in the state, like wheat, soya, pulses, potato, etc. And the government policies were also quite favorable over the years to support such interventions. Like we were the first one to start buying outside the mandi premise, which has been allowed. And so over the years the policies have been supporting. And with this concentrated effort of public and private sector, the state has seen increase in the production productivity and has seen excellent growth in the field of agriculture. But as we move from here, and I say it's Amrit Kal, Krishi Ka Amrit Kal, or the next generation agriculture, there are certain challenges which also come in, which needs to be addressed. So one is that the land holdings are becoming smaller in the state and in country also. Also, if you see, the productivities have improved, but still there is a huge upside which is there in terms of increasing the productivity of our crops in the state. And the change in the climate and sustainable agriculture is also another area. If you see, the rainfall patterns are shifting in the state. So earlier the monsoon onset was earlier, now it's a bit late. So therefore the agriculture also need to adopt towards this. So what we have seen is that going forward, digital agriculture and technologies have a lot of role to play. So there can be a few strategies, and I'm very happy that state is very proactively working towards that, and we are also contributing in our own way. So one is that how do you use digital technologies in unleashing the potential of agriculture. So today, if you look at the large-scale agriculture extension system, it is not customizable to the farmer. While in today's context, every farmer has a specific need. Soil types are different, acreages are different, their risk-taking ability is different, their knowledge base is different. But leveraging the digital tools and technologies, you can actually customize the extension to the farmer, which can actually help reducing the cost of cultivation and also increasing the productivity. There are many tools, drone has been talked about. There are many other technologies like, for example, today's state has digital soil health cards. So through that, a personalized nutrition advisory can go through apps or through other modes to the farmer, which can actually reduce the cost of, say fertilizer to the farmer, because say doses can be given, and focus can be both on macro and micronutrients. Beyond this, there are tools to have instant check of the quality. So digital quality assaying can actually help in the village itself to see the quality, and then farmer can get a better price of that. Satellite imagery is another classic example wherein both biotic and abiotic stress can be seen at the farm level, and state has already digitized the farms, and that's among very few states in India. So that is also another technology. So there are many technologies which can actually help. The digitization is possible. And with this, you increase the productivity of the traditional crop and transfer the area to the crop diversification. That's where the state has come up with this new policy. Now, crop diversification is important because from a consumer point of view also, there's a lot of focus on, say, fruits and vegetable and nutrition-oriented, food. And if the productivity goes up, the nation need of food grains can be met, and the balance area can go for diversification. And diversification in horticulture and medicinal aromatic plant. For the state has a very good agroclimatic zone for
medicinal aromatic plants. We have done a large-scale pilots. We set up a 100-acre experimental farm near Sihor to test with the farmers that what all medicinal plants can grow. And in our large-scale, work with farmer, we have realized that farmer income can go up to 30 to 35% over the conventional crops if they are going for the crop diversification. So that is a very important area, and digitization of the entire value chain can make it happen to personalize these things for farmer, get newer technology. So that is how I think there can be way forward to do Pratik, crop you are also using data analytics, like Pratik was mentioning. Pratik's, I think, is more largely on the big data and blockchain technology. But you are also doing some data analysis to understand the demand of your consumers. So help us in understanding that, if some corporate or some entrepreneur needs to get in, like Rudra is here, he is also using some bit of technology. So how, a new age farmer or entrepreneur can use data understanding to map the demand and look at his future customers? See, tech plays a role in production and on the consumer side both, right? So if I talk about the farmer, the biggest challenge today is farmers do not understand the, they're not putting a lot of energy into understand the crop demands, right? So normally they are dependent on the supplier of it. So they will go with the problem and he will prescribe to whatever solution is as per best suited to him. But if we engage technology into it, that can be standardized, right? So you have those package of practices. If that could be engaged for delivering of those package of practices, that standardize the thing and that reduces the cost also, right? And it helps the state, it helps the final consumer. So if a consumer of that requires a specific nutrients to be developed or a crop to be grown at some, what I would say, on basic standards, right? So those can be delivered with the help of the technology. On consumer side, a continuous availability, if you go to any the grocery online store, you would not find a complete basket of organic vegetables today. Because for that, a continuous supply, you need to work with the farmers. And since they do not work with the farmer, it is not possible for them. You need a solution, tech-enabled solution, which can ensure a continuous supply of these vegetables. So you have your data in place, so you have a target, so you want to have, say, 5,000 deliveries on a particular day. So for those 5,000 orders, there is a demand, right? So 5,000 deliveries requires 5,000 kgs of tomatoes and, say, 500 kgs of chilies. So that need to be readied for that particular day. A technology enables you to do that job. You assign those crops, those farms to through this with the help of technology, and that can ensure. So tech has the scope and a requirement on both the sides. Thank you, Pratik. Okay, Sai Saab, when we look at government, this technology, especially the blockchain one, I was hearing Honorable Chief Minister earlier. He was talking about e-vouchers been given to students for buying bicycle, and farmers are getting these vouchers for buying farm equipments. Tell us how your department is using this blockchain technology to help farmer in farming rather than only buying the equipment in farming. Like this was a good example which Sachin gave, that how customized solutions are being given to the farmers. Are you also thinking on these lines? Yeah, definitely. So I think that's the future. The first point that I would like to say. What's happening is that we have different aspects of technology that we are working upon. As you very rightly mentioned, there are certain technologies like the e-rupee voucher. So Madhya Pradesh today has the first use case of delivering subsidies to farmer using an e-rupee voucher, which has a built-in verification mechanism and a confidence both to the farmer and a negotiating value. So if a farmer gets a voucher in advance for his subsidy, his power to negotiate with the supplier increases. Because it's like having cash in hand.
but he can use the cash for a particular purpose that we are ensuring by modifying the e-rupee voucher system. What happens is that beyond that, what we also need is there are certain direct mechanisms which help farmers. One of the major things that the state has done is that our crop insurance is now 100% technology based in a unique way. There's nobody else in the country doing that. What we have done is that all our crop assessment is now based on satellite imagery. That brings in a lot of transparency for farmers. We are now trying out with different aspects of giving direct inputs. One of the first things that we have done is that there are two things. First is that every land parcel is available to people in a digital way. So what we are doing is that perhaps a technology firm that wants to work with the farmer, there's an issue of data privacy. So we're not throwing open the whole data to anybody. What we are throwing open is the structure and the availability of data and the accuracy of data that we have available with us. So today, if any tech firm wants to work in Madhya Pradesh, that structure, that data accuracy is available. We are providing a sandbox facility for them to be able to test their applications. We are willing to help those people in increasing their domain knowledge. Because what we realized is that many tech firms don't have that domain knowledge. Let's say, I don't know whether it's true, but there are the startups that we have. Most startups are actually chasing a few ideas. There are not many ideas that they have. So what we are trying to do is build a sandbox model for them to try out their ideas, help them with their domain knowledge improvement. We have a very open house kind of a system. You send in your request, we respond to that. And so we have a whole variety of people. He is working with predicting a market for facility. Somebody is working for providing a facility to farmer to identify his pink bollworm in cotton. Somebody is providing a linkage, an individual-based model where one of our department officers will also follow it up in the field. It's not that I simply provide a farmer with a message in his mobile phone or a video in his smartphone. We have a very successful model in animal husbandry, which we are now copying in agriculture, is that any grievance, a solution would be given initially. The AI and other methodologies, technology will help us identify a problem, but it will also be ensured that an individual from the department follows it up. There's an area officer who's responsible. He will contact the farmer and see that, yes, the solution that has been given to the farmer, and the farmer has any leftover questions, he will be able to answer those questions. So I think technology for the farmer is also very important, rather than use of technology in agriculture. And we have very rightly pointed out, so Government of Madhya Pradesh is working on both fronts. Technology which allows the farmer to gain not only from buying inputs, for selling his produce. We have a farm gate app. I'll just take 1 minute about technology, where the farmer actually in Madhya Pradesh today from his house is offering his produce for sale. He doesn't have to go to the mandi anymore in Madhya Pradesh. 21% of my transactions are happening outside the mandi now, not through direct purchase centers of ITC. Any farmer is free to do that. And 21% have actually shifted to that platform. He is offering his produce, the traders respond, and the transaction is done to the satisfaction of the farmer at his field. We have started declogging our mandis. In future, I don't see we have to build any more mandis. We only need to improve the infrastructure. In our mandis, we are working with firms which are providing remote and AI-based quality testing. All those firms are already tied up with us. They are experimenting. We are providing them an ecosystem to pilot so that our farmers understand the concept. And it brings in more acceptability. Our remote sensing technology for crop loss estimation has a political acceptability. All the cabinet ministers and the chief ministers are very happy with that. Normally, the politician is very unhappy with a technology solution that is provided. But here it's the other way around. So the technology that has to be adopted, once it is useful for the farmer, we see widespread adaptation, acceptability both by farmers, both by the ruling party and the opposition party. Everybody loves those solutions.
because it's convenient for everybody. So that is where technology in Madhya Pradesh is playing a major role in agriculture. I won't say that, yes, we have reached the end of it, but yes, we have a long way to go. But definitely the path in which we are heading is bringing in a lot of solutions, bringing in a lot of relief to the farmers and to the people who are either engaged in marketing or procuring or growing. So by saying that you will not be having more mandis, that means that more and more private procurement you will be encouraging. And See, mandis are always for private procurement. The only thing that we are allowing is that the farmer sells from his home. See, that's the convenience. I don't have to carry my goods to selling. See, any businessman knows once you have transported a set of things to a shop, there's a risk of it not being sold. So we have simply removed that risk for the farmer. And what about tax and cesses? We get all taxes and cesses because it's our platform. Okay. So there's no leakage. And in fact, we have brought in a lot of new transactions which were unreported onto our platform. Okay. We see, I'll tell you one figure, the increase we have decongested our mandis, while simultaneously our total arrivals have gone up. And not a small amount. They have gone up by 36 lakh metric tons. ITC procures, I don't know, 5 lakh metric tons from Madhya Pradesh of wheat. So if you look at a company-wise, their procurement is, let's say, a few lakh tons. So having 36 lakh metric tons on an app-based platform in a year, I would say is a huge volume in agriculture produce. So maybe actually we have run out of time. Maybe last question, if I can ask Sachin. Sachin, what is your experience in, trading on this platform, where farmers can directly sell it to you without going to a mandi? So there is no detour now. He can come directly to you. Is it beneficial, or you want some more reforms in the system? No, I think the best thing is the freedom of choice to farmer and the players. So this is, now there are multiple models. So farmer can come and sell in mandi, farmer can come and sell to a private platform, farmer can sell it from the doorstep on the app itself. So therefore, there are multiple avenues. It improves the price discovery to the farmer. It reduces the inefficiency of the system. So as I said in the beginning itself, that the government has been very proactive in opening to multiple reforms. And this has been one of the very good example wherein farmer has now complete freedom of choice to sell wherever farmer wants, in whatever channel farmer wants to sell. But ideally you would want this tax also to go. That will improve the efficiency. No, I think we always look for a level playing field. And the cess, if it is part of the process, it is absolutely fine. Okay, thank you Sachin, thank you Mr. Chauhan, thank you Kesari ji, thank you Sharma ji, thanks a lot for taking your time out. Now I am handing over my mic to my colleague Amit. Mic is yours. Thanks a lot. बहुत अच्छा सेशन, इसमें हमें अच्छी चीजें सुनने को मिली। अगले सेशन की हम शुरुआत करेंगे। अगले सेशन में बहुत कुछ खास और आने वाला है, क्योंकि उसका सरोकार जो है मध्य प्रदेश के एक बड़े लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। वो लक्ष्य क्या है मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा, अगले सत्र की शुरुआत से पहले।
हम एक बार फिर से आप सबका ध्यान चाहेंगे क्योंकि अब सत्र की शुरुआत होने वाली है और जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये सत्र बहुत खास है और मध्य प्रदेश के एक बड़े टारगेट से जुड़ा हुआ है, एक बड़े लक्ष्य से जुड़ा हुआ है और वो है 550 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी मध्य प्रदेश कैसे हासिल करेगा और क्यों इतने बड़ी जो टारगेट की बात आ रही है उसके मायने क्या है ये समझना होगा हमें। और इस सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान हैं प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी, उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश राजनीति और योजना आयोग के। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मॉडरेट करेंगे पिछला सेशन जिस तरीके से आप तक बड़ी अहम जानकारी मेरे सहयोगी अनिलेश पहुंचा रहे थे, इस सेशन को अनिलेश ही मॉडरेट करेंगे। आइए अनिलेश। I again welcome you all. Let me introduce Sachin Chaturvedi ji. Professor Sachin Chaturvedi is a very dear friend. And I have a privilege that like Madhya Pradesh Chief Minister, I keep on seeking his advices and his references to many of my copies on economy. He is my regular check. And in last 4 years, he has been playing a very pivotal role in RBI as well. He's part of their board, functional director there. Plus, he also sits on the board of Delhi University. He is helping them to chart a way forward for not only to improve their educational imparting skills, but also improving the skills of the students there. He also leads a think tank backed by Ministry of External Affairs, RIS in Delhi, and he is helping Government of India to build many of these knowledge base on the trade economics and helps in the trade negotiations. He was regularly helping them with the various multilaterals and bilaterals. I welcome Sachin ji on this platform. Sachin ji, you know, the discussion is on Madhya Pradesh. Chief Minister Saab was in Delhi and he talked about this 550 billion plan that Madhya Pradesh wants to execute in country's $5 trillion dream. So country will be growing at double the pace to achieve $5 trillion this thing. And you think that Madhya Pradesh can grow 4 times in the same time frame. So I'm sure you must be having a blueprint. So I want to understand from you that, you know, how you want, this state to grow. This state is very diverse, not only from the environment point of view, not only from the demographical point of view, but also on the economy front. You know, there is agriculture, there is a substantial part logistics and manufacturing plays. So tell us, broadly how, you plan, how do you think that the state can, grow 4 times their GDP in next 4 or 5 years? Thanks a lot, Anilesh ji, for having me here, and it's a pleasure. Welcome to the city of Bhopal. I think 3-4 points I would like to make right at the outset. First and foremost, I think that we should be completely concerned about is the whole process of economic growth and development, how they happen, how this interplay actually moves. And globally, several economists have pointed out, particularly Danny Rodriguez and others, a school of thought which is very different from the Chicago school, which is very much about monetization or financialization of the economy. So from that point of view, how you leverage development, how you bring in development. And the emphasis is on institutions. And this, I think, now is a very well-recognized reality that you have to have good institutions. And those good institutions should be building up the gaps, the larger target, and the potential and its realization. So from that point of view, as we are seeing, Madhya Pradesh required a huge ecosystem. And that, I think, 50% of the task is done if you have good institutions which are in place. And for that matter, I think, I suppose many other states also require, but Madhya Pradesh definitely, since I am looking after the process of planning and its connect with the quality of work that's being done.
So what we have done right at the outset and as part of the $550 billion roadmap, the first thing is to look at the institutions, and within institutions, the first thing is to have right statistics, right numbers. And unfortunately, Anilesh ji, in last 40 years of our sort of national growth process, and also if you delineate the state level interventions, we haven't developed the statistical system that is required. So as a result, what happens is state statistical system doesn't have the ability to develop coefficients. And as a result, we depend on the coefficients that have to come in. Till 1974, India used to collect 70% of statistics from the field, and only remaining used to be the center's contribution in terms of extrapolations. But after that, the situation has reversed. Only 30% is the collection from the ground. Rest is coming in terms of extrapolation. So I give you one small example. There is this annual survey of industries. In Madhya Pradesh, we have something like 4,677 factories on the ground. And the annual survey of industries, ASI, covers only 60 units. And those units are defined. So when I took over this position last May, I found out how many units were closed after COVID. What happened during the COVID crisis, the first wave, the second wave. And there was no answer because there are no numbers. No one is collecting them. And we are depending on the central statistical agencies to have the number. So I persuaded, and fortunately, Chief Minister is extremely open, extremely accepting new ideas. And 27th of June, the cabinet passed setting up of Agriculture Statistical Commission. Then we started from the basics. Just last week I was here, and we did for the first time, can you believe, for the first time, 240 district level statistical officers training program. You recall the meeting we had with N.K. Singh just a couple of months back, and we were discussing about the 15th Finance Commission report, which has given a huge outlay to district administration, the third tier in our democracy. But if they don't have institutions, how are you going to go forward? If you don't have numbers, how are you going to go forward? You have no idea how much they are doing, what kind of impact. So you require right numbers, right institutions to come in. The second point comes in terms of what role academic institutions are playing. If you look at the growth of Bangalore, you look at the growth of Hyderabad, you see a huge connect with the research institutions, be that in the realm of information technology or I would say even biological sciences. The statistics that is coming out now is 60 to 70% of startups in Hyderabad are based on local science institutions. Where are those institutions in Madhya Pradesh? So we identified Bhopal has some 4 leading institutions, including law and legal setups here. And Indore has the industrial power, the industrial units. How do you connect them? So with agencies like World Bank and Asian Development Bank, we are discussing if there is a possibility of sort of Bhopal, Indore industrial corridor. Can we have a city in between that's providing the larger leeway? So Anilesh ji, the short point is, how do you create institutions and how do you leverage institutions for collective economic development? So we are trying to see these linkages. Even one small example I give you, the quality of PhD research here. And for the first time we did from the, there is a school of governance here which Madhya Pradesh is trying to connect with the planning process. So that's School of Good Governance established in 2007. Actually came into a full-fledged existence in 2014 with their own campus, etc. It's called Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis, AIGGPA. So this ACPA, they did a couple of surveys and found out what kind of gaps are there in education system. How do you improve the quality? So we did a PhD colloquium there. And can you believe the first year PhD students, we got application from 380 students from all over Madhya Pradesh universities. So then with governor, we discussed that as you go to convocations, and the governor, I do not know whether you had chance to meet him, but you should meet him.
two things he's pressing for. One, quality of education in universities. And second is sickle cell and anemia. It's another major challenge for Madhya Pradesh. So we are saying that if you are going to convocations, you are reviving convocations, please encourage universities to have open PhD examination. In any foreign university you go anywhere, even now in Delhi University for decades at Delhi School of Economics, we are having these examinations. So PhD exams are open viva. They are not closed door examination as is the case here. Because then you compromise quality. So you need good quality. So one is this institution, academic quality, good research, etc. The second part of our roadmap is the knowledge sector. Our calculation, Anilesh ji, is that if Madhya Pradesh gets into semiconductor industry, if Madhya Pradesh gets into bioeconomy, the scope for potential for our economic growth is 1:4%. So if we are investing, say, $280 million, our expectation would be in 3 years, there would be at least $5 to $6 billion their contribution. And how they are going to do that, in what ways spillover effects would come out? It's the strong connect with the academic institutions. I visited this Devi Ahilya Vishwavidyalaya in Indore. We met the life sciences, and you would be surprised. This scientist at the university has done a research. Soybean, Madhya Pradesh is the capital of the country for soybean. And the value addition is very little. It's the raw that we are exporting. So he extracted vitamin E and steroid from soybean. And now India is the first in terms of the quantum of steroid export. This firm that from Indore is exporting is India's largest firm to export steroids and world's 5th largest exporter of steroid. And what they are doing, they are extracting steroid from soybean. For that, for 2 stages of research, they don't have competence and they rely on 2 universities in the US. So our point is, how do we amend Madhya Pradesh University Act to bring in scope for professors to have their own companies? And they then should get financial incentives to do better research and connect with the market and do the innovation. So my short point in terms of $550 billion roadmap, good institutions, financial expansion. Third is innovation system, institutional linkages with the institutional system. The fourth and the last is in terms of the role institutional finance can play. And for that, leveraging my position on the board of the Reserve Bank as board of the governors, we got Reserve Bank look into this whole question of how states like Madhya Pradesh expand credit. You would be surprised to know, till 2014, 6 states of the country had 80% in the total credit creation in the country. Thanks to Prime Minister Modi's intervention, in 2021, share of those 6 states has come down from 80% to 71%. But total deposits, these states had 87%, which has only come down to 74%. So you require more and more states to come in. And how states like Madhya Pradesh have better share. At this institute, AIGGPA, we did a study to show how tribal population has gone through this trap of money lenders. And this is not a new situation in Madhya Pradesh. I digged out the history and to my utter shock found that in 1956, Madhya Pradesh versus some private entity, the case came to Supreme Court, where Supreme Court said that tribals are to be freed from money lenders. The response of the state government came not in 1956, but back in 1987, when Arjun Singh was the chief minister. It took them so many years to realize Supreme Court's direction. So there are issues which are traditional legacy issues. But I think institutional finance to expand manufacturing is extremely important for Madhya Pradesh. And for that matter, our point is that, as you heard Mr. Kesari explain you the agriculture growth rate, and Madhya Pradesh has done really wonders in terms of expansion of the share of agriculture. But now that has to be translated to manufacturing.
Otherwise, agriculture would become, the success in agriculture would become cause of failure in many other areas, including FRBM. So we have already, in our report, those of you who are interested should read this. The full report is available on the State Planning Commission's, Niti Evam Planning Commission's website. We have analyzed these all 5 sectors. The 6th and the last sector that we have analyzed is about the exports. Madhya Pradesh export stands at $7 billion at this point. And Anilesh ji, the challenge is Madhya Pradesh doesn't have any agency completely dedicated to exports or trade. So Rajya Niti Ayog prepared a roadmap. Fortunately, industry department came on board, full support from, and you would have very bright officer Sanjay Shukla, industry secretary. He spent a lot of time, and I could convince him to focus not just on export, but on trade. And this is a big debate nationally we should also have, where we see import as bad and export as good. And as a result, we are ending up in a situation where we are undermining the fact that 38% of our exports are import dependent. So you have to have, but the choice is where do you import from? And that's where state, and for that matter, state not only at state level in Madhya Pradesh, but at the national level also, you need to do hand-holding of the private sector, where to import from. Otherwise, they all are landing up in China. And we are importing from China. You have seen my report that we did for National Security Advisor, NSA, right at the time of the Doklam crisis, on how our imports have multiplied from China. So states have to also be conscientious of the fact how and from where we are importing. So Madhya Pradesh has already established Madhya Pradesh Trade Promotion Council. So these are the 6 areas of $550 billion dream. If I take your last point first about the exports, the biggest challenge for any state to accelerate growth is to look at new products, right? Semiconductor, you said one, but it's very, very water conducive, and it requires a lot of water. Madhya Pradesh doesn't have the advantage of being a water surplus state. So what sort of new products are you looking at which can accelerate, say, in next 5 years, Madhya Pradesh's growth? So is there any listing which you have done, prioritizing which you have done? What we have said, Anilesh ji, in our report is to identify low-end semiconductor industry. So on the high end, the intensity of resources, particularly the water that you mentioned, is extremely high. But here, you would have to realize the baseline. And baseline in Madhya Pradesh is pretty weak when it comes to manufacturing. So you have to start from basics. So fabrication unit within semiconductor is something that you can start with. And then you can think of how to go up in the ladder. Same applies to bioeconomy that we are envisaging. If you look at the COVID crisis and our inability to have diagnostic kits being produced here, we had to borrow it from other states to satisfy our own requirement. Madhya Pradesh has all the essentials. Madhya Pradesh has ASA, Madhya Pradesh has the All India Institute of Medical Sciences here, and a very good life science department in at least 2 or 3 universities. If we connect that, what kind of areas we can enter in? And as I told you, the vitamin E market, the steroid market, and like that, there are 7 other markets that we have identified in the bioeconomy cluster itself. The finance minister's budget, if you recall, last year, the scope was kept for financing machinery that is needed for bioethanol. Madhya Pradesh is leading. We have already passed the resolutions. So if we enter into low-end manufacturing, which is not technology intensive in that sense, probably you can start much faster. And that's where we need to improve the competitive edge. And apart from product, Madhya Pradesh being in the center, we have never thought of that as Madhya Pradesh to emerge as the logistics hub. And there you can take advantage of the expansion of the Greater Noida, the proximity of Gwalior to Agra, the advantage of Nagpur-Jabalpur industrial corridor connect, the whole logistics hub if Madhya Pradesh has to emerge.
if the domestic value chains which are coming in and Madhya Pradesh becomes part of that process, the advantages even with low manufacturing end would be extremely high. And those dividends, unfortunately, we have not seen before. But I'm sure in days to come, as we have envisaged and recommended, and now we are working with all the departments to see in what way manufacturing expansion can do. And by the way, in the report, Anilesh ji, we have delineated industrial manufacturing expansion on two levels. One, whether we can have labor-intensive industry. So textile, Madhya Pradesh is a big hub for cotton production. But textile edge, we lost out. Madhya Pradesh had at some point in Indore, we had around 8 textile mills. In Ujjain, we had around 7. The number got reduced over the years, thanks to the economic reforms, and we undermined Paul Sweezy and many other economists to see what sequence we should follow. But Sachinji, you also have to look at, food processing in a way, because, I was talking to many of the farmers and people who are into agriculture. They were saying that the focus is largely on the, by default, many of the produce which Madhya Pradesh is making, they are tradable commodities. They are not the processing variants. Like citrus, Madhya Pradesh is one of the largest citrus producer, but those produce are table variants. They are not processing variants. For changing those products to the industrial products, you not only require change in the product, but also reforms in the system which is in place. And thirdly, you will also have to change the way agriculture has been done in the state. So how are you, dealing with these type of No, some of this, Anilesh ji, if you travel across, which I did, at least 19 districts of Madhya Pradesh I have traveled across, and I realized that quite a few firms who are based in Mumbai or in Ahmedabad are using Madhya Pradesh as a production center. So a lot of our agriculture produced, like the whole set of banana being produced in Madhya Pradesh, are actually exported to Dubai and other places from Mumbai. So they do not get registered as part of production of Madhya Pradesh, because the firms are registered in Mumbai and they register quantum of export as if it is going from Maharashtra and not from Madhya Pradesh. So that's one sort of trouble we have in terms of accounting for numbers. So that is one. But second, you are absolutely right that we need value addition within agriculture. And that's why I said that the raw material export and share of Madhya Pradesh in raw material is huge. Value addition is very little. How do we bring that in? We did a huge study in terms of medicinal and aromatic plants. And not now, but in 2014-15, I had worked on India's overall export of medicinal and aromatic plant. If you see India's export of Ayush products, particularly raw material, our share in the total export of raw material has expanded from 40% to 90%. The Tuticorin is the main hub for export of almost 90% of these medicinal and aromatic plant, 50% of which comes from Chhattisgarh and Madhya Pradesh. No value addition. So we have introduced a scheme called Devaranya, and this Devaranya would be inaugurated by CM. Already the initial work, etc., has been done, in which we are saying that you have to have community forest rights, you have to have value addition there. Fortunately, Ayush Ministry of the central government has come forward. And again, a very bright principal secretary here is pushing in the idea to have the value addition in the produce that we are going to have from medicinal aromatic plants. So Madhya Pradesh then would emerge as one of the largest exporter of value-added medicinal and aromatic plant. So the whole emphasis that Prime Minister is creating globally, be that BRICS or the Jamnagar Ayush Center, the industry has to come up. And that industry, Madhya Pradesh would be able to bridge in the national gap in a huge way. Thank you, Sachinji. But when you say that 550 contribution will come from Madhya Pradesh in the $5 trillion economy, so which states do you think that they are coming down and Madhya Pradesh contribution will be going up? Because I checked up the numbers. So Indian growth will be of less than double the size. And Madhya Pradesh, you are envisaging more than 4%. So some states needs to come down. So where do you see this
thing coming down? No, I think it would be collective gain for everyone. Prime Minister's idea of 5 trillion, I think, would bypass if all states are going to embrace the idea. The idea is to have localization of development. And that, I think, is something states are taking quite seriously. Uttar Pradesh, you have seen, some time back, you all were in West Bengal, you have seen. So some gaps with some states, you know which one are going down, but I don't have to comment on that. But definitely, I think we need to see how this localization would bring in a betterment for everyone. Okay, sir. Thank you very much. We all will be vocal for local, and I really thank you that you have taken your time out. You have flown in from Delhi, especially for this thing. Thank you very much, sir. Thank you for coming, and thanks all for being with us. Amit. So we will be breaking for lunch. आप सब लंच के लिए आमंत्रित हैं। लॉन्च में लंच है और ये लंच का जो समय है ये 3 बजे तक का है। 3 बजे के बाद हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्र के साथ, बहुत ही खास सत्र के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।
तो अगला जो हमारा सत्र है बेहद खास है, महिलाओं के विषय से जुड़ा हुआ सत्र है, इमर्जिंग वुमेन पावर यानी महिला शक्तिकरण। सत्र की शुरुआत करूं, यहां काफी संख्या में महिलाएं हैं, उनको सादर अभिवादन करता हूं और सबसे अनुरोध करता हूं महिलाओं के सम्मान में एक बार हमें ताली बजाना चाहिए। और इस सत्र के जो मॉडरेटर हैं, आप सबके प्रिय लोकप्रिय मेरे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ द्विवेदी, इंडिया टुडे हिंदी और ललन टॉप के संपादक। आइए सौरभ। सौरभ जी से आग्रह कि सौरभ जो हमारे साथ अतिथि जुड़ रहे हैं उनका परिचय। शास्त्रों में लिखा है कि सबसे मुश्किल समय बचपन में नहीं होता है, जवानी में और बुढ़ापे में भी नहीं होता है। सबसे मुश्किल समय लंच आवर के बाद का समय होता है, क्योंकि आप नींद से जूझ रहे होते हैं और वो जो आधा घंटा आपने सैलेड ज्यादा खाऊं या पनीर ज्यादा खाऊं या वीगन डाइट है तो दोनों छोड़ दूं, तो उस आधे घंटे में बहुत सारे इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशंस और व्हाट्सएप के फॉरवर्ड भी आ गए होते हैं। तो वो सब अगले सत्र में विद्वानों ने कहा है कि चेक किए जाते हैं, इसलिए लंच के बाद का सेशन सबसे मुश्किल होता है। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेशन का नाम अंग्रेजी में है तो थोड़ा ठहर के पढ़ूंगा। इमर्जिंग वुमेन पावर, डू सक्सेसफुल विमेन इंटिमिडेट मैन। पंखुड़ी जी शांत हो जाइए। इस सेशन में 4 ताकतवर, कामयाब, कॉन्फिडेंट ऐसी महिलाएं हमारे बीच आने वाली हैं जिनसे हम सब बहुत कुछ सीख रहे हैं, सीख सकते हैं। वो अपने हिस्से का बयान करेंगी, उनके हिस्से के संघर्ष, उनके हिस्से की कामयाबियां। मैं मंच पर एक एक करके आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले IAS ऑफिसर तन्वी सुंदरियाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तन्वी अभी CEO हैं MP रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी की। इसके पहले टूरिज्म समेत तमाम महकमे और 2 जिले बतौर कलेक्टर संभाल चुकी हैं। 2010 बैच की तेज तर्रार, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, IAS ऑफिसर हैं। हमारी दूसरी मेहमान हैं पल्लवी राव चतुर्वेदी, जो एसेक्स ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और गेट सेट पेरेंट के नाम से एक मुहिम में भी लगी हुई हैं। शी इज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर एज वेल। कई प्री नर्सरी स्कूल्स भी चलाती हैं, यूनिवर्सिटीज से भी जुड़ी हुई हैं और इस नए एजुकेटर के अवतार में आने से पहले कई FMCG कंपनियों में भी काम कर चुकी हैं। हमारी तीसरी मेहमान बैंकर हैं और सिर्फ बैंकर कहने भर से काम नहीं चलेगा। ये जो हम सब की सबसे जरूरी चिंता होती है, खाना खाते, गाना गाते, सोते जागते वक्त, वेल्थ मैनेजमेंट, तो ये लोगों को पैसा कैसे डबल और चौगुना करें वो करना सिखाती हैं इन प्रॉपर लीगल वे। प्लीज वेलकम नंदिता मल्होत्रा। और नंदिता जी ने इस सेशन में आने से पहले मुझे एक बहुत अच्छा एनेक्डोट सुनाया था। एक मूर्ति लगनी है भोपाल में, कई बड़े नेता आ रहे हैं, तो वो मैं आपको सुनाऊंगा सत्र के बीच में। हमारी चौथी मेहमान हैं जो मूलतः मध्य प्रदेश से नहीं है, पर हम सब अपनी जिंदगी में थोड़े बहुत खाना बदोश होते ही हैं, कभी पढ़ाई के सिलसिले में तो कभी नौकरी गमे रोजगार के सिलसिले में यहां वहां भटकते हैं और नक्शे पर अपने हिस्से के मील के पत्थर खोजते रहते हैं। बहुत प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ के आई हैं। ऐसे बचपन में आप अपनी बकेट लिस्ट बनाते थे ना कि यार बड़े हो जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे। JJ स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ी हुई प्रिंसिपल डिजाइनर त्रिवेरिया डिजाइन्स रविशा मर्चेंट जी, आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले कि मैं आप लोगों से एक एक करके सवाल पूछूं, मैं स्पष्ट कर दूं कि ताकतवर औरतों से इंटिमिडेट नहीं होना होता है,
सीखना होता है, उनकी सक्सेस को एंजॉय करना होता है, ताकि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जिनका जो भी जेंडर हो, वो आगे बढ़ सकें। और आप चारों लोग यहाँ पर हैं, तो मैं भी आपकी बातचीत से सीखूंगा और उम्मीद करूंगा कि मैं इंटिमिडेट ना हूं। आप चारों लोगों का करियर ट्रैक बहुत अलग अलग रहा है। मैं पर्चा पहले ही आउट कर देता हूं, आपको बता देता हूं कि पेपर में क्या आने वाला है अगले 45 मिनट में। मैं आप दोनों से सबसे पहले 2-2 सवाल पूछूंगा, एक एक करके, और उसके बाद वील ओपन द फ्लोर फॉर Q&A इफ टाइम अलाउज। ये जो घड़ी सामने मचल रही है, पहला, आपने जो करियर चुना, उस करियर को चुनने में आपको क्या दुश्वारियां आई? क्योंकि बहुत सारी कंडीशनिंग है जो हमें दे दी जाती है बचपन से, हमारे जेंडर की वजह से। लड़के हो तो ये नहीं करो, लड़कियां हो तो वो नहीं करो। हम लोग, पल्लवी जी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सबके बारे में। तो आपने जो करियर चूज किया, जो पढ़ाई लिखाई की, वहां पे जेंडर रेशियो, तन्वी जी बीटेक करके आई हैं, बीटेक में जेंडर रेशियो के बारे में बहुत जोक्स अभी भी बनाए जाते हैं, मैकेनिकल से लेके बाकी सब ब्रांचेस को लेके। वहां पे आप लोगों के क्या तजुर्बे रहे, क्या मुश्किलें आपने फेस की? पहले राउंड में हम इस पर बात करेंगे, और दूसरे राउंड में अभी जो आप शानदार काम कर रही हैं उसमें आपके तजुर्बे क्या रहे, और उसके बाद लेसन टू द जनरेशन जो सामने बैठी है। तन्वी, विल स्टार्ट विद यू। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज आप बात करना चाह रहे हैं कि प्रेजुडिसेस और बायसेस हमने क्या फेस किए हैं अपने करियर पाथ में, और क्या चैलेंजेस हमने इनकी वजह से फेस किया और उनको कैसे ओवरकम किया है। Am I correct? Is this the question? So अगर हम देखें मतलब इंटायर करियर पाथ, तो आपने जैसे स्टार्टिंग ही कर दी बिल्कुल इंजीनियरिंग की, तो अभी भी मैं जिस संस्था में सीईओ हूँ, अभी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट रैप अप हो रहा था, तो उनकी टीम आई थी, तो दे वर लाइक, ओ द सीईओ इज अ वुमेन, एंड so I was like, but there are no general managers who are women. Civil engineering as a branch, I am an electrical engineer, so I remember there were only 7 of us in a class. Civil में एक लड़की थी, production में कोई नहीं थी, mechanical में भी शायद कोई नहीं थी, और that was the ratio. And and the entire environment in that college and most of the colleges in that time was extremely I would say gender insensitive. So उससे तो आप ठीक है, you have to do a good job, पढ़ना है, निकलना है, वहां से आप बाहर आ गए। अब आप DU में तो किसी को मतलब like it's such a big vibrant atmosphere and there are enough people to fight for rights, so that is not. जब आप बीटेक के बाद लॉ करने गई? Yes, so I completed my law also from Campus Law Center. उसके बाद जब सर्विस में आप आते हैं तो अगेन आप बहुत ही डिफरेंट इन्वायरमेंट फेस करते हैं शुरुआत से। सो जो इन्वायरमेंट रहता है वो डिपेंड करता है कि किस जगह पे कौन आपसे इंटरेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी छोटी जगह पोस्टेड हैं, आप यंग हैं, आप महिला हैं, आपसे जो बात करने आ रहा है वो इंटिमिडेटेड नहीं रहता। आप सही कह रहे हैं, ये मैंने भी बहुत सारे अपने दोस्तों से बात की, इनफैक्ट मैंने अपने माँ से बात की, वो बैंक मैनेजर रही हैं, तो उन्होंने कहा यार ये तो हमारे जमाने की बात है, लाइक इंटिमिडेट होना, बिकॉज देयर वर नॉट इनफ वुमेन इन लीडरशिप पोजीशंस, देयर वर नॉट इवन इनफ वुमेन इन द इंटायर सेक्टर। सो दैट इज अ कम्प्लीटली लाइक ये मतलब पास्ट सेंचुरी का है जिसने भी ये सेट किया है। तो so nobody is intimidated, but they have certain prejudices. People are uncomfortable in approaching you. You have अगर आप उदाहरणों से बता सकें तो ज्यादा बात पहुंचेगी। हाँ, जैसे मुझे हमेशा कहा जाता है कि तन्वी सब कुछ काम अच्छा कर रही हो, तुम बात करो लोगों से। मैं कहती हूँ यार मैं क्या बात करूं, तो सारे लोगों से बात करो। तो सारे लोगों से बात करने का मतलब होता है कि जो पॉलिटिकली रेलेवेंट है और सोशली रेलेवेंट है उस जगह के लिए। उस एक छोटी जगह में कुछ ही लोग होते हैं, और मतलब यूजुअली वो फाइनेंशियली, सोशली, पॉलिटिकली रेलेवेंट लोग सेम ही सेक्टर, सेम ही तरह के लोग होते हैं। तो आप मैं जाके आगे बढ़ बढ़ के उनको बुलाती थी, बात करती थी, फिर भी देयर वाज, आई कुड सेंस अ सर्टेन डिस्कम्फर्ट, लाइक अपने आप कोई नहीं आता था, अपने आप लोगों के एप्रीहेंशंस रहते थे कि हम जाएंगे तो क्या हमारी बात सुनी जाएगी। जो IAS ऑफिसर्स या गवर्नमेंट के प्रति रहता है, पर मोर सो विद विमेन, लाइक
you have to make people comfortable. You have to make your team comfortable with you. Everybody is usually, there's a skewed ratio. Like I said, in my organization, there's an age and a gender disparity. So you have to make people comfortable. So that is something that you have to do. And it ranges from extreme awe, like, to extreme discomfort. मतलब ये एक huge range में आपको operate करना होता है. और आपके ऊपर जो पर्सनल लाइफ के ऊपर जो स्क्रूटनी होती है इस नौकरी में, वो किसी मेल ऑफिसर के ऊपर इस लेवल की स्क्रूटनी नहीं होती है. तो हाँ, मतलब इसका आसान उदाहरण मैं दूंगी कि जैसे इस मंच पे आने के लिए मैं मतलब काफी मैंने सोचा कि अच्छा हाँ तो बोल दी मैंने ऐसे झटके में, जैसे मैं बोल देती हूँ कि हाँ आ जाएंगे. लेकिन फिर मुझे लग रहा था यार ऐसा ना हो कि मैं मतलब बिल्कुल ब्रांड हो जाऊं और अपने पर्सनल ओपिनियंस कुछ ऐसे दे दूं कि मतलब बड़ी मुश्किल से ना आदमी रास्ता पकड़ता है सर्विस में या किसी भी करियर में. सो कॉल्ड समझदारी आती है. हाँ हाँ, झगड़ा करना कम कर देता है, थोड़ा मैच्योर हो जाता है. तो ना थोड़े प्यार से बोलता है, ऐसे नहीं बोलता कि बिल्कुल. बिकम अ डिप्लोमेट. मतलब ट्राई टू, यू हैव सीन मी लाइक हाउ बैड आई एम एट इट. सो दैट इज देयर लाइक सो. तो वो आपके दिमाग में मतलब कॉन्स्टेंटली अपार्ट फ्रॉम वर्क there are so many other things that you are also thinking. क्या कोई ये तो नहीं सोचेगा कि मतलब if I'm leaving early like and I'm giving time to my child, like I had to like say it out aloud. मुझे जाके कहीं बोलना पड़ा कि मैं वीकेंड पे नहीं काम करूंगी. मैंने पहले काम किया है, मैंने सुबह रात में कोई टाइम नहीं होना, पर I had to say it कि मैं नहीं कर सकती अब. I have to take time out for my daughter. I have to meet her every day. I have to take out time for her on weekends. Like, I will do everything else. And I have actually realized कि इतना, मतलब if you're like smart enough, you can actually compress your hours and be very efficient and effective. And it doesn't require you to work these insane or pretend to be a workaholic to be considered impressive as a women officer. मतलब ये हमारे दिमाग में हमेशा ही रहता है कि बॉस इसको बीट करना है, इससे बेहतर होना है. तो और वो कैसे हो सकता है? नेटवर्किंग इतनी अच्छी है नहीं, सबको सच बता देते हैं. इंटीग्रिटी हाईएस्ट स्टैंडर्ड की है, जमीर एकदम मतलब सजग है और एम्बिशन भी है. लेकिन तो फिर हार्डवर्क ही बचता है और कुछ बचता नहीं. आपको मेहनत कर करके पढ़ के आपको आगे बढ़ना पड़ता है. सो लाइक इट्स टफ इन दैट सेंस. लाइक यू हैव टू लाइक थिंक अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स while working also. A guy only has to work. पल्लवी, आप एजुकेशन सेक्टर में हैं. एक स्टीरियोटाइप कर दिया गया है ना कि वो घर घर भी खेलते हैं तो अच्छा वो टीचर बनेंगी, वो डॉक्टर बनेंगी. एक स्टीरियोटाइप ये है. पर हमने ऐसा बहुत कम देखा है कि जिनको टीचर बनने का एस्पिरेशन दिया जा रहा है उनसे ये भी कहो कि बेटा अपनी यूनिवर्सिटी खोलो, वहां पे खूब सारी महिलाओं को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर भी भर्ती करो, लेट देम बिकम लीडर विद देयर ओन हार्ड वर्क. तो आपकी एक एजुकेटर के तौर पर जर्नी कैसी रही? और चूंकि आप पेरेंटिंग का एक प्लेटफॉर्म रन कर रही हैं, सारी वो शुरुआत घर से ही होती है कि अच्छा मम्मा तो बहुत अच्छा एम्ब्रॉयडरी करती हैं, बेटी भी सीखेगी, पापा तो बाइक चलाते हैं, बेटा भी चलाएगा. ये कुछ स्टीरियोटाइप है पर हम देखते हैं ये चीज उनके खान पान से लेके, उनकी हॉबीज से लेके, उनकी करियर चॉइसेस से लेके. हाउ डू यू डील विद दैट क्वेश्चन एज वेल? See, I also started my journey as an engineer. I was a chemical engineer, तो दो ही लड़कियां थी in class in Bangalore, and I think you start there and then you start getting used to an environment. आपको आदत हो जाती है कि you have to prove yourself double. आदत हो जाती है कि you will be invisible for most times. You have to make yourself invisible. So I think a part of gaining some power is you become outspoken. आपको जरूरत पड़ती है कि you shine a little extra. MBA में भी we had a few more girls over there, but when it comes to recruitment, when top MNCs are trying to recruit a girl candidate, there is always that little bit of
should we take her versus another boy who has 2 points less, but वो stable रहेगा, शायद शादी इतनी जल्दी नहीं होगी, maternity leave नहीं देना पड़ेगा. So all of those issues, I think all of us would have dealt with at some point of time. And I think COVID has been an amazing leveler of this. क्योंकि हम सब ने घर में बैठे, we have changed the world in 2 years, right? All of us. And not just women, but men also. I'll tell you, when I joined my career, I started off as a brand management marketing specialist. And then I joined my family organization called Aajtak Group. And the first conference I had, I'll tell you, Aajtak is one of the biggest rural skill development organizations in India. So my first meeting mein, there were 600 men in front of me, rural men. And the feeling was, there was awe, like you said, there was awe that, okay, she's telling us about some marketing plans. She's going to tell us how we need to expand our business. But वो था कि, you know, I could feel that, you know, that sense you get, you know, should we believe her? Should we believe her? Should we not? अब sir की daughter-in-law है, sir की wife है, तो respect तो देना है. But what is the credibility of what she's saying? What is the value of what she's bringing to the organization? वो अब करते over years you realize that after proving yourself and you cross 40, you're like, you know what, I've proved it and अब मैं यही करूंगी. अब people know then after a point that, you know, you have to work very hard and you always need to do that extra bit to overcome the gender bias. It's always like playing at the back of your mind, right? Yeah. So what I completely agree with her. That was also the point I was trying to make, that it's at the back of your mind. I have to be better. इनसे बेहतर होना है. मतलब एक occasion आया था जब मेरा, like, I had पंखुड़ी and I was collector and another of my friends. पंखुड़ी तन्वी जी की बिटिया का नाम है. उस सामने तो हाँ, उसके पेशेंस पे डिपेंड करेगा सेशन का टाइमिंग. तो एक और मेरे दोस्त का भी बच्चा हुआ था सेम टाइम पे. तो आई वॉज लाइक कि यार ये मतलब वाई शुड आई लाइक यू नो गो ऑन लीव और मैं तो यहीं रहूंगी और उसको वो क्यों नहीं सफर कर रहा है. लाइक इनसेन कंपैरिजन. लाइक नाउ आई फील कि व्हाट स्टुपिडिटी. मतलब लास्ट डे तक टू दैट पॉइंट एज वेल कि करियर में वो पेरेंटिंग वाला. And I tell you, as a parenting coach, I also want to say ये जो nuances है ना, that the girl faces, that extra little bit starts from home. I see this everywhere. जो festivals होते हैं या कुछ family gatherings, पहले सारे men बैठ जाते हैं. All the men sit down. And then the boys start thinking that is the way it should be, right? I'm a privileged boy. I will have the first rights. I sit down. उनको लगने लगता है कि भारत के संविधान में है कि पापाओं को गरम रोटी मिलेगी. हाँ. और फिर जब सब लोग खाना खा के जाके बैठ चुके हैं, then the women start sitting, serve themselves. ऐसा नहीं कि मैं ना serving them ना after that. In case उन्होंने चाय या कॉफी की डिमांड नहीं कर दी लंच के बाद. Exactly. So ये जो चीजें हैं, when we bring up children also, बहुत सारी चीजें ये नहीं कि हम सिखा रहे हैं. It is just signals and cues that we are laying out in our society, in the classroom, in our homes. नंदिता, it's heavy. आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, आपके तजुर्बे कैसे रहे? और नंदिता बड़े गर्व से हमें बता रही थी कि मैं एकदम पक्की एमपी वाली हूँ, भोपाल में ही पली बढ़ी, यहीं पे बैंकिंग में एक टॉप लेवल पे हूँ. बैंकिंग सेक्टर में मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में काम किया और बैंकिंग सेक्टर में भी हर तरह के लोग आते हैं, है ना. विजय माल्या टाइप के भी आते होंगे, ऐसे शक्ल पे लिखा होता होगा ये तो लौटाएगा ही नहीं लोन. एंड यू हैव टू डील विद ऑल ऑफ देम. वो लोग भी आते हैं जिनको किसी सरकारी डीबीटी स्कीम के तहत 500 रुपए मिले और उनको वही निकालने हैं. तो आपके तजुर्बे जब वो काउंटर के कैबिन में, काउंटर के उस पार कैबिन में, क्यूबिकल में आपको देखते हैं, किस तरह के आपके एक्सपीरियंस रहे? क्योंकि पीपल्स हैंडलिंग बहुत है. Thank you, Saurabh, and very, very interesting topic. I would congratulate India Today to take up this topic, honestly. And one thing had we been discussing, and I was just thinking this, that had this topic being discussed maybe 10 years back, my answer to this question of whether successful women intimidate men would have been thumping yes. Today, there has been a paradigm shift
in the mindset. And I would say that is thanks to a lot of factors. We have grown thinking men are from Mars and women are from Venus. So right from the beginning, we've been taught how to stereotype, how to be opinionated, how to kind of have this, the stereotyping that, oh, she's a woman, she's supposed to be a certain way. This is a man, he is supposed to be in a certain way. And it comes right from our upbringing where the man was always the breadwinner of the family and the woman was a nurturer. And I think that is something that we all have over the generations lived, especially in India, as a culture, as a society. When I started my career, which has been more than 15 years, I've been in this banking industry. When I started, people, especially in the tier 2, tier 3 cities like ours, were not used to seeing women coming and talking finance. They were not, even used to seeing women coming in a sales job. So when I was doing MBA, I was literally, looked at, oh, has she taken finance and marketing? Because women were inherently expected to take HR. So, that whole concept has obviously started changing. And I would say thanks to, now, like I was saying, a lot of factors which have come into play there is even corporates today are ensuring or trying to, create a quota for women where organizations say that at least this much percentage population that we hire should be women. Then there is, of course, a whole lot of, things that have happened in last so many years where there were daycare centers, there were in-laws who were more supportive of women working, there were husbands who were more supportive, plus the cost of living increased, whereas people wanted to maintain a standard of living. So, they wanted double income people in the family, and that's where I think a lot of factors contributed to it. But coming to my perspective, when I started my career, so I'll give you a small example. I was leading a team in the beginning of my career, and one guy from the team resigned. And, I was quite flabbergasted because I thought he's a good performer, he's doing well, why has he resigned? And I got to know from the other teammates that he could not take a woman give him instructions. And I asked him, and he said, yes, ma'am, I'm not used to, I don't like it when a woman talks to me like a boss. So, when you're coming from there and, because I never took my gender to work. When I went to work, I never thought I'm a man or a woman. But I needed to realize that there are other people who are getting gender to work. And, you have to start behaving from their perspective. And then I changed my leadership style, but I understood that that doesn't help because, you are ultimately only encouraging such behavior. So that was my first, I would say, experience or introduction to a man getting intimidated at work. But however, having said that, even from the other perspective, which is a client perspective, initially people, when I started my career and I went and spoke finance, they would not take me seriously. They were like, oh, she's just a woman. What would she know about it? What would she know about the bull market, the BSE, Sensex, etc., because they were not used to us talking. But today you see some of the most successful bankers, fund managers, analysts are women. So when you begin from there, there is a lot of challenge. There were, men who would first want to test you. Your clients would want to test you. Is she here for good or is she just going to get married and change her career and go into another city? So, when you play that and you've lived out that bit, of course, you may try harder to prove yourself at times because, you really want to ensure, because you are talking about mindsets which has been inbuilt over thousands of years. So, we will take some more time, but I think the encouraging part is that we are moving in the right direction. Today, I do not feel such a gender bias at work. And also, while we are hiring people, we don't look at it like a man and woman. And I think today organizations have become very, very accommodative of, what they want to do with women who get married and go to other cities, etc. So again, sabbaticals and maternity leaves, etc. are not a problem. So you will see more and more men getting used to women reaching that leadership position now. And more so because we in our families today are seeing women going out, moving out and working. So of course, today's generation, maybe the kids who are seeing their mothers going out and working will be better men tomorrow in terms of, and I do not blame the men. When I say better men, I do not blame the men because like we were talking that, it's the mothers who right from the beginning taught the boy that, oh, you're a boy.
you know. So I think the change has begun from there now. It is the mothers who are bringing in that change. Again, it's a woman who will bring the change, to lessen the intimidation, I guess. मैं थोड़ा सा नाइत्तेफाकी रखते हुए आगे बढ़ूंगा. ये बार बार कह दिया जाता है कि साहब नई पीढ़ी की परवरिश की जिम्मेदारी माँ की है, माँ पहली टीचर है, माँ संस्कार देती है. पापा लोग बैठ के क्या पबजी खेलेंगे? उनका भी उतना ही बड़ा काम है कि वो दोनों ही उनके बच्चे का जो भी जेंडर हो उसको इक्वालिटी सिखाएं अपने हरकतों से. रविशा जी, आई कम टू यू. So, thank you so much for this interesting discussion. I'm intimidated that I'm being called intimidating. So, so last whole week I just kept asking my children and husband that do you really find me intimidating or what? So ऐसा लग रहा है कि इंडिया टुडे के सेशन ने सबको इंट्रोस्पेक्शन का एक I asked so many people. So like you said about equality, I have a very different story. I come from a background where my great-grandfather, that's my grandmother's father, he was the Diwan of Jaisalmer. So the entire kingdom was under him because the prince was a very small boy. So he had to decide the law and order of Jaisalmer. This is in the early 1900s. And so being fair, being equal, being right, wrong was always a part of our family culture and always something that we have been, nurtured into. My grandmother herself was a philanthropist. She was a writer. She used to write in Mumbai. She moved to Mumbai with my grandfather, who was an architect. So we have a almost 80-year-old, 85-year-old architecture firm in Mumbai. So we have never grown up in a household where it was a girl or a boy. And my family believed that equality begins on the dining table. That is where you come to know how equal you are, brought up, or how equal you are felt in the family. So they always encouraged education. They encouraged us to, study, grow. My dream was to go to Parsons University in New York, but like you rightly said, my father said, no, you can't go abroad. You study in the best is in India, whatever is here. So I was lucky to get into JJ. And destiny brought me to Madhya Pradesh. My husband sitting here, Mihir. And marriage brought me here. And that is when I think where I got the first, touch of what is gender bias, what is a different culture. Being in Bombay, you are tunnel visioned. You think that Bombay is the whole world. There is nothing that is outside Bombay. Everything is available. There is power, there is electricity, there is water, there is everything. Life is absolutely smooth. Okay, your only struggle is time. Time management is like our left-hand thing, we know which train to take, which bus to take, where to reach at what. But coming to Madhya Pradesh was reality check. This is India. So the the best thing that my grandmother today, I think, has taught me is to adopt and to adapt. These two things, if you learn in your life, you can settle anywhere and do anything. And the third thing is have confidence in yourself. I think you get intimidated only if you are not confident. I don't think confident people, get intimidated. So Madhya Pradesh was a brilliant learning for me. I'm here since 21 years, so now I cannot be called an outsider. I'm a Bhopal girl now. My husband must be like, can't believe my ears today. So yes, I have adopted Madhya Pradesh. I have learned the culture here. I have traveled to remote places thanks to MP Tourism and worked with women at grassroots level. The site where construction is, that's where the women are. I did a workshop of 30 carpenters in a gaon like Piparia,
I was told to go by the government कि यहाँ एक workshop करनी है. There are 30 carpenters. आपको उनको train करना है for product development. I said sure. And when I go there, these 30 carpenters are all women. So I was overwhelmed. Wow. I mean, this is what? And what are the men doing? Playing tash. So I think, it's all in the mind. It's how the choices we make in our lives, where the choices are always in front of us. We have to have the confidence to choose whether we are taking this path or going this way. And I think it's a matter of, again, following those paths. So Madhya Pradesh has been a wonderful journey so far, and I'm extremely happy to be doing whatever I'm doing and giving my contribution to this beautiful state and the city. बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं सामने बैठी हैं जिनके सबके अपने अपने बहुत इंडिविजुअल और बड़े यूनिक संघर्ष रहे होंगे, और बहुत सारे लोग जब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाएगी बातचीत तब देखेंगे. मैं आप चारों से ये जानना चाहता हूं, एक एक स्टीरियोटाइप जिसको आपने तोड़ा है और जिसको फेस भी किया है. लाइक यू सेड कि आपको जब हायर किया जाता है तब इस तरह के सवाल. नंता बता रही थी कि अच्छा ये टिकेगी, जाएगी, शादी के बाद शहर बदलेगी, फिर मैटरनिटी लीव लेगी. इन योर केस कि आप वहां नहीं जा सकते, वहां पढ़ने जा सकते हैं. महिलाओं के केस में आप किसी भी राज्य की मंत्री परिषद उठा के देखिए और पोस्टिंग्स देखिए तो सबसे पहला जो पोर्टफोलियो एलोकेट होता है महिला और बाल विकास, और वो एक महिला को दे दिया जाता है. ऐसे इस तरह की ब्रांडिंग हो रखी है कि ये महिलाओं के लिए थोड़ी ठीक पोस्टिंग है. इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स क्रिएट किए गए हैं जो आई एम श्योर आप सबने अपनी अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में तोड़े हैं. एक एक स्टीरियोटाइप अगर आप बता सकें ताकि जो यंग गर्ल्स सामने बैठी हैं जो अभी अपने करियर का चुनाव करेंगी और अपने हिस्से की लड़ाइयां भी लड़ेंगी, उनको थोड़ा सा और हिम्मत मिल जाए. Actually, I wanted to say something on the gender stereotype. जब हम सोचते हैं कि successful women, मतलब when you say this word also, तो we have talked about घर में क्या atmosphere है, या as an individual, like what you need to do. But we have not talked about a structural issue of how we define success and how we define a successful woman. For example, जिन्होंने मुझे पैनल में इनवाइट किया, मैंने कहा मैं क्यों, मतलब किसी और को बोल लेते. मतलब मैं तो ना बहुत सीनियर हूँ, ना मैं कहीं प्रेजेंट, मतलब पता नहीं कब फुट इन द माउथ टाइप हो जाए. तो so he said no, you have done postings which are मतलब ये वाली महिला वाली नहीं की तुमने अलग अलग टाइप की हैं, और करेंटली आप इंफ्रा में हो. एंड आई वाज लाइक यार ये कितना बड़ा प्रेजुडिस और बायस है. मतलब और इट ऑल्सो इसको और पीछे जाएं तो जैसे मैं अपनी दादी को आज लेके आई हूँ क्योंकि मेरी दादी इज अ सक्सेसफुल विमेन. शी इज अ सक्सेसफुल stay at home mom. She is a successful homemaker and she still is. Without her, मैं काम नहीं कर सकती थी, मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं बनते, हमारे परिवार में 3 लोग डॉक्टर हैं और सबके बच्चे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन देयर चोजन फील्ड्स. सो वी नेवर कंसिडर दिस रोल एज अ सक्सेसफुल विमेन रोल. वो पहला प्रेजुडिस. फिर सेकंड प्रेजुडिस पे आओ कि आईएएस में आप ये 4 पोस्टिंग्स करोगे तो आप सक्सेसफुल हो. क्यों भाई, इतने सारे पोस्टिंग्स हैं हमारे पास, हम क्यों सक्सेसफुल नहीं हैं? हम तो मतलब पैदाइशी लीडर है तो हम मतलब आई होप दैट डजंट बिकम द थिंग. बट आप बेधड़क बोलिए तन्वी जी, यू आर मेकिंग सेंस. यू डोंट हैव टू वरी. मुझे पता है कि ब्यूरोक्रेट के तौर पे आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि आप स्टेज पे बैठ के ना बोलें, पर वॉट एवर यू आर सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक्स. पल्लवी. I think for me, my life started, my career really took off in a way after I became a mom. And I think that's another stereotype which I broke for myself and for many, friends and, people around me because, from 2012, when my daughter was born,
tab I started my preschool chain. Then when my son was born, I, finished my PhD. Then I went on and created my social media networks, my production units for my, for my learning aids. So I just feel that the stereotype that life ends when you're a mom is something that is not true, because it gives you a different kind of strength to manage your time and the conviction that, you know what, it can only get better from here. And I think that bahut sare ladies I see that, when they get pregnant, there's that maternity leave which they feel we can never get out of. But getting out of it is very important, and getting out of it quickly, if that is something you want, is not too hard to do. And I think that stereotype is a mental barrier more than anything else. Nanta? Yeah, so talking about stereotype, I think as women, not only at work, but stereotype is also when, you start driving and you see a woman driver on the road, and then इसकी कार के अंदर देखो एक वुमन ही ड्राइव कर रही होगी, the moment you take a wrong turn, and any car taking a wrong turn means a woman is driving. So, and to the extent, even till date, my own colleagues feel insecure when I'm driving and they are sitting at the next seat. And they sometimes even tell me, Madam, hum drive karna. I said, are you scared? Please get off my car. Literally I've done that to people. And the other is also, so stereotyping also that, people were not until recently used to seeing a woman walking up to a bar and taking a drink for herself. It was always a man making a drink and, handing over to the woman. So we have been living with a lot of stereotypes. And one of the biggest stereotypes, and I was never used to it because I do not have a brother. And I lost my dad very early in life. So, in family setup, it was 3 women in family, which was we 2 sisters and my mother. So we literally did roles that probably a man does in a household, in a family, even from changing to a bulb to driving even at 2 in the midnight for an emergency. So, when I went to work, I did not, go as a woman. I was very sure I'm going to make a career here. So, irrespective of my gender. But when I go there, obviously, one stereotype which I broke was that people, when you're a woman and you're at work, they still expect you to be polite, to be soft, to behave in a certain way. But they are not used to you being harsh, firm, or demanding from them. Whereas if a man or a boss in office is screaming and shouting, it is okay. But if a woman does, अरे इसका frustration क्या है? घर पे लड़ाई करके आई होगी, तो is taking out frustration here, and or. Yeah, for, because it's a mature audience, I can even say she's PMSing is the word that is used for women. So, whereas I feel men PMS 364 days a year probably, So, the point is that these are the stereotypes which you break, and when you realize, you observe, you obviously do your bit to make people around you understand, and through your behavior convince them that you are not what they think you are. So. Actually, what Nandita said is like, वो जो fine balance होता है ना हमेशा कि assertive but not aggressive. हाँ, लोग कहेंगे ये extra aggressive इसलिए हो रही है क्योंकि इनको अपनी power establish करनी है. या तो power establish करनी है, ये insecure हैं, या eccentric हैं, या मतलब she's a bad, well I can't even use those words, whatever, she's a bad person. Like, or it is, 2000 years का बदला वो हम पे ही निकाल रही है. She's taking it out on us at this moment. So that's a और fine, वो जो आप fine कहते रुक गई कि इनको घर में अपने हिस्से की खुशियां नहीं मिल रही हैं, quoted and quoted, तो ये यहाँ पे. हाँ, and that's shop talks. Like always there will be shop talk. मतलब आप अच्छा कर रहे हो तो भी होगा, खराब कर रहे हो तो भी होगा, अच्छे से बात करो तो भी होगा, नहीं करो तो भी होगा. So you keep wondering what is my, leadership style, and keep shifting. You are basically judged all the time. So, that's what happens, that when you are behaving unlike what other person is expecting you to, just because of your gender, you are judged big time, whereas a man can get away with it thinking, oh, he's a man, so he will behave like that, So there is a certain behavior which is expected. झूठ बोलते हैं जब उनसे पूछा जाता है बड़े होके क्या करोगे, क्योंकि वो मन में कह रहे हैं बड़े होके जज बनूंगा, सबको जज करूंगा, लड़कियों को ज्यादा जज करूंगा. English में there's a saying that you deal with an iron hand and a velvet glove. तो वो iron hand कब निकलता है और वो velvet glove कब निकलता है is a No, but when you're talking about judge, you see today in the Supreme Court also, where are the women? Where is the
where is the ratio of men versus women? When we don't have women representing in our country up there, what are we talking about, you know? We don't see the women everywhere. The working ratio has gone down in India. So we are looking at very larger issues. We are looking at patriarchy. We are looking at other stereotypes. I think the root cause is patriarchy. We all are, even successful women are fighting that, patriarchy. Unless that goes, and I don't think it's only in India. It's all over the globe. So unless we go to the roots, I don't think this talk is going to go on forever. The bias I have faced, I mean, coming to Madhya Pradesh from Bombay, I don't think I can take all, I mean, what will she know? But when you come up with the technical drawings and show them, okay, this is how it's done, okay, now she knows something, you know, we must follow. So these are the general biases. A client walked into my office, I was sitting, and he says, okay, I want to do my residence. It's a huge property, this. I'm like, okay, done. The moment I get up to greet him, I'm 7 months pregnant with twins. So he sees me and he's like, madam, I'll come back to you after a week. So I'm said, see, there he's gone. Seeing me pregnant, I lose a client. But then he's back after a week. And he says that, no, I'll wait for you. 2 months, you come back and I'll do my house. And I go back with twins to his site and we start work. So it's about commitment and it's about, you know, breaking stereotypes with your attitude. I think it's all in the mind. Okay. और when you are talking about patriarchy और जैसे ही आप इसके खिलाफ लड़ती हैं जो कि जरूरी लड़ाई और जो सिर्फ औरतों को नहीं लड़नी है तो तुरंत फिर वो एक टैग किया जाता है ओह शी इज अ फेमिनिस्ट There we are. Right. But it is true, isn't it? Patriarchy is such a thing. I mean, today if I have to, what I am expected, maybe my partner may not be expected to do. I think a large part of the reason we're all here is because we've had feminist men in our lives, whether it's our fathers, husbands, sons, friends. They have been feminists and hence we've been able to break a little bit of that patriarchy. We have 6 minutes. अगर ऑडियंस में किसी को माइक है राहुल जी प्रकट किया जाए भाई साहब Yes, ma'am. Another powerful woman. Another powerful in the woman I house. was about to say is raised her hand. Not at all. Hello and good evening, everybody. This has been a fascinating session. I just want to say 2 things very brief because the session has been so good. We've seen 4 brilliant speakers and I was very curious to hear Tanvi also. So I've heard you speak today, Tanvi. The point that I was making is, back in when we were waging our freedom movement, our independence struggle, Mahatma Gandhi ji the. All the women were there in the freedom struggle. क्या ऐसा था कि women नहीं थे? Were we debating questions like these? Exactly. We had a Sucheta Kriplani, Ravisha. You said how many women are there? We had a Sucheta Kriplani. We had Vijay Lakshmi Pandit. We have so many others. And why are we sitting and debating this? And very often I've said that to everybody, that this is a useless, needless question because the word woman, W-O-M-A-N, includes a man. That's it. Thank you, ma'am. और किसी का कोई सवाल या जी कौशिक Don't think it's okay. I'm Kaushik Deka. I work for India Today magazine. I have 2 questions. Actually, I need reactions on 2 developments recently. I was reading in the newspaper about a judge from Kerala High Court. He said a very interesting thing on observations while dealing with a rape case. First, he said that a person from the upper caste would not probably touch a woman who is from the lower caste. And then he said that a person should not be persecuted because if a woman is dressing in a way which is provocative, so a man commits a crime like rape or molestation, he should not be held guilty.
something to the effect. A judge in a high court said that. And second, we just heard about the convicts of Bilkis Bano rape case. They were all released, and I read a comment by a political leader that they have been released because they are sanskari people, because they belong to a particular caste. How do you feel? You all are powerful women, and you also have voice in the society, unlike many other women. How do you feel, each of you? How do you react to these two developments? ये जो मॉडेस्टी का मटका आपके सर पे टिका दिया गया है बिना मांगे, कि सारा वो देवी वाला, हाँ जी. I feel angry, of course. Feel very angry because I mean, what comments are these, you know, and what kind of I mean, what is it to say upper caste, and where are we living now? That's what we are, you know, all talking about. We're trying to break biases. We are trying to break you know, the hierarchy. We are trying to break all. Why are we even thinking like this? It's shameful that today we are, you know, talking about upper caste and lower caste. In today, and you know, one way we are talking about India development, and then, you know, but this is a harsh reality. I feel some crimes, irrespective of caste, religion, stature in society, or whatever, are crimes which should have no if, but, grey, black, white. It is as simple. Something like a rape, high time in our country should have the stringent of punishment where a man does not shudders at the thought of it completely. So as long as we don't have strict laws, I think things like these will keep happening, and comments like these will keep happening. But I think the root cause has to be you know, eliminated. And like I said, certain crimes should not have any leeway, any space, any given no space at all. So I would like to really see at a larger picture and maybe kill the root cause. And I, you know, apart from feeling extreme anger, you feel helpless, because what this sparks off is a very cyclical behavior in society, right? Parents get worried, you know, where do we send our children? How do we, you know, even career choices for children get determined by, you know, how safe is my daughter when she goes out into, you know, on the street. Yeah. So then you start curbing, imposing restrictions, and then there's no end to it, right? So it has to start with a stronger arm of the law, a more fair, more just, and more representation of women looking at, you know, these cases. Tanvi, any comment on Mananiya Judge Sahab? तो अब ये तो बड़ा इन्होंने क्या किया ना, स्मार्टली कहा कि हर को ना, मतलब इट्स नॉट इवन टारगेटेड एट वन पर्सन, एवरीबडी हैज टू लाइक आंसर दिस क्वेश्चन. सो एक्चुअली हमारा ना एक सब्जेक्ट था लॉ में, जेंडर स्टडीज, एंड इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो पुरानी इस तरह की बहुत सारी जजमेंट्स में को कोट किया था, और बहुत ही एक फेमस फेमिनिस्ट लॉयर है जिन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल ऐसी ही जजमेंट्स को मिला के लिखा था. और पता नहीं आपको याद हो कि नहीं कि भवरी देवी केस में भी से, मतलब इट इज लाइक व्हाट शी सेड, साइक्लिकल, इट्स लाइक हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ. मतलब इतना साल पुराना, उसके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हो चुका है, इतने उसके ऊपर आर्टिकल्स आ चुके हैं, इतना, फिर अगेन वी आर एट द सेम पॉइंट, लाइक, and this mentality never goes away. Like when you said how's your experience वगैरह, so we always have to think about, like when I was in BIT mess, I used to think about I actually dress down. I don't think I have ever put on kajal. I have even, like, you know, how you wear, how you go, how you so you would dress down. And that would be conscious on your part. It is only after, you know, coming into this job, getting confidence in my own competence, that I'm like, matlab, I will dress the way I want. I will, ये मेरा ओपिनियन है, ये तो मैं दूंगी. चाहे मीटिंग में मैं ही अकेले सबसे जूनियर हूँ और मैं ही नो कह रही हूँ और सब लोग इधर उधर देख रहे हैं या हाँ कह रहे हैं, लेकिन
but it is tough, man. How do you like? No, I agree with this dressing down. You feel confident in your mind, but you're not confident out. I used to do sales in Chennai. And I remember, you know, wearing the frumpiest and baggiest, क्योंकि आपको दुकान जाके you had to take orders, and you just feel unsafe. Irrespective of how much you've studied, irrespective of how open-minded your parents are, and our kids are still facing it, and there needs to be an end to this cycle. And I don't remember it, but जब हम लोग इस तरह के articles पढ़ते हैं, तो मुझे याद है कि हम लोग there's a museum somewhere in the world which actually has clothes of women who have been molested, harassed, raped, and it varies. It's not like somebody will wear a particular thing and you will invite it. So the entire concept of that museum is to tell people that she's the victim. She's not the perpetrator of the crime. You cannot victimize the victim further by saying कि भाई मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता. मतलब इतना कठिन होता है इस पूरे स्ट्रक्चर में ये कहना कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ. फिर वो पूरा सीक्वेंस फेस करना कि भाई पहले आप थाने जाओ, थाने में स्ट्रगल करो, एक्सप्लेन करो, फिर आपको बार बार कोर्ट बुलाया जाएगा, आपसे पर्सनल क्वेश्चंस किए जाएंगे, वो पूरा और सालों तक ये चलता रहेगा, और फिर एंड में आपको यदि ये कहा जाएगा तो अब मतलब डिसअपॉइंटिंग मैन. इसीलिए हमें 2022 में भी इस टॉपिक पर बात करने की जरूरत पड़ रही है, और तब तक बात की जानी चाहिए जब तक ये मुद्दे एग्जिस्ट करना बंद ना हो जाए. मेरे ख्याल से उसके बाद भी जैसे रिफ्रेशर कोर्स होता है ना, आपको बार बार बताना होगा कि जेंडर का असाइन टास्क से कोई लेना देना नहीं है. आप लड़के हैं और रोटी बना रहे हैं, और लड़की हैं टायर बदल रही हैं. ये बिल्कुल नेचुरल कोर्स हो जिसमें वो वाव, अरे वाव लड़की स्टपनी चेंज कर रही है, जब वो वाव खत्म हो जाएगा वो नॉर्मल चीज हो जाएगी. जब लड़कियों की जीन्स में इतने लंबे पॉकेट आने लगेंगे कि वो अपना मोबाइल फोन रख सकें, और लंबी पॉकेट वाले मोबाइल फोन के लिए उन्हें बॉयफ्रेंड जीन्स नहीं खरीदनी पड़ेगी, तब मुझे लगेगा कि इस तरह के सेशंस की जरूरत. तो आप देखिए कहां कहां स्टीरियोटाइप है, कितनी तगड़ी फाइट है. और फिर वो लॉजिक भी है कि साहब लंबी जीन्स में लंबी पॉकेट दे देंगे तो फिर वो झोले नहीं खरीदेंगी. माफ करिए, मैं बैग को झोला बोल रहा हूं. तो आप चारों लोगों ने बहुत कमाल की और जरूरी बातें कही हैं. एक मॉडरेटर के तौर पर मैंने बहुत सीखा है, और आई एम श्योर ऑडियंस ने भी बहुत सीखा होगा. थैंक यू सो मच. ऐसे ही कमाल काम करती रहिए. Saurabh, just one thing. When you got us on the stage, you got everyone to clap for the women. We would like to clap for the men in the room. जी बिल्कुल. और ये दरअसल हमारे जो एंकर साहब थे वो महिलाओं के लिए अलग से तालियां बजा रहे थे. मैं तब भी, मी एंड तन्वी वर लुकिंग एट ईच अदर एंड वी वर लाइक, थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you.
एक बार फिर रिक्वेस्ट, अपनी जगह पर आप बैठ जाएं क्योंकि अगला सेशन शुरू होने वाला है बहुत जल्द। प्लीज रिक्वेस्ट आपसे। एक बार फिर आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी जगह पर आप बैठे हैं। सत्र की एक बार फिर आप सबसे मेरा आग्रह है, जगह पर आप बैठ जाएं। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार फिर आप सबसे, प्लीज जगह पर आप बैठें क्योंकि अगला सेशन शुरू होने वाला है बस। और अगला सत्र जो हमारा है वो है मध्य प्रदेश में उद्योग और निर्माण से जुड़ी हुई संभावनाओं पर। तो मध्य प्रदेश में कैसे उद्योगों का रास्ता बन रहा है, निर्माण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में क्या संभावना है, क्योंकि अगर ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मध्य प्रदेश तेजी से गति पकड़ेगा तो मध्य प्रदेश की तस्वीर भी बदलेगी। और इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मेरे सहयोगी अल्लेश महाजन को। Hello. Good evening, ladies and gentlemen. Please settle down. We are starting with the next session in focus Make in Madhya Pradesh. We will be largely focusing on manufacturing and the industry. So with your permission, may I request Sanjay Shukla ji, IAS. He is Principal Secretary, Department of Industry, Policy and Investment Promotion. And he is anchoring the policy framework in Madhya Pradesh. I welcome you, sir. Now may I request Ratan Somani ji, Advisor, Hindalco, Aditya Birla Group. Welcome. Now may I request Mihir Merchant ji, Joint CEO, Pirmali Wallace Private Limited. And he is also Chairman of CII's Bhopal Zone. Now may I request Manish Gulati ji, he is ED HEG Limited. And Anurag Srivastava ji, MD Netlink. Gentlemen, I welcome you all for India Today's State of the State, Madhya Pradesh first this session. As we all understand, there's a huge focus on manufacturing and promoting industry in Madhya Pradesh, and rightly so. After GST, there is a refocus on Madhya Pradesh, and now Madhya Pradesh has put a target for itself that they want to be a $550 billion economy in next 4 to 5 years. So the focus has to be in manufacturing, and manufacturing not only would provide you more revenues, but it will also create more jobs. May I start with you, Mr. Shukla, that how do you see manufacturing taking shape in next 5 years in Madhya Pradesh? Thank you, Anilesh ji. So, first of all, the state has set up a ambitious yet very realistic target for itself, which is $550 billion in next 3 to 4 years. And looking at the kind of growth that we have achieved in last few years, this is within our reach.
Also, if you look at the background, the state has invested more than $15 billion in basic infrastructure, which means water, electricity, roads, etc. And all these, along with the locational advantage of MP being at the center, all the large, basically, movement of materials, goods is happening through the state. If you are located in MP as a manufacturer or a distributor, you can reach any part of country within 10 to 12 hours from the state by road. And as the road condition improves, we have better roads. The north-south corridor passes through MP. East-west corridor passes through MP. The new Delhi-Mumbai expressway is passing through Madhya Pradesh. And MP has been blessed with good amount of land. We have natural resources like water and agriculture and other primary resources. So all these put together, we are in a position to achieve this target. We have identified almost 1 lakh acres of land which is suitable for industrial areas. We are constructing state-of-the-art industrial parks. And in last 1 year, we have been able to get a medical devices park from Government of India. We have added good number of pharma units and more pharma companies are coming. Recently, we have got some electric vehicles company coming to Madhya Pradesh. In COVID also, we have exported a good amount of pharmaceuticals from the state, and the pharma capacity is adding up. Food processing is a major sector. Textile and garment are 2 more sectors where we are adding many units, and we have been able to, attract investment from as far as Coimbatore, Tirupur, and Chennai and Bangalore. So companies based in South, if they want to serve whole of India, they want to come north, and MP is the ideal choice. And companies who are in other northern parts of country, they want to come closer to South, they also prefer MP. So all these put together, to summarize, we are ideally placed to achieve this target by focusing more on both services and manufacturing sector. Thank you. Sanjay ji, the problem or challenge, I should say, Madhya Pradesh faces is the infrastructure right now. Although in last 20 years, we all have seen Madhya Pradesh infrastructure improving. But, still we require quite a lot of, road network, railway network, as well as, air connectivity with the global centers. How Madhya Pradesh is, taking this challenge up? Because for $550 billion, this infrastructure right now is not sufficient. See, we have every day more than 500 trains pass through Madhya Pradesh. There are large junctions and terminals of railways which are coming up in various parts of the state. We are 24,000 megawatt power state, and we are adding more, especially renewable power. So, as I said, the quality of road is improving every day. NHAI and State MP Road Development Corporation, they are constructing more roads, and the new generation roads are, as we all know, much better. So overall, the carrying capacity of road is going up. Carrying capacity of railway is also adding up. So the infrastructure and the kind of investment which is coming into basic infrastructure will add up to create more multimodal logistic parks, more terminals, including domestic and international air cargo. We have recently planned, and it has been in principle approved by Airport Authority of India also, to set up a new large greenfield international airport close to Indore, which will be among the largest in the country, and it will be one of the large size airport for the whole world also. Thank you very much. May I now bring in Manish into the conversation. Manish, we all have seen that, Madhya Pradesh has seen fulcrum of growth in conventional ways because of the presence of BHEL, especially in the Bhopal region. And in last 5-10 years, people have diversified into various newer products. But if 550 billion target has to be achieved, new products needs to come in. Do you think that the industrialists, the businessmen, they are opening enough to use Madhya Pradesh as a hub to innovate more and bring more products to the surface? Yeah, good evening. You asked the right man the right question. That's all I can say.
So we have been a delighted customer of Madhya Pradesh. See this factory, HEG Limited, this came up in 1976. And that was the time when only BHEL and HEG were the two large factories here. So when we were thinking of expanding this, I mean, first of all, let me tell the audience and you that this is the largest plant in the world. I mean, the Bhopal, we have taken Bhopal to the world because for this product which we make, which is called graphite electrodes, it is the largest plant of its kind in the world. And when we were expanding it further, we had several choices. Telangana, Andhra Pradesh, here, there, and we went around, and you know, when we summed up everything, we eventually zeroed in on Madhya Pradesh. So I think Madhya Pradesh has, a lot of advantages. Yes, of course, it is at the heart of India. The availability of the labor force is there, skilled labor force is there. And it's a wonderful, and the kind of response we have been getting from the bureaucracy is just hats off. Amazing. The dynamism, the push they have, the industry friendly they are. So definitely, your question was if any business house would think of investing. Yes, here is the example. We did put in another 1,200 crores in this factory and making it further larger. And the product which we make, you will see that how soon Bhopal will become even more popular because the decarbonization efforts which are going on in the world. So people are switching from making steel from blast furnaces to electric arc furnaces. So electrodes are becoming more and more in focus that we are helping to reduce carbon emissions in the world. So we are very delighted to be here. Maybe Anurag, if you can come in, if I could request you to, again put a hat of, CIA chief here in Madhya Pradesh. What sort of challenge do you see, when an investor comes into Madhya Pradesh and he's looking for a newer products, right? We heard Sachin Chaturvedi talking about low-end semiconductors. They are thinking of setting up some fabrication units here. But, you are mentoring many startups. You are mentoring various, new entrepreneurs. Tell us, their experience. How do they see, these type of policy initiatives? I think Department of Industries has done fantastic job of giving lots of benefits to startups, creating an incubation center here, allowing many other companies to create incubation center. I think ultimately what I have seen, the most important thing is you have to find your customer here and go and embrace the customer or let the customer embrace you. And if they can nurture you, if they can adopt you and nurture you, that is the best way for any startup to promote themselves. So if this is the attitude that companies start taking on, they will get a lot of support from majority of industries, which could be their customer. And first customer is the biggest customer in your life. If you are starting a company, you have to adapt to the culture of the customer, help them add the value in their industry, and that will help you. Government has created many changes in the policy which I was reading and I've seen also where they will get a lot of benefits. But I also request government for startups, if they can start giving small businesses to those startups. It could be district level, it could be from one department to another department. That will also help them significantly. And third thing I'm saying is in the industrial area, I have heard about Pithampur. I have not gone there for many years now. But for example, in Bhopal itself, if I have a problem, one of my largest customers is coming from US, I make a call to Sanjay ji, and within few minutes he calls somebody, and then there'll be a cleanup there and everything. But why should I do that? Okay, I think if industry department has control over the local police there, the municipality there, or whoever is providing all these support, I think then it will be much easier for us to just make a single call or somebody sitting there as a person who's handling all this. So we don't have to go out to 5 different departments and figure out how to, get some support from them. So I think these are the things I think about. This is actually very idealistic to think that police will report to principal secretary your industries. But anyhow, we all wish for a better future. Maybe, some solution can be civic services. Yeah, okay. In our investment region, there is a legal provision to provide civic services like sanitation,
water, cleanliness, street lights, and so on. So we have already started such works in some industrial areas, and we are slowly taking up more and more areas. We have to coordinate with the urban local bodies or the rural local bodies, and we are firming up more, sound legal arrangement so that for industry it's a single-click solution. Okay. In fact, back room when we were talking to Mr. Ratan Somani, he was talking about, his unit in Singrauli and how some sort of civic amenities are actually missing. So, Somani ji, if you can tell us more about that, and maybe you can get some solution here itself. Yeah. So, first of all, I'm going to add on to Manish what he said. MP definitely is a place for manufacturers. It's only now, as you are saying, $550 billion. How do we get on to there? And what all we need? Our experience of putting up a aluminium factory in Singrauli district, in district Singrauli, and not even ours. There were 4 industries, Reliance, SR, JP, all started in 2009 or 10 and completed their production in 2013 and 14. 70,000 crores of rupees or maybe 80, I don't know the exact numbers. Ours was 15,000 crore, Adit Builder Group. But put together all these major power plants and others, 80,000 crore got commissioned in 4 years. I am sure within 4 years, land acquisition, 3,000 plus 5,000 people evacuating from the lands is not an easy job. So the support of the state government, the district support was, the enablers which you call for the putting up an industry definitely is there. And 4 years you can just find out there are hardly, at least I don't remember any big companies who have put up a mega project in 4 years and got commissioned. So definitely Madhya Pradesh has that. It has got some flavor of that. The only point what you're saying is now going forward, yes, only we would believe that because manufacturing requires talent, as you know. Talent in the sense you require some skilled labor, some engineering levels and all those. And the factories would be located in the some remote area. It cannot be in Bhopal. It cannot be in Indore. It has to be slightly away from the city or the nearest location wherever. So retention of those people imagine now in Bargoa, it's a very, further down some north of Singrauli, very old and very remote area. Retaining people over there is very difficult. So what I'm saying, manufacturing on one hand can grow up because a lot of resources are already there in the Madhya Pradesh. So in my view, retaining talent means you need to develop infrastructure, maybe an ecosystem, so that they can be retained. Secondly, roads and infrastructure. Now within the district, outside the district, I am sure there's a well connection now. Like you come out of Singrauli, on one side you are connected to good roads now. But within the district where you have the factories, I think the infrastructure around still needs a lot of improvement. I am talking of Singrauli having that experience. But I think wherever these factories are to be planned, manufacturing areas, because people would be interested to come in, as I said, there are a lot of enablers, positives about MP. So the infrastructure, and Professor Sachin today morning did speak about logistics hub, creation of a logistics hub. I think absolutely right point, which I think we should be. We will be discussing logistic hub in a discussion further. Yeah. But Sanjay ji, you wanted to reply. Just 2 points briefly. One point is that there are many countries and many states whose economy is very heavily dependent on one city. Thailand, 60% economy of Bangkok. Philippines, almost 50% in Manila. And in many states in India. I am not naming all, you can guess.
compared to that, we have much better structure, almost like US, where we have regional cities like Indore or Bhopal, Gwalior, Jabalpur, Satna, Rewa, Ratlam, and so on. So the economy must be distributed like this. Large congregation of population, 10 million, 20 million or more in a very compact area leads to various kinds of health, urban quality of life, and so on and so forth. So on that score, MP is more, better positioned and more livable as a state and for workers also. The second point is about Singrauli, and we all know MP is a large state. Our western boundary, Jhabua and Rajput, they almost touch Baroda and Ahmedabad. And the eastern boundary of Singrauli almost touches Banaras and that part of this area. So that is how large we are. Singrauli is almost producing 25,000 megawatts power, about 10% of India's power in one city. And it has large migrant workers from various states of the country. So, of course, there is a challenge that the urban development and the urban planning has to keep pace with the industrialization. Not only keep pace, rather plan ahead. So on that count, we need to be more sensitive while maintaining greenery, good low level of pollution, water, and water bodies also, etc. in the city. We have to be ready with the living spaces like good residential areas, good commercial areas, and so on. But when we talk about industrialization or urbanization, you have to prepare your cities for that, right? And Indore is a hub for many of activities. Bhopal is hub. So are you also looking at expanding these cities, providing those better facilities in those cities, or people living around that, or is it whenever the bridge will come, you will jump that? See, you must have noticed that on sanitation ranking scale, many non-metro towns of Madhya Pradesh, towns like Khargone or Satna or those places, even Nagar Palika, very small Nagar Palikas, they have figured in top 20, top 30, top 40 of the country's list, which is a very good thing, which is happening. But this needs to extend to also infrastructure and housing facility and affordable housing and so on. So on sanitation, we have done reasonably well. It is not just that Indore is figuring number 1 and other cities are not there. In fact, you look at the complete list, we almost have 11, 12 towns in the top 100. That is the kind of, widespread base of this movement. But it does need to go extend beyond sanitation, go to, I said, affordable housing is very important, good quality water, drinking water, good schools, and so on. Okay. Now, may I bring in Mahir into the conversation? Mahir, apart from being a joint secretary at Piramili Wallace, he's also chairman of CIS Bhopal Zone. The example which I was giving earlier about BHEL and BHEL being the anchor for most of the industry in your area, but now people are diversifying. And if we take this example further about expanding the cities and bringing in newer ideas. What is your experience like? How are people more receptive? What sort of new things need to be done? No, so, am I audible? So, like you rightly said, you started with BHL. So, so what has typically happened in Bhopal, if I have to go back a bit historically, like most of the industries that came into Bhopal basically developed because BHL as a big pillar company was being set up. So the entire vendor base sort of developed around Bhopal, So because this vendor base was present, we actually had a number of other larger companies such as the CG Power Group, and a few other people who are very, I would say big names in the electrical equipment sector and others who invested in Bhopal because the vendor base was present. So that was in a way something that was responsible for this ecosystem coming in. Similarly, if you see how Indore, Pithampur, Devas area developed was again primarily because of the pillar companies, like, a lot of these auto companies came, so the ancillaries came. And in any industry sector, you see, I would say 80% is small and medium industries. So I would say the same goes a bit for us also, like the company I handle. We predominantly came because of BHL, but then of course BHL is now a very small part of our business. So definitely, having people like say HEGs or BHLs or, these larger companies will definitely help SMEs to develop.
But what I would see here is that, a lot of them kind of get a bit bogged down and, are, or I would say content with just working for a specific company or, would like to stay in the ancillary mode. But maybe something needs to be done to, sort of get them out, give them a slightly bigger exposure so that they look beyond a particular company that they have been working on, which would eventually, and since, something again we've discussed earlier in the panel, that MP, because of its strategic location, is, logistically we have a very strong advantage. Like no part of the country is far. A good number of companies here, I mean, again, I know for a fact about both of them here that, they're working mostly with the overseas company. We do a bit of work, quite a bit of work outside India. There are a few other manufacturers. So eventually, once that ecosystem comes in, I'm sure that's going to be very handy for, for the state as a whole. One thing I would also like to add, since we were talking about startups and other things, this was something I would like to really commend, and compliment the industry Department of IP and IP that, when the startup policy came out in MP, I think it's probably one of the only states that is actually encouraging manufacturing startups. So I think if those kind of initiatives come in, it will probably add more and more to the, the investment in the state. And let's face it, like, manufacturing is where I would say the root of any business. If manufacturing is there only, then services would grow, everything else would grow. So, it's like a whole cycle. So the more we get into manufacturing, of course, we are very strong in some core areas, but maybe, some of the newer areas, if, we can probably, there could be some way like a public government private industry partnership to getting into some of the newer sectors where, and maybe trying to pull in, I would say not getting in outside investment is one thing, but I would say even encouraging the local industries here, who've been around. Like some of us who've been, like they were there since 76. Our company's been around for 60 plus years. So, if you some of us get together, get into the newer areas and basically help the homegrown industries to also grow further. Manish, what is your view on Mahesh, this thing that, more and more collaboration of local players need to happen to take the advantage? So what is your view? When we were doing this 1,200 crore expansion, actually I was truly pleased to see that a lot of things these Govindpura people can do. So we called all those vendors, although most of our key equipment were imported from US and Europe and so many places. But we could find several good companies, small MSME companies in Govindpura who actually did a wonderful job. So we worked along with them. We explained to them, कि भी आप क्यों नहीं कर सकते? Here is the design. Why can't you make it? Try. We are with you. So I can name some of them. And maybe I don't know if somebody is sitting there from Govindpura, but at least I have found 5 or 6 good, reliable companies within Bhopal who have served HEG, and almost 200 crores worth of order were placed on them. And they have really done a good job. We're truly proud of them. Very nice. So this is how I think what Mihirji said was that you can handhold. The bigger companies can handhold. We need to have some patience. And we have to work with them. See, the larger companies will have larger R&D budgets. We have so many design people. So actually we have to handhold MSMEs and make sure that our requirements are met around us so that ecosystem develops and those companies also become capable of serving other countries. Sanjay ji, if I can take this thing further, when they talk about local collaborations, local synergies, how do industry departments sees this thing? When you envisage that a new product needs to come into market, for example, I'm again going back to this semiconductor thing. When you are envisaging the policy, how do you visualize that, or what is your game plan into this? When you see that, okay, we have this number of player inside Madhya Pradesh, and if we have to do a Atmanirbhar Madhya Pradesh or Make in Madhya Pradesh, we have to take them along. So how do you plan the things around? See, on a national level, we are replacing imports by manufacturing within India. That is one. And secondly, we are entering into some critical sectors where earlier India was not manufacturing this. Semiconductor falls in the second category because it's a critical component for a large number of electronics, digital, things which are based on
computers, automobile, and so on. So it has there are industries which are in different bracket of the same value chain, starting from silica or wafers or modules or circuits. So they're starting from the basic silicon, it diverges into different areas. Like one goes into making solar modules, one goes into making IC circuits and things like that, which we use in laptop, mobile, tablets and so on. So we are talking to various kinds of companies. Some companies have been awarded under PLI scheme by Government of India. Some companies on their own, they are working with us, and we're trying to figure out a package so that they can set up their unit in Madhya Pradesh. One of the reasons why they want MP is again is location, number one. Number two, we have large land base at a very reasonable rate. And third is that we have adequate water, again at a very reasonable rate. So all these put together, and with a large number of technical and good engineering colleges. In fact, Indore is the only city in India which has both IIT and IIM. If you may not have noticed this, but there is no other city in India which has both the institution in one city. All the cities which have IIMs do not have IITs, and all the cities which have IITs do not have any IIM. So, on skilled manpower count, we have enough supply. A large number of talented young people from the state are working in Hyderabad, Pune, Bangalore, and so on, and abroad also. So all they can, have to do is to put a scheme together and bring people from the state back to the state. So we have the raw material, we have all the resources required for setting up these such plants. We are ready with a draft policy also. It is being finalized in consultation with the industry. So the whole value system, the whole chain, of semiconductor and circuit manufacturing is being discussed and being finalized. So what Mr. Chaturvedi mentioned is related to this effort that we are doing right now. But what sort of opportunities do you see, for people who are sitting in your left? So what sort of opportunity do you see for them? See, there are two kinds of investors we are working with. One is those who are already within the state, and those who are coming from outside the state. So, for example, companies who are in Madhya Pradesh, I will give you some example. Like Trident is here in the state. They have put in, let's say, X amount in last 10 or 12 years. I'm happy to share with you that they are adding more than X in next 2-3 years. So what they have done in 10 years or 12 years, they are expanding the same thing in next 2 years. Same is true for Vardhaman. Same is true for some other group, X and Y. So this is same thing is happening in pharma sector. In last few weeks only, we have received about 7-8 confirmed investment proposal from companies who are based in Goa, who are based in Maharashtra, based in Gujarat. So there are many reasons for that, and they are setting up plants here. So whenever the local industry gets an opportunity to expand, they are doing that. They are also getting orders. This year in April last week, we had an auto show in Indore. The first time the state had an auto show. And I'm again happy to share with you that a large number of auto component manufacturers of Pithampur and Devas area, they got some work orders. They got to know new companies, and the companies got to know that there are such suppliers. For example, you see a JCB machine or any earth mover or any kind of heavy material lifting machine. So all the pneumatic and hydraulic valves that are used, and they are used in good number, they are being manufactured in Pithampur now. Earlier, everything used to come from Bangalore and Chennai. So this is the kind of change which is happening. I can give you a large number of examples, but just to give you an idea, this transition is happening. Okay, and Ratanji, if I can ask you, if competitors are in your vicinity, is it advantage or it is a disadvantage? What do you think? Ratanji, mic is yours. Yeah, you can take the mic. If a competitor of yours is in vicinity of yours, is it advantage or disadvantage? See, if I take a clue from small shops, if you remember, or today also, if there is a, let's say, watch shop, you'll find 10 watch shops together. And it's mostly, so people know that 10 shops hai, at least they have got a choice. And ultimately your product quality and product pricing, those are second part.
obviously, competition. But I am sure if there are such concept, if I take it forward, it does help. As a competitor also, it may help you sometimes. It may help. It will It not may help. help. It may help, as I said. So if I come to Manish with same bit of insight, now, Madhya Pradesh is talking about bringing in more competition, more people and more, industries. What is your feelings? You are having industry for last 40 years. So what is your feeling that we should get more or, others can come and let the cake become bigger? What is the thought which is going on in your mind? See, competitor companies being together, I think it's an advantage. Because पूरा ecosystem जो है उसके around build हो जाता है. So eventually every company will last according to the value it brings to the table. They have their own quality, own proposition, value proposition. But I think if they get concentrated in one area, it helps. Just look at China. एक district होगा तो वो जैसे the button है. So you'll find hundreds of factories just making that button, but all kinds of buttons. So it makes a hub actually. So let's say, I'm not can't talk about cement because cement, they need not be together. They can be localized to serve their markets. But I think if competitor industries get together at one place, it's an advantage. Okay, Bhai, you want to come? Yeah, no, so I was just wanting to add to what he's saying. Like this is something which is actually being practiced when what we call as a cluster approach. Where you have the hub and you have the spokes all together. So, typically that is what has already, that is already what has happened in Bhopal and which is, or Indore for that matter. And this is the approach that is already coming in where, there is this, by means of cluster approach, a lot of industries and they may or may not directly compete with each other. They may have their own niche areas. And like Manish ji very rightly said, end of the day, it depends on what value the company gets in. Their whole internals, how their business practices are, what kind of quality they are maintaining. So as long as they are doing it fine, you can easily, in fact, you can grow together, yeah. See, I think if I can say, in a lighter way, अब मैं मध्य प्रदेश का नहीं हूँ. I don't belong to. I belong to Delhi, but I've been living here 4 years now. What is that place in Indore? Some market is there, Chappan market and some, what is that? Sarafa or Chappan, one of those. Something. All kinds of restaurants are all together. You see how popular it is. नहीं तो कोई जाएगा ही नहीं. One shop is there, nobody will go there. You wanted to say something? No, I just wanted to support what Meher said also. There's no competition these days. I'm speaking from IT standpoint, but I've seen in manufacturing and even other areas as well, that COVID has taught us many lessons, right? There's a big order out there and you're competing. You're competing with somebody, right? Instead of that, just shake hands with them. 2 + 2 becomes 10, right? But if you're competing with somebody, it may be 0 or 2. So you have to figure out a way how to tie up with somebody and win the business. If I can come back to Ms. Shukla, this is about, this logistic hub. We are hearing for last 6-7 years now that Madhya Pradesh is getting ready to become the logistic hub. GST has been a great enabler for the same. So, what is happening now? We were hearing various announcements from the Chief Minister himself. Now, what is the scenario? So, in the last budget, Government of India announced 5 national level multimodal logistic park. Indore is one of them. We have identified a suitable piece of land. It's about 250 acres near Jamodi, Pithampur. And that is going to bid out most likely in September or October. So that will be the first one in MP on the concept of MMLP, which will have well-established connectivity via road, train, all kind of national highways and expressways, and also air cargo. Now, in addition to this, we have identified some lands near Bhopal, Gwalior, Jabalpur, etc. for next phase as and when we are ready with the next level of logistic parks. So that is on a larger scale with the concept of MMLP. Otherwise, on a smaller scale, a large number of logistics units and logistics entities have come near all the big towns of MP like Indore, Bhopal, Gwalior and Jabalpur. Now in the first stage, as it happened in Western countries like USA also, the companies set up their logistics facility close to the consumer. So like if Delhi has a population of 2 crore with almost 40-50 lakh consumers with good paying capacity,
So companies will have a tendency to put up their warehousing facility and logistics facility close to the city. So it happened in Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon, and so on. So as and when the city and then the whole area develops, then the national level logistic facility starts coming up. So that has started. The second phase of logistics facilities is happening now, and then companies are looking for a national level base and a national level footprint from MP. So the position of MP is such that the long-term distribution cost for either raw material or finished goods will be minimum or optimum if any company has either facility here for manufacturing or for storage. So this phase has started now, and we are all set, we are all ready to take advantage of this. But do you think that Madhya Pradesh is probably, slower in getting off the block? Probably that window which was there for Madhya Pradesh is perhaps been missed? See, it is like this. As I said, there is a growth path, and first stage wherever population density is more. So if you go by the population number, Delhi, Mumbai, then Chennai, Bangalore, Kolkata, Hyderabad, then Ahmedabad, Pune, all the large metros, because that is where middle class was there and consumers were there. That is where all the warehousing came. But remember, they were warehouses. They were not logistics as a whole concept. Now, in the next phase, logistics as a concept is happening, and that is where MP is figuring very prominently on the plan of all the logistics company. We are ready with a logistics policy also, and the state will be announcing its policy in due course. We are in touch with the companies who are both in logistics as well as they are closely connected with logistics company. Maybe, Prime Minister's Gati Shakti will give more Gati to your Shakti? Yes. We are working on PM Gati Shakti as a very important component of the program. Thank you. Manish, you wanted to add something? See, I wanted to add to this logistics point, which Shukla Sahab mentioned. You see, we are importing almost 40,000 tons and we are exporting 50,000 tons. So that means 90,000 tons total, let's say 4,500 containers, let's say 400 containers. And Concor is charging 60,000 rupees each way, just to bring that container from Nhava Sheva to this thing. So that is a big drag. So being a landlocked state for any company which is exporting, so this adds on to the cost. Of course, other than the working capital which is floating on the roads and the rail tracks, it's your money, the time to market it increases. Other than that, also, the Concor is a steep cost actually. See, MP has all the infrastructure. We have ICT Mati, the bank opposite our factory. So we are very pleased with that. The containers come inside our factory, they get stuffed, you put on rail, straight into the port, on the ship and out. And we are exporting 75% of our product to more than 40 countries. So this cost of 60,000 rupees each way is a huge drag. So I'm just giving you an example. We are spending more than 25 crore rupees. So this is where the coastal states normally get to score over the, landlocked states. So if somebody, if MP government can share some of the costs for the exporting companies, you'll make them more competitive and attract more, because everybody will work the cost. Maybe sharing the cost could be one proposition, otherwise everything else is Government of India's prerogative. Railways is their subject. Yeah, exactly. So that's why I don't know which forum to raise this point, that if you really want to bring in exporting companies to the state, you have to think about their cost. And maybe even the time factor, because sometimes what happens if I'm specifically talking to a customer in, say, Middle East, they say the sailing time from Nhava Sheva to, the Jebel Ali port or whatever is 2.5, 3 days, or Oman. But from here to that is about 10 days. So they tell me, why do you think why is your material going to take 2 weeks or 3 weeks to come? And nowadays, it's the time when everyone wants everything immediately. So then I have to explain to them, okay, my stuff is getting to Bombay in 1.5, 2 days, and then, clearance. Of course, it's not just MP. There is a clearance process at the port, which itself takes 5 days. But what I'm saying is somewhere, even if you fine tune on 2 or 3 of those days, or on the cost factors, as I said, it's not, a lot of it is at the port, so I don't say anything to do with, but maybe there's some kind of a logistics corridor could be done with, direct to the port where a high-speed traffic or more frequency of trains or something like that. In fact, World Bank's report on ease of doing business pointed out to many of these roadblocks.
And they also mentioned that how inefficient our system is, and probably 18% is the additional cost Indian exporters are paying. Let me clarify on this. The PM Gati Shakti came mainly because of this reason, that in India the cost of logistics was about 14% of the total value chain as compared to Western Europe and America, which is about 7 to 8%. So to reduce the cost and make the whole thing more efficient and and reduce wastage, Government of India announced PM Gati Shakti. In PM Gati Shakti, all components are now being looked at very, very carefully. Where are the shipping constraints? Where are the space constraints on Mudala or Nhava Sheva? Where are railway constraints? Which all connectivity has to be improved. So this is the first time these things are being looked at by the states and industry bodies. Earlier, they were totally dependent on whenever Concor will come or some railway rakes will come, it will go. And so this uncertainty has been reducing. Has reduced and is being reduced every day. So this is what change has brought. Thank you everyone. I am sure, Sanjay ji, you have a lot of insights from them which you can take home as well as to your colleagues in Government of India. I thank every one of you. You have taken out your time. Your busy schedule was disrupted. I am really thankful to you all. Thank you, ji. Thank you very much. अब शुरुआत करने वाले हैं हम अगले सत्र की, जो कई मायनों में खास है, क्योंकि ये सत्र जो है वो युवाओं के विषय से जुड़ा हुआ है। और मध्य प्रदेश में युवा जो है उसके मन में या तो नौकरी की चाह होती है या उसके पास क्या विकल्प होता है कि वो कैसी राह पर चले। तो अब जो विषय है वो विषय ये है जो अपने आप में खास मैं कह रहा था कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, और अगर आते हैं तो युवाओं के लिए अवसर क्या है। और इस विषय पर इससे अच्छा कौन बोलेगा, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान हैं उन्होंने खुद छात्र राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत की, राजनीतिक जीवन की, और उसके बाद जिसे कहते हैं एक नाम एक मकाम, जिसे बनाना आसान नहीं होता, उसके पीछे मेहनत होती है, उसके पीछे संघर्ष होता है। तो युवाओं को लेकर क्या स्थिति है राजनीति की और तमाम पहलू हैं। तो बहुत स्वागत करता हूं
इस सत्र के जो हमारे मेहमान हैं, बीडी शर्मा, युवा सांसद, मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष, और स्वागत है। और इस सत्र के मॉडरेटर हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ द्विवेदी जी, इंडिया टुडे के हिंदी के संपादक और ललन टॉप के संपादक। सांसद जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, इंडिया टुडे के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विषय तो हमारे साथी ने बता दिया, युवाओं को राजनीति में क्यों आना चाहिए, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि वीडी शर्मा राजनीति में क्यों आए। आप तो खेती की पढ़ाई कर रहे थे। माइक। ये बात तो बहुत सही कही है कि मैं राजनीति में कैसे आ गया। प्रारंभिक दौर में कॉलेज की जब शुरुआत हुई और उस समय मन के अंदर ये उत्कंठा रहती थी कि कुछ करना है, तो छात्रों के आंदोलन के साथ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर के अंदर जब शुरुआत हुई तो उस मन के उस अभियान को हम इस रूप में लेते चले गए कि काम करते करते छात्र आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए चले गए। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि राजनीति में प्रत्यक्ष तौर पर इस भूमिका में आएंगे। लेकिन विद्यार्थी परिषद के साथ काम करते हुए देश के लिए कुछ करना है, मुद्दों पर कुछ करना है, और एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मैं हमेशा ये प्रयास करता था कि हम सब लोग मिलकर के, उसमें विद्यार्थी परिषद भी थी, अन्य छात्र संगठन भी थे, मैं ग्वालियर में था तो एनएसआई के लोग भी हमारे साथ काम करते थे और एसएफआई भी उस समय को सक्रिय थी जी। लेकिन काम करते करते सामाजिक मुद्दों पर और ऐसे कुछ इश्यूज पर ये भूमिका बनती चली गई। और विद्यार्थी परिषद के साथ, क्योंकि आरएसएस थॉट में जब काम करते हैं तो किसको कहाँ काम करना चाहिए, तो वहां से जब ये कहा गया कि अब राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है तो यात्रा इस रूप में शुरू हुई। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं प्रत्यक्ष राजनीति में काम करूंगा। एज ए फुल टाइमर में लगभग 21 ईयर फुल टाइमर के तौर पर विद्यार्थी परिषद का मैंने काम किया, आरएसएस के एक प्रचारक के नाते से काम किया। लेकिन उस थॉट ने जब ये तय किया कि अब आपको इधर जाना है तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। आपके परिषद के दिनों के सहयोगी जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं उसी से बातचीत आगे बढ़ाऊंगा। वीडी भाई साहब, लेकिन जो परिषद के नहीं है वो आपसे बड़े नाराज हैं। हमारे पास भी कुछ भाजपा की अंदर की जानकारियां हैं, कह रहे हैं कि वीडी भाई साहब आए और उन्होंने परिषद के लोगों को संगठन में सब जगह तैनात कर दिए। अब तो विद्यार्थी परिषद वालों की ही चलती है, जो पुराने जमे जमाए नेता हैं संगठन के, पुराने ओल्ड गार्ड, उनकी अब वीडी भाई साहब के जमाने में कुछ कम सुनी जाती है। क्या कहेंगे? सौरभ जी, आपने बड़ा ऐसा प्रश्न कर दिया कि इसका जवाब देना भी जरूरी है। विद्यार्थी परिषद से जहां से मैं आया हूं, वास्तव में विद्यार्थी परिषद कोई पॉलिटिक्स करने के लिए काम नहीं करता। व्यक्तित्व में छात्र के, नौजवान के कैसे निखार आ सकता है, व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होगा, उस भूमिका में विद्यार्थी परिषद जैसे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। उसमें जो लोग काम करते हैं तो उनकी एक प्रतिभा है, वो निखर करके आती है और अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि केवल पॉलिटिक्स में नहीं, सामाजिक फील्ड में, प्रशासनिक क्षेत्र में और समाज में ऐसे कई स्थानों पर विद्यार्थी परिषद के काम करने वाले नौजवान आज उन स्थानों पर अच्छा काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के अंदर। अब चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में वो सक्रिय रहते हैं, काम कर सकते हैं, उनकी इस प्रकार की ट्रेनिंग भी होती है, व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी भूमिका बनती है, वो अच्छा काम कर सकते हैं और विद्यार्थी परिषद में काम करते करते उस दिशा में वो तैयार भी होते हैं। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि जो लोग अभी एक दूसरे दल के व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए, मेरा उनसे परिचय हुआ तो उन्होंने कहा कि शायद आप मुझे भूल गए, मैं विद्यार्थी परिषद में छात्र जीवन में तो यही काम करता था, बाद में कांग्रेस में चला गया था। अच्छा। तो राजनीतिक क्षेत्र में मैं इस बात को दावे से कहता हूं, अन्य दलों में भी विद्यार्थी परिषद के बहुत काम करने वाले कार्यकर्ता हैं जो अन्य दलों में भी काम कर रहे हैं। मैं उनका नाम भी बड़े लेवल पर भारत की राजनीति में
जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनमें भी काम करने वाले लोग विद्यार्थी परिषद के हैं। आपके मीडिया के क्षेत्र में एक नहीं पता नहीं कितने लोग पूरे भारत के अंदर अपना स्थान बना करके काम कर रहे हैं। तो विद्यार्थी परिषद कोई केवल पॉलिटिक्स के लिए ट्रेनिंग देने वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो जब निर्माण होगा तो कहीं भी जा सकता है। तो बीजेपी के अंदर या अन्य दलों में जब है सभी जगह पर, तो बीजेपी के अंदर भी दिखाई देते हैं कि जब काम करने के लिए उनको लगता है कि इसकी क्षमता इस योग्यता में है तो उस स्थान पर जाकर के उसको स्थान मिलता है। ये आपने तमाम क्षेत्र गिनवा दिए, वहां तक तो ठीक था, पर जब आपने कहा कि कांग्रेस में भी विद्यार्थी परिषद के लोग हैं तो कांग्रेसी नए सिरे से फिर स्क्रीनिंग शुरू कर देंगे कि कौन कौन है जो संघ से दीक्षा लेकर आया है। काम बढ़ा दिया आपने कमल नाथ जी का। अच्छा, ये बताइए, इफ वी गो बाय फैक्ट्स, तथ्य, तो वीडी शर्मा साहब 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के मेन संगठन में आए। उसके पहले विद्यार्थी परिषद में और संघ में तमाम सांगठनिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, ऐसे ही कहेंगे? बिल्कुल। पर अंदर खाने सब कहते हैं कि वीडी भाई साहब तो 2013 से तैयारी कर रहे थे। दत्तात्रेय होसबले जी ने तभी संकेत कर दिया था, लेकिन उस समय जो यहां पर भाजपा चला रहे थे, सरकार चला रहे थे, वो विद्यार्थी परिषद से तब कर आए एक व्यक्ति की एंट्री के लिए राजी नहीं थे। तो तब नेहरू युवा केंद्र पर बात सीमित हो गई। फिर चर्चा चली कि 2018 के विधानसभा चुनाव में फलानी सीट है बाबू सिंह जी की, वहां से वीडी भाई साहब चुनाव लड़ सकते हैं, ढिकानी सीट से। फिर कुछ वीटो हो गए। फिर 2019 में कहा गया कि साहब इच्छा तो मुरैना की थी, जन्मभूमि और जहां पर स्कूली शिक्षा हुई, पर आखिरी में फिर खजुराहो पर बात जाकर निकली। और तभी आपकी पार्टी के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी ये संकेत दे दिया। पहला तो पर्चा भरवाने आए तो स्टेट की जो लीडरशिप थी उनको संकेत, और दूसरा उस समय का भाषण कि आप सिर्फ एमपी नहीं चुन रहे हैं। तो समर्थक कहते हैं कि अमित शाह जी सिर्फ 19 के लिए नहीं कह गए थे, 20 के लिए भी नहीं कह गए थे, 23-24 के लिए भी कह गए हैं। क्या कहेंगे? लंबा सवाल है, बहुत तसल्ली से एक एक बात पे जवाब दीजिएगा। सवाल आपका बहुत नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते से मुझे जवाबदारी जब मिली थी, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो क्षण भी बहुत, जितने दिन मैंने काम किया पूरे देश के अंदर प्रवास करते हुए, दुनिया का सबसे बड़ा यूथ नेटवर्क है और उसमें काम करने में भी मुझे बहुत आनंद आया। उसको हम लोग कुछ दिशा में ले जाने का हमने प्रयास भी किया था। आगामी समय में मुझे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एज ए जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी। श्रद्धेय दत्ता जी कभी किसी को ये तय नहीं करते कि उनको कहाँ जाना है। उनका तो स्नेह और आशीर्वाद हम लोगों को एक मार्गदर्शक के तौर पर, और मैंने उनके साथ विद्यार्थी परिषद में काम किया है। तो कार्यकर्ताओं की चिंता करना सहज रूप से ऐसे जो हमारे बड़े लोग हैं वो करते ही हैं, लेकिन किसको राजनीति में जाना नहीं जाना ये कोई उनका विषय नहीं है, ना वो कभी इसके बारे में सोचते हैं। व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस दिशा में उनकी जरूर निगाह रहती है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में है। और उसकी चिंता वो अगर सौरभ जी से संपर्क है तो मीडिया के क्षेत्र में सौरभ जी अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी वो चिंता करते हैं। जहां तक चुनाव के बारे में जो आपने कहा, मुझे ये था कि डायरेक्ट पॉलिटिक्स में जाना है, ये बहुत बाद में तय हुआ और मुझे कहा गया कि अब आपको चुनावी राजनीति में जाना है। बहुत बाद कितना बाद होता है अध्यक्ष जी, थोड़ा वर्ष बता सकें? देखिए, मैं 2013 के अंदर 12-13 के बाद जब आया, उसके बाद 14 के चुनाव जब आ रहे थे, तभी मुझे विधानसभा के चुनाव थे, तो विधानसभा के चुनाव के दौरान ये चर्चा हुई कि अब आपको इस प्रोसेस में जाना है। उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई स्थानों से चर्चा चलती रही और जाकर के खजुराहो से मुझे कहा कि यहाँ से आपको चुनाव लड़ना। मुझे मात्र 12 दिन मिले थे, लेकिन मैं बुंदेलखंड की जनता का बहुत हृदय से आभार करता हूँ आपके माध्यम से कि मुझे ऐतिहासिक मतों से उन्होंने विजय दिलाई और मैं आज खुश हूँ क्योंकि उस क्षेत्र का सांसद होने के नाते से आज मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है। आदरणीय अमित शाह जी का स्नेह मुझे हमेशा से है और एक कार्यकर्ता के नाते से वो हमेशा चिंता करते हैं और मुझे लगता है केवल मेरी चिंता नहीं करते, ऐसे सभी लोगों की वो चिंता करते हैं। नेहरू युवा केंद्र में भी मैं काम करता था, तब भी मुझे वो बुला करके पूछते थे कि नेहरू युवा केंद्र का काम में और क्या क्या चीजें हमें करने की जरूरत है, और मैंने बखूबी उनके साथ 2 या 3 बार इसकी चर्चा भी उस समय हुई। तो इसलिए
मुझे ऐसा लगता है कि जब वो खजुराहो जब आए थे और उन्होंने जो स्नेह और आशीर्वाद दिया, और उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में उस समय में चुनाव बहुत अच्छे से जीत करके आया, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व ने जो तय किया कि मध्य प्रदेश के अंदर अब इस भूमिका में जाना है, तो ये मेरे लिए वास्तव में एक ऐसा क्षण था कि एक सामान्य कार्यकर्ता, किसान का बेटा और जो सामान्य तौर पर काम करने वाला, उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मध्य प्रदेश जैसे संगठन का ये काम मिलना, ये मेरे लिए चैलेंज था। और आज भी मैं प्रयास करता हूं कि उस काम के अनुरूप अपने आप को बना सकूं, क्योंकि इतने बड़े लोगों ने अगर ये विश्वास व्यक्त किया है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित जी, नड्डा जी से लेकर के मध्य प्रदेश का हमारा जो नेतृत्व है, तो मैं हमेशा इस प्रक्रिया में रहता हूं कि अपने आप को उसके अनुरूप मैं कैसे बना सकूं। आप मंच पर कह रहे हैं माननीय अमित शाह जी का आशीर्वाद मिला, आपकी पार्टी के कुछ नेताओं की धुकधुकी बढ़ जाती है इस बयान से, तुलना शुरू हो जाती है, ज्यादा किसको मिला, नरोत्तम मिश्रा को, नरेंद्र सिंह तोमर को, या सबसे ज्यादा आशीर्वाद वीडी शर्मा ले गए, क्योंकि इससे भी भविष्य की संभावनाएं तय हो रही हैं। सौरभ जी, ये मैंने पहले ही कहा कि उनका स्नेह और आशीर्वाद हर कार्यकर्ता को है, और अमित शाह जैसे लोग भी भारतीय राजनीति में अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको तैयार करना, उनको बूस्टअप करना और उनको दिशा देने का काम करना, क्योंकि मैं ये बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, मैंने ये देखा है काम के मामले में। अगर मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा हूं, तो जैसे एनवाई केस में अगर मुझे वो मार्गदर्शन करते थे, तो आज मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के नाते से भी समय समय पर जब कभी मुझे मिलना होता है, जैसे हमने ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष हमारा इस वर्ष हम मना रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर यूथ पॉलिटिक्स में यूथ को कैसे हम कनेक्ट करेंगे, ये भूमिका में आप सब लोगों को मिलकर के इस बार इसको ताकत लगा करके काम करना चाहिए। हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इस पर हमने लगातार काम भी किया, यूथ कनेक्ट पर अभी। तो ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बाकी चीजें आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के बारे में, अमित जी तो जब त्रिपुरा के अंदर कुछ नहीं था तो वहां जाकर के काम खड़ा कर देते हैं, नागालैंड के में जब कुछ नहीं था तो नागालैंड पहुंचते हैं और जुट जाते हैं, मेंबरशिप भी करते हैं, और मेंबरशिप करके उन्हीं में से कार्यकारिणी बनाते हैं, उन्हीं में से जब खड़ा होता है तो वहां की सरकार भी बन जाती है। तो अमित शाह जी का जो विजन है कार्यकर्ता के बारे में, संगठन के बारे में कैसे खड़ा करना, तो ये उनकी बेहतर पैनी नजर रहती है, तो हम लोग सब उनकी नजरों से निकलते हैं और अपने आप को आगे ले जाने का प्रयास करते रहते हैं। पर वो सवाल अभी भी हवा में टंगा है कि ज्यादा आशीर्वाद किसे। खैर, मैं आपके पास, आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, देश के सबसे बड़े छात्र संगठन में रहे हैं, तो फीडबैक खूब आता होगा। अध्यक्ष जी, एक फीडबैक हम भी आपको दे देते हैं मंच से। आपके विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बड़े नाराज हैं और बड़ी जायज वजह से नाराज हैं। उनका ये कहना है, बीडी भाई साहब ने हमारे पहले की पीढ़ी को, हमारे चाचा को, बड़े भैया को खूब चुनाव लड़वाए, अब ये शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, छात्र संघ के चुनाव ही नहीं हो रहे हैं, और अब तो बीडी भाई साहब वहां पहुंच गए हैं, तो क्यों नहीं करवा रहे हैं छात्र संघ के चुनाव। सौरभ जी, आपने ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आज इस सदन के सामने रखा है और मैं इसका बड़ा पुरजोर समर्थक हूं। मैं छात्र संघ के चुनाव को लेकर के जब एज ए ऑनलाइन सेक्रेटरी था और एबीपी का जनरल सेक्रेटरी था, तब मैं कोर्ट के अंदर मैं गया था। उस समय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर मैं पिटीशन किया था और उस पिटीशन पर यह डिसीजन हुआ था कि मध्य प्रदेश के अंदर छात्र संघ के चुनाव कराने चाहिए। प्रोसेस क्या होगा, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, और उसके बाद इनडायरेक्ट प्रोसेस में मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हुए थे, हम लोग चुनाव लड़े थे और एक अच्छा वातावरण मध्य प्रदेश के अंदर बना था। मैं ऐसा मानता हूं कि देश की राजनीति में अगर नेचुरल लीडरशिप लाना है तो नेचुरल लीडरशिप के लिए स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन इसका सबसे बड़ा माध्यम ही बन सकता है। अब राजनीतिक क्षेत्र में जो डिसीजन मेकिंग लोग हैं, कभी कभी लोगों को लगता है कि छात्र राजनीति के कारण से लोगों में न्यूसेंस और पॉलिटिक्स में जिस प्रकार के अपराधीकरण की एक छवि जो बनती है, तो ये छात्र राजनीति से आता है। मुझे ऐसा लगता है कि छात्र राजनीति में भी उनको अच्छे तरीके से अगर हम प्रयास करते हैं तो अच्छे लीडर निकलने का एक सबसे बड़ा माध्यम वो छात्र संघ का चुनाव हो सकता है, जो मैंने कहा कि नेचुरल लीडरशिप, और ये आनी भी चाहिए। और मध्य प्रदेश के अंदर इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान
चुनाव नहीं करा रहे, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ही हम लोगों के उस समय के प्रयासों से चुनाव कराए थे। अब बाद में जो परिस्थितियां बदलती गई और चुनाव प्लस माइनस हो गए। चुनाव तो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में बंद हुए थे। मैं जब ग्वालियर में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का एज ए स्टूडेंट लीडर काम कर रहा था, तब मैं चुनाव लड़ने की तैयारी में था और चुनाव बंद हो गए थे। फिर बाद में चुनाव शुरू हुए, सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवेंशन था उसके अंदर उस समय। लेकिन इन सारी बातों को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और हम सब लोग चुनाव के हमेशा पक्षधर रहे और चुनाव होना भी चाहिए। और ये चुनाव प्रासंगिक है आज के नेतृत्व के लिए। एक अच्छा नेतृत्व निखर करके आए और नेचुरल लीडरशिप आए, इसके लिए छात्र संघ का चुनाव बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं तो किसी भी मंच पर इसके लिए बात भी कर सकता हूं और करता भी हूं। अध्यक्ष जी, आप मंच पर बात मत करिए, मेरा आग्रह है जनता का पत्रकार होने के नाते। आप इस समय इंडिया टुडे के मंच पर हैं और इसी समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भाजपा के मुख्यालय में युवा मोर्चा के कार्यक्रम में मंच पर हैं। आप लोगों की तो अक्सर मुलाकात होती होगी। आप एक तारीख ही बता दीजिए कि इस सत्र में भाजपा संगठन ये आश्वासन देता है कि छात्र संघ के चुनाव होंगे, क्योंकि चाहिए और है का फर्क प्रतिपक्ष के लोग जब उस पर बात करें समझ में आता है। आपके पास सत्ता है, कहिए मुख्यमंत्री जी को कलम उठाएं, आदेश दें, नौजवान तैयारी शुरू करें। सौरभ जी, आपने जो कहा ये बिल्कुल इसकी बात होगी और मध्य प्रदेश के अंदर छात्र संघ के चुनाव होंगे। हाँ होंगे, क्यों नहीं होंगे? इस वर्ष होंगे, नहीं होंगे क्योंकि ये जिस प्रकार से कोरोना के दौर के कारण से जो परिस्थितियां बनी, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आज इस सेशन के अंदर होंगे, लेकिन चुनाव होंगे। सर, कोरोना में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, सरकारें बदल रही हैं, तो ये नौजवानों को संतोष की लॉलीपॉप दी जा रही है। अच्छा, मैं इतनी देर से सोच रहा था, वीडी भाई साहब से बात हो रही है और दिग्विजय सिंह का जिक्र नहीं आया। बहुत प्यार है आप दोनों में। छात्र संघ के दिनों से मुझे कोई बता रहा था, वीडी भाई साहब से पूछिएगा, बहुत लाठियां खाई हैं। सत्य है? मैं तो जबलपुर में भी खूब लाठियां मैंने खाई हैं, ग्वालियर के अंदर भी हम जब थे तब भी बहुत खाई हैं, और उनका बड़ा स्नेह मेरे ऊपर रहता था हम लोगों पर कि जरा इस विद्यार्थी परिषद के लोगों को छोड़ना नहीं है। और जबलपुर के अंदर हालात ये थे कि लोग ये कहते थे कौन से हॉस्पिटल में है, तो संघर्ष हमारा खूब हुआ है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी का मैं तो बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उनको पता नहीं क्या प्रेम है और उस प्रेम के आधार पर वो मुझे जब देखो तब कुछ न कुछ करते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अब इतने खुल के बात हो ही रही है और ये मैंने गौर किया है कि जो छात्र राजनीति से नेता आते हैं उनके साथ थोड़ा ज्यादा खुल के बात की जा सकती है, कि स्टिफनेस नहीं होती, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि उन्हें कभी वाचाल, कभी वाकपटु, कभी चंचल छात्रों से डील करना पड़ता है। ये कभी आप लोग मिलते हैं, आप और दिग्विजय सिंह जी ऐसे? नहीं, कभी कहीं कोने हाथों, कहीं कॉफी हाउस में, उनको कोई काम हो, आपको कोई काम हो? नहीं, कभी किसी कार्यक्रम में मिल जाए तो कभी ऐसे मुलाकात मेरी होती है। सेंट्रल हॉल में कभी मुलाकात होती है। एक बार का घटनाक्रम मैं आपको बताता हूँ कि मैं राजभवन में माननीय महामहिम राज्यपाल जी से मिलने गया था। दिग्विजय सिंह जी मिलके लौट रहे थे और हम लोग एंट्री कर रहे थे, और मैं उस समय प्रदेश का अध्यक्ष बना था। तो उन्होंने मुझे गले से लगाया और बधाई दी। तो कुछ लोग थे तो उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी जिसको गले से लगाते हैं जरा ध्यान रखो फिर क्या होता है। तो ऐसे मुलाकात होती रहती है मेरी, मिलता रहता हूं। अच्छा, एक और नेता है, पता नहीं दिग्विजय सिंह ने उन्हें कितना गले लगाया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये कहा जाता है भोपाल के जो पॉलिटिकल पंछी हैं वो इस बारे में खूब चहचहाते हैं कि ज्योतिरादित्य और भाजपा संगठन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। वो जिस तरीके के निर्देश देते हैं, या कई लोगों ने कहा कि कैसे वो जगह जगह टिकट का आश्वासन दे आ रहे हैं, बीजेपी इस तरह से काम नहीं करती है। और वीडी भाई साहब और ज्योतिरादित्य तो बस लॉगर हेड एक दूसरे के उसमें है, तनातनी रहती है। क्या है सत्य? देखिए, जिस प्रकार का मध्य प्रदेश के अंदर परिवर्तन हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो महत्वपूर्ण भूमिका हुई, और आज भारतीय जनता पार्टी में ये कुछ बातें लोग चलाते रहते होंगे, लेकिन आज मैं बड़े गंभीरता से इस बात को कहता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के नाते से, और जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी पद्धति है उसमें समरस होकर जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मुझे भी इस बात का आश्चर्य है
हम लोग ये सोचते हैं कि जहां से वो आए हैं और इतने सालों तक जहां उन्होंने काम किया है, इतनी जल्दी इस पद्धति में वो ढल करके काम करेंगे कि जब हम बूथ विस्तारक योजना का अभियान लेकर के काम कर रहे थे, डिजिटल बूथ बनाने का, तब वो मुझे फोन करके पूछ रहे थे कि मुझे कौन से बूथ पर जाना है, मेरा कार्यक्रम जरा आप बता दीजिए। यानी बूथ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जाकर के भारतीय जनता पार्टी के डिजिटलाइजेशन में अपनी भूमिका निभाएंगे। मंडल की बैठक लेने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहते हैं कि मुझे जाना है। इतनी जल्दी इस पद्धति में वो समरस होंगे, ये मुझे भी आश्चर्य है, लेकिन मैं इस बात पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तंत्र पर ये बहुत मुझे बड़ा गर्व है कि आज उसके कारण से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में समरस ही नहीं, एक अच्छे नेता के नाते से वो लगातार अपनी भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, ग्वालियर के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि मेयर चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडी भाई साहब को फोन करके नहीं पूछा कौन से बूथ पे जाना है, ग्वालियर हार गए आप। नहीं, देखिए, ग्वालियर हारना या कुछ मेयर के इलेक्शन बीजेपी हम लोग हारे हैं। मैंने पहले दिन कहा था कि इसकी समीक्षा हम जरूर करेंगे। चुनाव है, राजनीति में हार और जीत दो पहलू होते हैं। लेकिन सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण और नगर निकाय के चुनाव में अगर ग्वालियर में हारे तो ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी 34 पार्षद लेकर के निगम का अध्यक्ष बनाती है और बहुमत भाजपा का होता है। इसीलिए तो अचरज और बढ़ जाता है उस हार पे। जबलपुर में हारे तो जबलपुर में मेयर का इलेक्शन हार गए, लेकिन 44 पार्षद, पहली बार से ज्यादा 2 पार्षद लेकर के आते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो हमने 51% वोट शेयर की जो बात की है, जिसकी हमने वो तैयारी, हम लगातार इस काम में लगे हैं, नगर निकाय में 53% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 53%। हमारे कदम इस दिशा में बढ़े हैं। जहां पर चुनाव हारे, ग्वालियर की परिस्थितियां बनी, उसकी भी समीक्षा हमने की और उसके बारे में गहराई में भी हम जाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम चुनाव क्यों लूज किए हैं। तो इसलिए कभी हो जाता है, ऐसा नहीं होता कि राजनीति में हम पहले 16 के 16 नगर निगम थे, कभी प्लस माइनस भी होता है, हुआ है। लेकिन नीचे चुनाव, नगर परिषद, नगर पालिका, जनपद, जिला पंचायत, ऐतिहासिक बहुमत 85.3% बीजेपी को बहुमत मिलना, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे और बाकी लोग जो जानते हैं वो कहते हैं कि इतना नीचे चुनाव भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती मध्य प्रदेश में जो इस बार जीती है। आप जिन नीचे के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं, उन्होंने हमसे गुजारिश की है कि आपसे एक सवाल और पूछ लिया जाए। वो बोले पहले क्लियर रहता था, भाजपा से विधानसभा का टिकट चाहिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, संगठन मंत्री अब नए आए हितानंद जी, और प्रदेश अध्यक्ष अब वीडी भाई साहब हैं। बोले ये 3 जगह की परिक्रमा कर लो, सर्वे में बढ़िया रुझान आए तो टिकट की संभावना बहुत अच्छी होती है। बोले अब कंफ्यूजन है कि ज्योतिरादित्य जी के यहाँ भी हाजिरी लगानी पड़ेगी क्या? थोड़ा ये कार्यकर्ताओं को स्पष्ट कर दीजिए। सौरभ जी, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता के आधार पर काम करती है और उस सामूहिक नेतृत्व के आधार पर ही निर्णय भी सामूहिक होते हैं। इसलिए भाजपा में परिक्रमा के आधार पर कभी न टिकट मिले और मुझे ऐसा लगता है न कभी मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर काम करती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी उसका एक पार्ट है। टीम स्पिरिट मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में काम करती है। और जो आपने कहा कि जिस संगठन से मैं आया हूं, वहां मैंने टीम स्पिरिट की भावना को बड़ी गहराई से सीखा है और उस पर काम किया है। तो पहले से भी यहां काम चलता है और मेरा भी ये प्रयास है कि हम सब लोग मिलकर के, और उसी का परिणाम है कि नगर निकाय के, ग्रामीण निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत इस सामूहिकता के भावना के कारण से ही आया है। और इसलिए जिन कार्यकर्ताओं के बारे में जिन्होंने आपसे अगर बात की होगी, तो मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी परिक्रमा से नहीं, अपनी मेहनत, अपने व्यक्तित्व कृतित्व के आधार पर और सामूहिकता के नेतृत्व के आधार पर ही ये सारे काम होते हैं। इसलिए चिंता मत करिए, किसी की परिक्रमा करने की किसी भी कार्यकर्ता को जरूरत नहीं है। पराक्रम दिखाइए, परिक्रमा के चक्कर मत पड़िए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि परिषद की पृष्ठभूमि वालों ने अपना सीवी अभी से बनाना शुरू कर दिया है। उनको लग रहा है कि जैसे संगठन में हमने धावा बोल दिया, वैसे ही अब सरकार की बारी है। सरकार से याद आया, आपके एक और मित्र जो कि दूसरी पार्टी में है, पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ जी, वो लगातार टिप्पणियां करते हैं विपक्ष का नेता होने के नाते। दिग्विजय सिंह जी तो आप पर व्यक्तिगत रूप से भी प्यार बरसाते रहते हैं और सरकार को भी आलोचना के घेरे में रहते हैं। एक सवाल खूब पूछा जाता है
क्या आगामी विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ही पार्टी का चेहरा रहेंगे, या जो नए दावेदार हैं, या पुरानी लीक दोहरा दी जाएगी कि साहब बीजेपी संगठन चुनाव लड़ता है, बाद में विधायक चुनेंगे? क्या होगा इस पर थोड़ा स्पष्टता संगठन से मिल जाए। देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर सौरभ जी, इस दिशा में मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आज विगत 15 वर्षों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य से विकसित राज्य बना, आज पिछले 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी कमल नाथ जी के नेतृत्व में, उन 15 महीने के कार्यकाल के बाद जो मध्य प्रदेश जिस दिशा में गया, मैं उसकी यहां इस मंच से कोई बहुत आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जिस परिस्थितियों में मध्य प्रदेश पहुंचा उसका परिणाम यह हुआ कि मध्य प्रदेश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक निर्णय लेना पड़ा और सरकार बनी और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। सारी गरीब कल्याण की योजनाएं जो मध्य प्रदेश के अंदर बंद कर दी गई थी, आज मैं गर्व से कह सकता हूं उन योजनाओं को पुनः मध्य प्रदेश के अंदर लागू करके, और आज मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश नहीं, लगातार आगे बढ़ते हुए स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। और एक फील्ड के अंदर नहीं, मैं मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में बात कर सकता हूं। तो ऐसा नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, इतना अनुभवी व्यक्तित्व, और मैं हमेशा एक शिवराज जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं जी, बताइए अंदर कि की वो बात। जिस प्रकार से एक कार्यकर्ता की भूमिका में रहते हैं, हाँ। भारत के सारे राज्यों का सर्वाधिक समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री, और वो हमेशा कार्यकर्ता की भूमिका में जो रहते हैं। आज सुबह यही मंच पे क्या गए कि सर पार्टी कहेगी दरी बिछाओ तो दरी बिछाऊंगा। ये उनकी विशेषता है। इसलिए एक ऐसा व्यक्तित्व अगर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं और हम सब लोग मिलकर के सामूहिकता के भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, संगठन और सरकार बेहतर समन्वय के साथ काम करने का हम मिलकर के प्रयास भी कर रहे हैं और अच्छा हमारा काम भी सबका मिलजुल करके चल रहा है, तो ऐसे में मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आज वो लगातार काम कर रहे हैं और हम सब उस काम में जुटे हैं। चेहरा तो कौन होगा? तो ये प्रश्न ही नहीं उठता है। वही होंगे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आज हम काम कर रहे हैं और आगामी समय में ये कोई निर्णय करने का अधिकार वीडी शर्मा का या हम इसके अधिकारी नहीं होते हैं, न ही हमारी भूमिका इसमें बनती है। बड़े फैसले तो संसदीय बोर्ड लेता है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित जी, माननीय नड्डा जी से लेकर के जो हमारा नेतृत्व है, और इसलिए आपको ध्यान में है कि एक अच्छा काम मध्य प्रदेश के अंदर विकास की धारा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और लगातार हम काम करते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं जरा इससे पहले कि मैं ऑडियंस के लिए सवाल खोलूं, अगर वक्त इजाजत देता है, तो एक सवाल ये पूछना चाहता हूं जो इस पूरे सत्र का मुख्य विषय भी था कि नौजवान राजनीति में कैसे आए। तो एक तो वो तरीका है जो मंचों पर बताया जाता है कि नौजवान मेहनत करें, अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता रखें, पर वीडी भाई साहब एक तरीका और है कि आप किसी बड़े नेता के या तो दरबारी हो या रिश्तेदार हो। आजकल कोटा सिस्टम चलता है सब पार्टियों में टिकट का, फलाने जी अब रिटायर हो रहे हैं तो उनके बेटे को टिकट दे दो, बेटी को टिकट दे दो, या फिर धन बली होना बड़ा जरूरी है कि आप ट्रांसपोर्ट में आपके पास अच्छा पैसा हो, कंस्ट्रक्शन में पैसा अच्छा हो, माइनिंग में पैसा अच्छा हो, कहीं से भी पैसे से बड़े मजबूत हो। अब बहुत सारे नौजवान हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, यहाँ ऑडियंस में भी पीछे मौजूद हैं। वीटी शर्मा जी उनको क्या कहेंगे अगर कोई सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाला लड़का या लड़की है तो वो राजनीति में आने की ख्वाहिश रखे या ना रखे, क्योंकि उसके पास नियत है, मेहनत है, लेकिन उसके खलीते में इतना पैसा नहीं है कि वो फॉर्च्यूनर की कतार लेकर चले और जैसे ही पांव नीचे धरे तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले 100 प्रायोजित लोग आ जाएं। तो ये जरा बता दीजिए, क्योंकि ये हमने हर पार्टी में अब देख लिया कि धन बलियों की बड़ी भरमार है। सौरभ जी, ये तो आपने ऐसा प्रश्न किया है कि मैं आपके सामने मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में एक ऐसा उदाहरण हूं। मैं एक सामान्य किसान का बेटा हूं और सामान्य से सामान्य परिवार को, तो मैं ही एक इतना बड़ा उदाहरण आपके सामने बैठा हूं। मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक सामान्य से सामान्य परिवार के गरीब से गरीब घर के व्यक्ति हूं। आज मध्य प्रदेश के आज मुख्यमंत्री इतने सालों से आज वो काम कर रहे हैं। और भारतीय राजनीति में मैं कहना चाहता हूं देश के युवाओं से, मध्य प्रदेश के नौजवानों से, अगर ऐसे काम करने वाले
जिनके मन के अंदर ये है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा मंच कोई हो सकता है। कभी यहां ये नहीं देखा जाता भारतीय जनता पार्टी के अंदर या इस थॉट के अंदर कि किसके पास पैसा और किसके पास नहीं है। मैं आपको छोटे से एग्जांपल देता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर राज्यसभा का सदस्य का निर्वाचन होना है, हमें व्यक्ति तय करना है। तो एक जनजातीय क्षेत्र के एक सामान्य ऐसे व्यक्ति, नौजवान, यानी राज्यसभा के अंदर मध्य प्रदेश से कौन जाएगा, तो जनजातीय क्षेत्र के डॉक्टर सुमेर सोलंकी बहुत कम उम्र के प्राध्यापक हैं, वो रिजाइन करते हैं और उसके बाद हम उन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट करके यहां से मध्य प्रदेश से भेजते हैं। ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी करती है। सुमित्रा वाल्मीकि एक सामान्य पार्षद जबलपुर के अंदर, इतने गरीब घर की हमारी बहन है कि उनसे जब हम राज्यसभा के लिए, वाल्मीकि समाज की हैं, उनसे जब कहा जाता है कि आपको फॉर्म भरना है, तो उनको आश्चर्य होता है कि ये मुझे किसका फॉर्म भरना है, राज्यसभा का। उनको कल्पना ही नहीं होती है। और जब कहा जाता है कि भरना है, तो जब हम लोग कहते हैं कि इनका ये जो रिटर्न वगैरह कुछ फाइल किया होगा, तो वो कहती है कि मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं और ना इस प्रकार का मैंने कभी रिटर्न भरा। ऐसे लोग मध्य प्रदेश और देश की भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनको चुन करके भारत के उच्च सदन में पहुंचता है। इससे बड़ा एग्जाम्पल इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और नौजवानों के बारे में कहता हूं कि ये जो नौजवान हैं, यूथ के अंदर जो काम करते हैं, उनके लिए रास्ते मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में, देश की भारतीय जनता पार्टी में हमेशा खुले होते हैं। हम तो व्यक्तित्व के निर्माण के आधार पर इस भूमिका में आने वाला कौन नौजवान हो सकता है, उसके लिए रास्ते हमेशा खुले हैं। मैं तो आमंत्रित करता हूं आपके माध्यम से वो आए और भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका स्वागत है। यूथ कनेक्ट का अभियान ही हमारा ये। उन 19 विधायकों को भी आमंत्रित कर रहे हैं क्या मंच से, जो जनजातीय अस्मिता के नाम पर नारा दिया गया? द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं, वोटिंग हुई तो बताया गया कि उस पाले के भी 19 आ गए, उनको भी न्योता दे रहे हैं क्या वीडी भाई साहब? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि महामहिम राष्ट्रपति देश की जनजातीय समाज की बहन द्रौपदी मुर्मू बनी, ये भारत के राजनीतिक इतिहास में इतना बड़ा कदम, आजादी के 75 वर्षों में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के नेतृत्व ने जो निर्णय किया, इस पर अंतरात्मा की आवाज पर लोग जरूर आएंगे और आए, और ये देश के अंदर इतिहास बना। तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के हमेशा खुले होते हैं कि अगर उनको या किसी और को ऐसा लगता है कि हमें देश के लिए, समाज के लिए काम करने में भारतीय जनता पार्टी में अवसर मिल सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए तो सौरभ जी रास्ते हमेशा खुले हैं। अध्यक्ष जी, वो आ सकते हैं, उनका स्वागत है। आपने ये बढ़िया बताया। देखिए, आप मंझे हुए राजनेता हैं, मैं अभी नया पत्रकार, पर ये जो नेताओं की अंतरात्मा की आवाज है, इस पे तो ललित निबंध लिखा जा सकता है साहब, है। तो मैं बस इतना जानना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि उन 19 को कौन से अमृत और कौन से महोत्सव की प्रॉमिस की गई है, उनका ख्याल कैसे रखा जाएगा, बस इतना बता दीजिए। नहीं, ये तो देखिए कि किन्होंने अपनी अंतरात्मा के आधार पर ज्योति मुर्मू जी को समर्थन किया, ये तो मुझे लगता है कि द्रौपदी मुर्मू जी को जो समर्थन किया, ये तो वही बता सकते हैं। नाम तो आपके पास भी हैं। या फिर जिनके दल के लोग हैं वो बता सकते हैं। अच्छा, हमने हमने तो उनका तहे दिल से उनका धन्यवाद किया है कि एक ऐतिहासिक निर्णय में वो सहभागी बने, और भारत के इतिहास में उनका भी नाम और उनका मन भाव ये रहेगा कि हमने भी एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ था भारत के अंदर आजादी के 75 वर्षों में, जनजातीय समाज का व्यक्तित्व और एक बहन और गरीब से गरीब परिवार की वो देश की राष्ट्रपति बनी, उसमें उनकी सहभागिता हुई, तो उनके मन को अच्छा लगेगा। हमने तो उनको तहे दिल से धन्यवाद दिया है। अब ये तो उनको बताना है कि कौन लोग थे और उनके बारे में अगर, और उनको कब आना है, तो ये तो वही बता सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, मैंने कह दिया था 2 सवाल पहले आखिरी, वहां से समय का संकेत भी हो गया है। कार्यकर्ताओं ने चलते चलते कहा कि भाई साहब तमाम चीजें पूछ रहे हैं, एक और पूछ लीजिएगा। और आप तो जानते ही हैं कि हम नौजवानों को मना नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा, वीडी भाई साहब अब हम लोगों को समय कम देते हैं, पहले बहुत समय देते थे, लेकिन अब भाई साहब गृहस्थ आश्रम में चले गए हैं जब से, देखिए अभी भी हंस रहे हैं, उपलब्धता कुछ कम हो गई है। इस शिकायत पर क्या कहेंगे? देखिए, उपलब्धता कम नहीं होती है, क्योंकि जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते से है, तो मैं तो देर रात तक भी काम करता हूं
और सुबह मॉर्निंग वॉक से भी काम शुरू कर देता हूँ। तो जितना, हाँ ये हो सकता है कि जब मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं था, पारिवारिक जीवन में नहीं था, तो खुले तौर पर मैं रात को 2 बजे भी सो रहा हूं तब भी वो आकर कहते भाई साहब, तो उसको सीधे एंट्री होती थी, सीधे फोन लगा देते थे, गाड़ी पकड़ के ये बोलिए था। लेकिन आज चूंकि मेरा परिवार है और उस परिवार को समय देना ये भी मेरी जिम्मेदारी है, तो इसलिए उसमें अगर कुछ शेयरिंग कम हो गई हो तो ये हो सकता है। इसमें मैं बहुत इसमें कोई दो राय नहीं है, तो होता ही है कि समय कुछ घर में भी लगाना होता है। लेकिन मेरे प्रयास होते हैं कि मैं मध्य प्रदेश के अंदर दौरे भी लगातार करता हूं, हर क्षेत्र में, हर जिले में, और मैं तो बहुत नीचे तक जाता हूं। और उपलब्धता तो मेरी हमेशा रहती है। मेरे कार्यकर्ता तो मुझे बेहतर तरीके से जानते हैं कि पता नहीं कि आपको कैसे ये लोगों ने कहा होगा। देखिए, तो मेरा काम तो पत्रकार के तौर पर सुनना है। नहीं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे तमाम सवाल पूछे गए, व्यक्तिगत जीवन पर भी आखिरी में सवाल आ ही गया। आप बड़े मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो संरक्षिका है, आपकी मार्गदर्शिका है उमा श्री भारती, वो इतना मुस्कुरा के हमेशा जवाब नहीं देती, बहुत क्रोध में रहती हैं आजकल, पत्थर वत्थर भी फेंक देती हैं। आप दीदी को समझाते नहीं है अपनी? देखिए दीदी, अब वो ये क्लिप भी देखेंगी। मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं, देश की राजनीति में एक अपना स्थान रखती हैं। हम लोग तो उनसे मार्गदर्शन समय समय पर लेते रहते हैं और वो हमें स्नेह और आशीर्वाद देती रहती हैं। विवाह के लिए भी आशीर्वाद हाँ, देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका आशीर्वाद मुझे मिला और उनने ही ये प्रयास, आज इतने बड़े मंच से कहने में कोई संकोच नहीं है, उन्होंने ही मुझे इस दिशा में जो प्रयास थे उन्होंने ही प्रयास किए थे। और उसके आधार पर आदेश आया कि वीडी विवाह कर लो। नहीं, उमा जी का आदेश, देखिए आदेश तो क्या होता है कि जब प्रत्यक्ष राजनीति में जाते हैं तो मुझे ध्यान में है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्रद्धेय नानाजी देशमुख ने मुझे कहा था, जब मैं विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री था, उन्होंने एक बार मुझे बुलाया और पूछा कि आगे क्या करोगे। बोले विद्यार्थी परिषद में और राजनीति में जाओगे। मैंने कहा नाना जी जा सकते हैं अगर संभव होगा तब। वैसे कोई मेरे मन में ऐसा तो नहीं है, मैं तो लगातार ये एज ए फुल टाइमर काम कर रहा हूं। तो बोले अगर प्रत्यक्ष राजनीति में जाना है तो विवाह करके राजनीति में जाना। ये मुझे आज भी वो शब्द याद है। श्रद्धेय नाना जी ने मुझे बहुत वर्षों पूर्व कहा था। उमा जी का स्नेह मुझे लगातार मिला और उन्होंने इस दिशा में ये जो प्रयास किए कि किनके साथ उनके संपर्क, उनके जो बचपन की सहेली है, उनकी वो बेटी है, इसलिए उन्होंने प्रपोजल लेकर के आई और उसके बाद परिवार के साथ बातचीत करके जब तय हुआ तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि उन्होंने इस दिशा में प्रयास किए थे और आज मैं इस रूप में एक अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये उमा जी से आप लोग इतना मार्गदर्शन लेते हैं, शराबबंदी पर क्या मार्गदर्शन मिला? देखिए शराबबंदी, भाजपा संगठन का क्या स्टैंड है इस मुद्दे पर? देखिए शराबबंदी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का बहुत साफ स्टैंड है। मुझे ध्यान में कि हम नर्मदा सेवा यात्रा जब माननीय मुख्यमंत्री जी निकाल रहे थे, तब इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी नर्मदा किनारे की शराब की दुकानें बंद करने का निर्णय लिया था। तब बहुत चर्चा चली थी कि इतना बड़ा रेवेन्यू का लॉस होगा। मुझे अच्छे से ध्यान में कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कितना ही रेवेन्यू का लॉस हो, लेकिन ये निर्णय हम करेंगे, और किया था। शराबबंदी या कोई भी सामाजिक बुराई कानून से नहीं बदली जा सकती। उसके लिए अवेयरनेस लाना, अभियानों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, इसके क्या सामाजिक दृष्टि से नुकसान हो सकते हैं इन पर प्रयास करना, ये भारतीय जनता पार्टी हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, आदरणीय उमा जी हो, सब लोग इस दिशा में प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है कि उमा जी का इस दिशा में जो उन्होंने कहा है, इस पर बेहतर तरीके से मेरी भी बातचीत हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी उनकी बातचीत हो रही है। तो उमा जी ने भी स्पष्ट कहा है कि मेरा विरोध कोई सरकार या मुख्यमंत्री या किसी से नहीं है। शराबबंदी पर, शराब की नीति पर जो कुछ वो कहने का प्रयास करती हैं, वो संगठन के साथ भी और सरकार के साथ भी ये कोऑर्डिनेशन का प्रयास लगातार जारी है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, मुरैना के अंदर मैं जहां का रहने वाला हूं, एक गुर्जर समाज के सामाजिक संत ने अभियान लिया, जहां जो समाज शराब के कारण से हर प्रकार से पीड़ित था, सामाजिक संत ने जब अभियान लिया, तो आज मैं गर्व से उनको धन्यवाद करता हूं कि मुरैना जैसे क्षेत्र में उन संतों के प्रयासों से आज उस समाज में शराबबंदी 90% हो गई। ये सामाजिक अभियान है। तो सामाजिक अभियानों से चीजें को खत्म किया जा सकता है, बुराई को, लेकिन कानून से बुराई बंद हो जाएगी
मुझे लगता है सौरभ जी इसके बारे में आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, जहां शराबबंदी है, बाकी जगहों पर क्या है, इसके बारे में मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस लाना और सामाजिक दृष्टि से लोगों को तैयार करना, ये समाज की आवश्यकता है। इसमें हम सब लोग, सरकार भी प्रयास कर रही है, संगठन भी प्रयास कर रहा है और उमा जी भी प्रयास कर रही है। और ये उमा जी के लिए फाइनल संदेश भी है बीजेपी संगठन अध्यक्ष की तरफ से। वीडी शर्मा जी, आपने इतने सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि भविष्य की शुभकामनाओं में आपके समर्थक बहुत छिपे हुए मतलब अभी भी तलाश रहे हैं। आई लीव इट टू दैट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू। किस विषय पर मैं आपको बता दूं, उसका संबंध मध्य प्रदेश के कीर्तिमान से है, जो बड़े अरसे बाद, जिसे हम कहते हैं कि खुशियों का आसमान आए और ऐसा कीर्तिमान आए, तो अब उसके मायने बहुत खास होते हैं। और अब जो हमारा सेशन है, क्रिकेट प्रेमी तो यहां बहुत सारे लोग होंगे, क्रिकेट हर कोई देखता है। मध्य प्रदेश की टीम ने रणजी में रचा इतिहास, और इतिहास को खास बनाने वाले खास मेहमान हमारे साथ हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। अतिथियों के नाम ले लूं मैं। गेस्ट हमारे साथ हैं अभिलाष खांडेकर जी, चंद्रकांत पंडित जी कोच हैं मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के, आदिश श्रीवास्तव हैं कैप्टन मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के, अभिलाष जी प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। तो इन तीनों अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं और इस सत्र को मॉडरेट करेंगे मेरे सहयोगी कौशिक टेका। I think if there is a Bollywood film director or film producer, and if you would be watching this session, then definitely this is the script for a blockbuster movie. We have a person who was captain of Madhya Pradesh cricket team 23 years ago. In Bangalore, Chinnaswamy Stadium, he led Madhya Pradesh and lost the final. 23 years later, he comes back to Madhya Pradesh as the coach of the team, leads the same team with a captain, and gives Madhya Pradesh, the state, its first ever Ranji Trophy. And in the same Chinnaswamy Stadium. And I believe this is a story for a blockbuster movie. And the man who made this happen is none other, Chandrakant Pandit, former Indian cricket player and coach of Madhya Pradesh cricket team. And the person who actually played the game on the field, taking every command of his coach, and who made this dream come true, is Aditya Srivastav, captain of Madhya Pradesh cricket team.
the man who actually took the trophy of that historic moment. But this could happen because of the vision of a board, Madhya Pradesh Cricket Association. And without that vision, without that boldness, because it was a pretty bold decision to hire a celebrity or star legendary coach for a cricket team which was never a probable for Ranji final even. So and the credit goes to the Madhya Pradesh Cricket Association President, Avilash Khandekar. Please give him a big hand. And it's very apt that as a sign of gratitude, respect, Mr. Khandekar is going to gift a precious book that he has dug out from his cupboard that he had bought long back to the coach of the team, Chandrakant Panditji. I would request Mr. Khandekar to hand over the book. Yes, sir, at the beginning of the session. And one more introduction to Mr. Khandekar. He is one of those very few living people who had interviewed Don Bradman, god of cricket. So that he can coach the team even better. My first question is to Mr. Khandekar. How tough was it to take that call that you would hire Chandrakant Pandit? He had already become a legendary coach with 5 Ranji Trophy victories to him as a coach. So what made you take that decision and how difficult it was for you? Because Madhya Pradesh is not known for regularly playing the finals of Ranji Trophy. Oh, we played only twice. The finals, only twice. And second time we won the championship itself. So you can understand the status and the infrastructure that Madhya Pradesh Cricket Association offers. But the first question being first, it was very tough decision. But also it was not a tough decision in the sense that Chandrakant Pandit knew Madhya Pradesh inside out. He had played for Madhya Pradesh. He had captained Madhya Pradesh. But when we came to know that he was living Vidarbha and some other associations are also, trying to net him. So some of us got together in Indore, Sanjay Jagdale, Sanjeev Rao, our secretary, and we quickly decided to, do our gherabandi. What we call in fielding, in cricketing language is the fielding that we set around Chandrakant Pandit. And he was, I should say that he was gracious enough to accept our offer. It is not that he laid down some conditions or इसमें हमको कुछ खींचतान करना पड़ी. This was not the case. But looking back, it was one of the most important decisions of our regime. We were elected in 2019 to the Madhya Pradesh Cricket Association. And after that, we were thinking what big should we, think of it, it is called out-of-box thinking. So we had put together a plan, and we were talking to everyone, and the alignment of vision for a big time, goal was very important for me as a president. So that was done, but soon after that, COVID happened, and about 2 years, we couldn't really do. But I must give a big thank to Mr. Chandu Pandit that despite the COVID pandemic, he was working with the players while he was sitting in Mumbai, and he was virtually talking to people and on telephone and everything, but he did not give up. He had just begun his innings as coach, and that resulted in the victory that we saw in last June at Bengaluru. Mr. Pandit, 6 Ranji trophies, 3 for Mumbai, 2 for Vidarbha, and now 1 for Madhya Pradesh. I believe that's the count has begun now. So what's the magic behind this Midas touch? Even I don't know yet, to be honest, because I only believe in process and that the commitment that one has to give. And I think God has blessed me so much that I always thank God,
because somehow every coaches have been working for the same results. And probably everyone cannot do that, but certain things has come to me, and I'm very, very happy about that. Of course, the process is the key factor, which I think every coach must be doing it. And somehow सब जीतते तो नहीं है नहीं, but इसके बाद भी ये भी चीज है कि आप देखिए कि we must give credit to all the players who has, because I always have that line saying coaches never makes the players makes the coaches. It is the efforts of these guys, and those guys have put tremendous efforts throughout the season to get this result. And probably a coach who's sitting outside the boundary line, he cannot go with his bat or he cannot go and bowl for them. But ultimately they have to, whatever the planning or strategy has been made, that has to be implemented on the ground. And I'm very, very so happy, and I give a lot of credit to Aditya, because all these my coaching tenure, I've come across so many captains, and I found he was the best among them, because he was concerned about the team, he was worried about the team, he was trying to handle each and every play. So it was, very helping hand for me. And keeping team together, that was, our mantra all the time. And I always believe it's a team game. I mean, no one can say it's an individual game, which we all know about it. And that is what I try to maintain. Of course, there are some required discipline is also important to maintain. Probably that process is such a good process that must have given us all these results. You were being modest, you were giving credit to Aditya. Of course, he does deserve credit. But it's not a coincidence that you win 6 trophies, one after one. And Bidarbha and Madhya Pradesh, they were not top teams. Like Mumbai definitely is a top team. So what is this process? Because as you said, that teams make coaches, that's applicable to every other team. But in your case, it's completely different. And many people say the process, as you mentioned the word discipline, which is the key word for you. And you are a very tough taskmaster, which involves even, if you would not even hesitate to slap a player. Is that the thing that works for the teams that you coach? Do you stand there with a stick? No, I say what people have made my image, probably, whatever article it comes that, like you said, it's a hard taskmaster. Yes, I mean, there is some requirement for the game, which I will not compromise on that. That doesn't mean that, I'm trying to go the other side of the player. But the players is obviously responded well. I mean, there has to be some discipline when we expect from the players or any individual. It is that demand that the game has. I mean, discipline, sometimes we say the bowler has to bowl. I mean, commentators say bowler has to bowl a discipline line. Commentator says the batsman should have a little discipline in his batting. So why not discipline when we are playing? I mean, maybe off the field, maybe on the field. So that is most important, that I always believe. And it's not a question of that I can slap anyone, or that's not a question of that I can, I mean, there is an article today as well, how he's going to handle Andrew Russell and the international players. But everybody has to be flexible in that. It's not a question, I mean, tomorrow if I have to handle Aditya Srivastava, I know his character. I know, because I've been going through my entire process, that need to know each and every character differently. I mean, when they come together, that's later on that I think about the team. But individually, I have to assess him such a way, as Kandekar sir said, that I started from Mumbai. When I got the offer and when I said yes, and I came back, and, before I could arrive in Indore, I started communicating with them. I mean, they didn't know me that well in person, but whatever they have heard about me, I think Aditya would probably explain much better that, he's going to come now and what we are going to do, how we are going to do, because
every player around in this country who knew me, he started passing on the feedback that he's a dangerous man. Now, in this case, I didn't know what is dangerous in this. If I'm expecting certain things for this particular game, which is simple discipline. सिंपल सा सवाल है, अगर आपके बात ना माने फील्ड में या ऑफ फील्ड में जो आप कहते हो, तो ना मानने पे एक थप्पड़ मारने पे विश्वास रखते हैं कि नहीं आप? नहीं, 20 साल पहले करता था मैं. मतलब इस टीम को नहीं पड़ा, मध्य प्रदेश की टीम को नहीं पड़ा होगा. That is the situation at that time. Again, it demands that, because it is not a question of somebody slapping, but I think I'm little strong in giving them messages, because I don't believe that certain thing has to be missed out at that particular time. I mean, आपने देखा होगा कि अगर हमारी फाइनल मैच चल रही थी तब शुभम शर्मा, he threw his wicket in the last. I think I was sitting down and I called him. This is not whether we are winning the trophy or not. You finish it well. So you have thrown your wicket, which is not acceptable, but today I can leave you. So बात के लिए आपको बाद में देख लेंगे. But he knew about it as soon as he walking. So कहने का मतलब है कि भाई एक certain things है कि वही के वही अगर आप किसी को कहते हैं. I mean, I'm so lucky that all these MP players are so obedient. I mean, the way they have responded throughout the season. I mean, man sitting in front of us is Ishwar Pandey. He's been playing for 12 years for Madhya Pradesh. But that man has also never responded in a negative way. Or probably, he's not playing the match, but he's also serving the water to 19 years old boy who's in the team. I mean, that is a culture. And why not? I mean, everyone is equal. I mean, yes, I call it, I never say senior and junior. This is what I always told them. It is experience and inexperience. So, I mean, that I've learned from Sunil Gavaskar. I like to share that probably. I mean, how you learn. I was batting with Sunil Gavaskar. I was 18 years old and I was lucky to bat an India legend and a captain that time. I just, went across the pitch and said, "Sir, am I doing?" He said, "Stop saying sir first. At the moment you're playing with me, you're equally, you are important and a value you have in the team. It's only I'm experienced. So make sure that when you're talking to me as a sir, so you're going to be a down, at certain points. So probably if I'm not playing well, he will say something, So that was the advice. And he's also given me advice when you go out and just sit, आप बाहर बैठ के देखो तो आप क्रिकेट बहुत सीख सकते हो. अभी तो सभी को क्रिकेट पता है. मुझे पता है कि हमारे पहले सोसाइटी के बाहर एक ठेला था, वहाँ पान वाला था. वो पान वाले ने कहा, सर एक मिनट बात करूँ क्या आपसे? करो ना. क्यों सर, आजकल सचिन को समझ नहीं रहा है वो खेलने का बॉल. मैं बोला, यार आपको इतना समझ रहा है तो इधर ही रहने दो, नहीं तो इस तरह की बातें होती है. Aditya, how was the feeling of lifting that cup? It's a historical cup for Madhya Pradesh, first time ever. And then the background. 23 years ago, he lost out and you fulfilled his dream. What were the things that were going inside your mind at that point of time? Exactly at the moment when we lifted the cup, it was, I honestly myself, I was not able to realize any emotions. It was so blank because a day before we were although in a commanding position to sail through the game or win the game. But at the same time, I was the most nervous on the fourth day night. We had the fifth day was there tomorrow. And that was the most nervous night. I didn't feel that nervous even in the first game, although it was my first year as captain. Because I was like, we are so near. Although we are in a commanding position, we have lost games on the verge, like we are winning it and we just missed out on some carelessness. And that happened back in 98, 99 too, when our seniors in Sir was leading the side. And he had discussed that incident many times with me, especially when we were going to Bangalore. He illustrated the entire scene what had surfaced, because
Bangalore was the exact venue where we missed out on the trophy in 98-99. So while lifting the trophy, I was not feeling any emotions. I was so caught up in the game that it was too early for me to separate my mind and my heart from both those emotions. But like half an hour after, when we sat in the bus, when we reached the hotel, that is when the emotions sinked in. And while I lifted the trophy, it was the only emotion that I could vividly remember right now was that it is, that feeling is so surreal that the energy that it gave, that we want to do it again and again now. The feeling that I had was it was not meant to be just done once. We somehow have to repeat it. आपका नर्वसनेस किस बात का था, कब हारने का या चंदू सर के थप्पड़ खाने का डर? नहीं और पूरे इस कोचिंग ड्यूरेशन में थप्पड़ खाए कि नहीं कोई टीम के प्लेयर? सर देखिए, वो थप्पड़ की जो बात है ना, वो बहुत ओवररेटेड है, ऐसा कुछ है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट जस्ट लाइक कभी कोई, और वो इतना तो सबके घरों में भी होता है, लाइक योर एल्डर्स ऑलवेज हैव द राइट. एंड हमारी टीम में हमने एक ऐसा फैमिली सा एटमॉस्फेयर सेट किया था, और वो ऐसे सेट करने पे नहीं हुआ था, 2-2.5 साल लगे हमें. एंड लकीली कोविड हेल्प्ड अस बिकॉज बायो बबल था, हम कहीं बाहर नहीं जाते थे, हम सिर्फ रूम्स में ही रहते थे. तो एज टीम ऑल्सो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद ईच अदर. इवन द सपोर्ट स्टाफ और प्लेयर्स की जेलअप बहुत अच्छा हुआ. सर ऑब्वियसली बहुत टाइम स्पेंड करते थे ऑफ द फील्ड टू, इंडिविजुअली एज अ ग्रुप. तो वो थप्पड़ वाली चीज कभी एक आध इंसिडेंट हुआ तो हुआ, और वो भी कोई ऐसे हार्ड टास्क मास्टर नहीं. कहीं ना कहीं हमें जो भी टीम के सीनियर्स होते थे वो ये समझते थे कि इट इज नीडेड, and that might set the tone, or that is very important for that boy, whomsoever receives that, to raise his bar. Kaushik, I can tell you, as president of MP Cricket Association, we never entered the dressing rooms. There is a discipline, there is a structure, but I never heard that a player was slapped by Chandu. But yes, there is an interesting story which Chandu shared with me in Bangalore, that and also in Indore, that he used to tell the players कि यदि कोई इंजरी हो जाए, कोई डर हो जाए, कुछ हो जाए, कोई बात नहीं, टीम के लिए लड़ना है, मर जाएगा तो तेरा स्टैचू खड़ा कर देंगे, लेकिन टीम जीतना जरूरी है. So he would tell the players that what is important is victory, what is important is performance. If something happens to you, we will look after you. आपका पुतला बना देंगे. This may be in a lighter vein, but it was sending a strong message that what you are here is for victory. और आप इस रणजी ट्रॉफी के सीजन में देखिए, सारी मैचेस लीग से लेके सेमीफाइनल फाइनल तक कन्विंसिंग तरीके से जीते. तो उसमें ड्रेसिंग रूम में द कम्युनिकेशन बिटवीन कोच एंड द प्लेयर्स, बिसाइड्स द टेक्निक ऑन द फील्ड, हमको बाद में पता चला कि इंदौर के हमारे स्टेडियम में रात को 2 बजे बारिश में भी दौड़वा रहे थे. But that is endurance training. So he is a coach who is, slightly, different, but he wants results, and therefore we also got him from Vidarbha, and he has delivered with his players. So this is, I would like you to give a big hand to Aditya and Chandu, because what is happening, and I wear number of hats. So I'm also editor, I'm also the president of MP Cricket Association, and I also see what kind of things appear in the newspapers which we talk. So many of the dressing room stories, there were a large number of, I told you I was a sports correspondent. So when I was in Bangalore, I met number of old colleagues. So they were saying कि यार वहाँ आपके ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी हमको मिल रही है. मैंने कहा कहाँ से मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही, मैं प्रेसिडेंट हूँ, आपको कहाँ से मिल रही है. So journalists have their own way of working, but I am only trying to, once again underline the fact that Chandrakant Pandit is as human and as, brotherly as any other. But when he is on the field, then he would like, और पुराने जमाने में कहते थे छड़ी लाके छम छम विद्या है गम गम. मतलब the idea is that it is not actually beating, but the fact remains that the coach's terror or coach or the teacher's discipline matters. आपने ड्रेसिंग रूम की बात कही, तो एक बात आपने मुझे ऑफ स्टेज कहा था कि एक टोटका, चंद्रकांत जी, आपने जो स्टेडियम, सिन्वस्वामी स्टेडियम में ड्रेसिंग रूम 2 थे, तो एक आपने जबरदस्ती ले लिया था कि इसी ड्रेसिंग रूम में रहना है और इसी से खेलना है क्योंकि तभी जीत मिलेगी. वो क्या कोई जादू था, या जैसे सर ने कहा कि टोटका, या कुछ आपके बिलीव थे अंदर से कि क्योंकि पिछली बार हारे थे दूसरे ड्रेसिंग रूम में, तो इस बार ड्रेसिंग रूम चेंज करके देखेंगे? और ऐसे और भी तरकीब क्या आप अपनाते हैं अपार्ट फ्रॉम योर कोचिंग मैनुअल? नहीं, पहले तो ये चीज आपके पास आई कैसे, मुझे समझ नहीं रहा हूँ. आपके पास ही है? अच्छा, सर के पास से आई. आखिर जर्नलिस्ट है. नहीं, अभी
वो मैं नॉर्मली आई डोंट बिलीव, मैं इस चीज को बहुत मानता नहीं, मतलब इनको भी मैं कहता हूँ प्लेयर को कि ये सब कुछ आप छोड़ दो, बिकॉज देन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट. बट उस टाइम पे ऐसे हुआ था कि 23 साल पहले की बात थी, और उस ड्रेसिंग रूम में जब मैं गया तो मैं नहीं चाहता था कि वो यादें मुझे आए, क्योंकि नॉर्मली व्हेन यू एंटर इन द ड्रेसिंग रूम एंड यू नो probably you recollect all those incidents, how we missed out on that finals. और वो सब चीजें मुझे हर प्लेयर उस ड्रेसिंग रूम में मैं समझ सकता कहाँ बैठे थे, मुझे अभी भी याद है. तो उसमें हमारे श्री संजय जगदाले सर भी थे. तो जिस तरह का वो एटमॉस्फेयर था, तो मुझे वो ड्रेसिंग रूम में नहीं जाना था. तो मैंने बोला कि हम चेंज करते, तो आई थिंक दैट वर्कड ऑल्सो. आई मीन आई रियली बताने मेरे को कि it started working on me because I forgot everything and we started focusing on that. So that was the only reason, because of course emotions are always there, because 23 साल पहले, and when you were captain, maybe God blessed me with that, coming back as a coach and same team, and that I can go back when सर ने हमको मेरे को जब ऑफर दिया था कि यहाँ आने के लिए, so that first thing came in mind, whether somebody believes here or not, I don't know, but I can talk from my heart. The first thing it came in my mind, maybe God wants me to go back there and get that trophy again. So that was the thought came in mind. सभी कहते हैं कि ये एकदम जो फिल्म आए थे चक दे की तरह है. अब आप जो किरदार चक दे में निभाए थे शाहरुख खान के साथ काम करने जा रहे हैं IPL KKR के लिए, और ये कहा जाता है KKR में लास्ट टाइम आपके ही पुराने शिष्य है श्रेयस अय्यर ने कमेंट किया था कि कभी कभी टीम मैनेजमेंट यहाँ पे इंटरफेयर करते हैं. मध्य प्रदेश में तो कोई स्टार नहीं था, आपको 0 इंटरफेरेंस मिला, और इससे पहले भी आप KKR ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे फॉरेन कोचेस से आपको किसी के अंदर काम करना नहीं था. अब शाहरुख खान सुपरस्टार के साथ आप काम करेंगे, तो इंटरफेरेंस को कैसे हैंडल करेंगे? I hope you can make it clear that I never interfered with your working or your selection. That's what I said. No, I mean, how you look at that? Is it? I mean, one has to think about: is it that interference, or is it that you get some suggestions? Whether to use that suggestions or interference, how you look at it, that is what. I never feel that. I mean, I can give you example. Of course, sir has never came with any suggestions. But there has been some matches we gone through, and my support staff sitting, given me a suggestion during the match going. I mean, sometimes I can also take it in another way. Why you are interfering in this? Or सर सजेशन तो टेलर भी तेंदुलकर को दे रहे थे, सजेशन तो कहीं से भी आ सकते हैं. That is what I am saying. So how आप किस तरह से करोगे? आज अगर मैं KKR में जाऊंगा और उनकी फ्रेंचाइज में से अगर किसी ने सजेशन दिया, अगर इफ इट इज गोइंग टू बी यूजफुल, बिकॉज देखो सजेशन देने वाले कौन होते हैं या बीच में बात करने वाले कौन होते हैं कि जो लोग दे आर कंसर्न अबाउट द टीम. Tomorrow, if my president comes and tells me on the phone, probably, Chandu, why not we do this? So he's concerned about that. Am I going to come out and say my president is interfering with me? I mean, how you take it, that is more important, and I'm very, very open with that. And of course, ultimately, you have to take a call. So, ये चीजें मेरे को इतनी bother करने वाली नहीं है, because the same question has been asked by the press day before yesterday, कि आप किस तरह से, because श्रेयस अय्यर ने ये कहा था, और वो इंटरफेरेंस उस तरह से, मैं बोला कि हाउ यू टूक इट, दैट इज इम्पोर्टेंट. आई मीन ही मे नॉट वांट टू से दैट, ही वांटेड टू proudly he wanted to say that this is what the suggestion even came from my CEO, and that has worked for us. When it works for us, so why it is called interference? बट कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, कुछ चीजों पे आपको कन्विक्शन है जिसमें आपके ओनर को कन्विक्शन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन तो हो सकते हैं, और KKR में पहले हो चुके हैं, 2-3 इंस्टेंसेस बाहर आ चुके हैं. That is what happened now. 20 years back when I said, "Na, I used to slap boys." Now I'm more matured about to handle this now. या फिर IPL के लियोर ने आपको मैच्योर कर दिया. बहुत लोग कह रहे हैं क्योंकि IPL के चकाचौंध है और वहां पे शाहरुख खान है, तो आप भी बात मानने को तैयार हो गए. नहीं, ये तो चीज नहीं होती है. देखो, इट इज क्रिकेट. अल्टीमेटली
एक 50 ओवर का गेम खेलो आप 5 दिन की मैच खेलो या T20 खेलो, तो दैट इज क्रिकेट. यू आर गोइंग टू प्ले द गेम, एंड हर गेम के अंदर जो प्लानिंग होती है, जो डिमांड होता है, दैट यू आर गोइंग टू फुलफिल, rather than I keep on thinking about what is going to happen, who's going to give me. Before I'm going there, if you start thinking about, as the things comes, like we say, कि एक match at a time. I mean, we want to win the trophy. We have that mission, but one match at a time, and then you focus on that. So before going that, if I start thinking about it, probably I will lose my focus. Communicating with the players, communicating with the franchises, and whatever the requirement I have to ask them, that I will lose my focus. Aditya, of course, your coach has done wonders, and whatever he has done has worked for you. But definitely there will be something that you, in your heart, probably had thought that, okay, this decision was not correct. I should have done it differently. What Coach Sir had said is not exactly the way I want to do it. Can you recall any instance where you both differed? And second question is, quickly, what is that one thing you would like Mr. Pandit to change? Could be anything. I'll answer the. बिना डरे बोल दो, इसके लिए थप्पड़ नहीं पड़ेगा. I'll answer the first one first. See, honestly, as he has been generally the images that revolve around tough taskmaster and all these things, I don't see that much of it. He is just very sincere with his process. He is just very particular about the way things have to be done. So as the games went by and as games kept on coming, there were many instances. I would not say it or comment on it like we had different opinions. Generally, 80% of the things we already had discussed before the games or before the day or in the breaks, whatever time I could excuse, we had our conversations as much as we can. Beyond that, in the final game, like I'll give you a small example. In the final game, we were working on the playing 11. We had many injuries lined up, and we were falling short of the armory that we generally had. Like the whole season we played with 5 bowlers, and in the final we were in a situation that we didn't have the 5th bowler because we had injuries down our side. So I was still panicking because I know generally red ball cricket always needs 5 bowlers, and we always needed that. Sir, on the other hand, was like we don't have the potent enough 5th bowler, the ones we have, and the ones that we have who are our regular members are injured. We had just 2. Puneet was doing well, but in the semi-final he got injured. So we all of a sudden in the final we had to change our altogether combination. Like we went in with 7 batsmen and 4 bowlers. So that point in time, basically I was not different to him. I was just panicking a bit because I had to handle things on the ground, and 4 bowlers would have been short for me. So I was worried. I was discussing it with him. I insisted also 2-3 times in the day. I went to his room. I called him up at 10:30 again in the night before the game, before the toss next day in the night, one day before the game, that I'm still feeling nervy with the 4th bowler. He's like, abhi so ja, subah baat karte hain, give it a thought, but jo bhi hai, we'll handle it. We'll talk in the morning, relax. So such incidents happened, and many a times we had some plan that we had discussed. On the ground, if I felt that it's not working, I had done things and he had never had a problem with it. If at all what I am doing is disturbing, because he had the video analyst and all these things, he could pick up on things very, very quickly because of that and with all his experience. So if at all he had something to change with the plan that I'm executing, a message could come, and like generally in the game it happens. It's just that things get hyped a lot because we were a team who had not won a championship, and we got a whole bunch of experience in the name of him. So things get hyped that everything is very strict and all that. It's not like that. If at all we had all our team members sitting here, I don't think so anyone would bet on it. And it's the way it's done. If at all you don't have a one-man army, I don't think so anywhere the results come. There has to be a one brain for a particular period. So that's the way it was. And if at all, on the lighter note, I feel like something he could change. He can just laugh out a bit at times. The whole season. Now at least, yeah. So he should laugh more. He should smile more.
So I can't resist a journalist from within. So if you allow me, you are the boss of the show. Please go ahead. So sir. I would like at least one instance which even I don't know about the motivational talks that Chaddu you used to give to the team inside the dressing room. Could you share something about that? Because he's been listening all this motivational talk. So one of the stories which I am hearing, not directly, but he has motivated you a lot. जो मोटिवेशन की स्टोरीज जो अलग अलग होती थी, एक विट्ठल कामत की स्टोरी थी, कोई दूसरी स्टोरीज थी, अलग अलग स्टोरीज जो आपको बताते थे, तो क्या स्टोरीज थी? मतलब लेट अस हियर फर्स्ट हैंड फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, सो टू से. सर जनरली जितनी टीम मीटिंग्स के पार्ट रहे ना, टीम मीटिंग्स जनरली बहुत मोनोटोनस रहती हैं. मतलब वही बातें होती हैं बेसिक्स पे, और सीनियर लेवल पे क्या होता है कि सभी लड़कों को ऐसा हो जाता है वही बातें, स्टे रिलैक्स, स्टे पॉजिटिव, या किसी को कुछ नोटिफाई करना है उसके पर्टिकुलर रेक्टिफिकेशंस पे. बट सर के साथ मैंने ये चीज की ही नोज व्हेन टू टाइम व्हाट, मतलब ही इज वेरी परफेक्ट विद टाइमिंग थिंग्स. लाइक अगर ही नोज व्हेन टू, दीज आर द फ्रेजेस दैट आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम हिम ओनली. ही नोज व्हेन टू गिव अ पैट ऑन द बैक एंड व्हेन टू हिट ऑन द बैक. So that motivationally I'm talking, he knows when to assertively pinpoint a topic in the team meeting, or when he knows that he needs to relax the guys because everyone's tensed. So it was a final, and finals generally are very tense for everyone, and it was our first one for our group. So each and every boy, whether he is in form, he is out of form, there was no second thought. The only thought we had was somehow we have to make it happen. So everyone was tensed. Like I remember the day in the morning when we were going in the bus to the Chinnaswamy Stadium for the finals. It was pin drop silence in the bus. No one was moving. So the focus had slightly started shifting towards being tensed. He quickly picked up on it. I could see that he was focused, and all of a sudden he started sharing light notes because he realized that it's getting tensed. On that morning, he brought up the board. He generally has a very informative board with himself always. So he put up the board and he asked everyone to come one by one and write whatever you want from life. So whatever it might be, some might write fame, some might write money, whatever you feel like, come write and leave. So everyone brought a marker, wrote something, fame, money, I want to play at a higher level, I want to be respected, all sorts of those achievements. And then when everyone was done, he stepped in front of the board. Everyone was sitting and watching patiently. He also tried to behave like a showstopper. He stood there for 2 minutes. Everyone was wondering what's about to come. He just came, and among all those desires that men had in our team, he just wrote win Ranji Trophy. So, and then all of the things were getting linked to it. So this was just an example, and many more such meetings might have happened. And someday, like this was very ambitious kind of. Someday he had very assertive meetings, like in typical Mumbai language we call it bamboo. That was typically there. He knew that the team has to be pinched right now. It might be a lunch break, it might be a tea break, where our bowlers are going haywire, or the team is getting a bit desperate. So it was, I cannot sum it up the way. It is very spontaneous with him, and the kind of expression that he wants to put through is very superb. आखिरी 2 सवाल मिस्टर पंडित एक बात मैं बीच में बताना चाह रहा हूँ कि रणजी ट्रॉफी जीतने की जो तमन्ना थी, तो जैसे आपने हमसे पूछा कि वी आर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो हमने सब लोगों को, सिलेक्टर्स, बाकी ऑफिस भी सब लोगों को अलाइन किया था कि द बिग गोल इज मध्य प्रदेश हैज नेवर डन, वी हैव टू विन रणजी ट्रॉफी. तो चंदू जी ने ये किया कि जितने इनकी जो एक्सरसाइजेस की जो फाइल्स प्रत्येक प्लेयर्स को दे रहे थे या सपोर्ट स्टाफ को, उसके पहले पन्ने पे रणजी ट्रॉफी का फोटो लगा हुआ था. In the last 6-7 months that he has been training, or more than that. So everyone was thinking only of Ranji Trophy. So this is one lesson in life, that if you want to achieve certain thing, it has to be there top of your mind all the time. This is what he did. So you would like to say something about that, Chandu? That basically, see, when we started this season, and normally whenever I start this season, it is always people talk about visualization, and you keep on watching certain things. You want to achieve that. So we decided, I always keep that kind of, photographs or that picture of the Ranji Trophy, that every time every individual player has that file, which whatever we are going through the sessions, there are certain notes, and that we have been maintaining individually. So they carry
every cricketer carries their individual files. So where they open the file, they must see first the Ranji Trophy. So that was the thing. Of course, when we were talking about all this, time, we were talking about Chandrakant Pandit, we talked about Aditya, we talked about team. I mean, it's true. But we also believe that, and I particularly, because I have been, like I said, there are many captains who worked under me, and he was the best. At the same time, I can say that I worked with so many associations, and this was the best association for me. The reason is not because he's sitting next to me, and I mentioned many times in that, the support what you're getting, the support you're getting from the association, that every move or every requirement is fulfilled without any hesitation. I mean, every person working there, they had the positive vibes, and they were only working towards the game. And that support, unless and until, because ultimately we say the child needs the parents' support, and then only he can excel in his career or whatever it is. But that has to be, somebody has to be there without disturbing any one of us, any requirement of the camp. सर, समय की कमी है तो बहुत ही क्विकली शॉर्ट में एक आंसर दे दीजिए. पूरा देश परेशान है विराट कोहली के फॉर्म को लेके. आप आज के डेट में देश के सबसे बड़ा कोच है, तो आपका एक टिप क्या होगा दैट विराट कोहली गेट्स बैक हिज फॉर्म? मेरे ख्याल से इतना वो क्रिकेट खेला है तो उसके लिए मेरे को टिप्स देने की जरूरत नहीं. कुछ तो चाहिए, कुछ तो नहीं हो रहा है जिसके वजह से फॉर्म वापस नहीं आ रहा है. नहीं, तो मैं कोच होता तो मैं यही कहता था कि यू प्ले योर नेशनल गेम, डोंट वरी अबाउट व्हाट हैपेंस, बिकॉज़ ही हैज डन सो वेल. I mean, that is the only way he can come back without thinking about anything else. Thank you so much. We're running out of time, but it was a great honor to have this interaction with all three of you who actually created a history for Madhya Pradesh and also for the country. Thank you so much, gentlemen. स्वागत है आपका एक बार फिर से अगले सत्र में. और ये जो सत्र है ये और भी खास इसलिए है कि इसे मध्य प्रदेश की सियासत गरमा जाती है और सियासत में उबाल आता है जब बुलडोजर चल जाता है. उन्होंने कहा भाई दिल्ली में हमसे किसी ने पूछा, ऐसे पूछते थे सामान्य तौर पे, और क्या चल रहा है भैया मध्य प्रदेश में, तो कोई मैं बोल पाता उससे बोले आपके मध्य प्रदेश में बुलडोजर बहुत चल रहा है.
तो ये बुलडोजर जो चल रहा है, इस पर सवाल होंगे, बात होगी कि बुलडोजर चलाना कितना तर्कसंगत है और बुलडोजर चलने से कितना अपराधियों के मन में भय आया, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और इस सत्र में मेरे साथ खास मेहमान हैं विश्वास सारंग जी, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, स्वागत कीजिए। और मेरे साथ हैं कांग्रेस से तरुण भानोत, पूर्व मंत्री, वित्त मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, विधायक। शुरुआत सत्र की करते हैं, चूंकि मैं ही करूंगा तो मैं आ जाता हूं। तो शुरुआत इस सवाल के साथ, मैं शुरुआत विश्वास जी से ही कर लेता हूं। कांग्रेस तो सवाल उठाती है, तरुण जी हैं हमारे साथ। विश्वास जी, यूपी का चुनाव हुआ, बाबा का बुलडोजर चला और ऐसा चला कि बीजेपी भी आ गई। उससे के बाद बाबा का बुलडोजर तो चल गया, उसके बाद मध्य प्रदेश में ऐसा लगा कि बुलडोजर चल तो रहा था लेकिन उतनी तेज गति से नहीं चल रहा था और एकदम बुलडोजर मध्य प्रदेश में दौड़ने लगा, जिसको लेकर कांग्रेस भी सवाल उठाती, जिसको मैं तरुण भानोट जी से पूछूंगा। ऐसा क्या हुआ, तेज गति आ गई बुलडोजर, मतलब जिसे कहते हैं हम गाड़ी की भाषा में समझे, आम भाषा में गाड़ी फर्स्ट गियर पे थी, एकदम टॉप पे डल गई। अमित भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि बुलडोजर तो पहले भी हमने चलाया था। मैं 2003 के पहले के मध्य प्रदेश का जिक्र करना चाहता हूं। जब मध्य प्रदेश की बात होती थी उस समय 10 साल तक लगातार दिग्विजय सिंह साहब की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। जब मध्य प्रदेश का नाम आता था तो यहाँ जो लोग विशिष्ट लोग बैठे हैं वो ये मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि मध्य प्रदेश की बात आती थी तो वो ये कहा जाता था कि इसमें बड़े स्तर पर डाकू हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में कहा जाता था कि केवल 10 जो हैं डाकुओं का ये राज्य है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने कहा कि देखिए, या तो मध्य प्रदेश में डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा। और उन्होंने एक अभियान चलाकर डाकुओं को खत्म किया। और केवल डाकू नहीं, माफिया, कालाबाजारी, गुंडे, बदमाश, इनको नेस्त नाबूद करने का काम मध्य प्रदेश में किया। और जहां तक आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं तो इससे पहले भी आप अभी चर्चा में याद आया है ज्यादा, पर उससे पहले भी था। जो गड़बड़ कर रहा है, जिसने गलत किया, वही चर्चा में तो आया। हाँ, वही, लेकिन गति बढ़ गई एकदम। मैं आपको बिल्कुल तर्क के साथ बताऊंगा। मैंने पहले कहा कि पहले भी होता था, यदि किसी ने गड़बड़ किया है, किसी ने पत्थरबाजी की, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुआ, पता लगा कि उसकी अवैध संपत्ति है, तो उस पर बुलडोजर चला। पर जो आपने बोला तेज गति अभी क्यों हुई, ये जब 15 महीने की सरकार आई कांग्रेस की, उस समय माफिया जो ताकत के साथ आगे आए, उस समय जो कानून को अपने हाथ में लेने वालों की जो हौसला अफजाई हुई, और उसके बाद हमारी सरकार आई, उसके बाद हमने कार्रवाई की। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसे लोगों को संरक्षण मिला। आपकी बात बिल्कुल सही है, बुलडोजर पहले भी चलता था, बुलडोजर अभी भी चला, पर अभी चर्चा में इसलिए आया क्योंकि संख्या ज्यादा हो। नहीं, फिर ऐसा हो गया ना कि बाबा का बुलडोजर, अब मामा का बुलडोजर। अच्छी बात। देखिए, फिर मैं बोलता हूं, और मध्य प्रदेश में मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि उस समय बड़ा डिस्कशन हुआ। सो कॉल्ड इस देश के बुद्धिजीवियों ने ये बात की कि ये एक वर्ग के खिलाफ है, ये भी कही, क्योंकि अगला क्वेश्चन यही होने वाला है, इसलिए मैं समझ रहा हूं इधर से आए या इधर से आए, यही बोलेंगे कि आपने तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया। तो मध्य प्रदेश में हमने जो भी किया है वो कानून के तहत किया है। मध्य प्रदेश में 2022 में हमने एक एक्ट पास किया, एमपी प्रिवेंशन एंड रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज। इसके तहत हमने कार्रवाई की, हमने कानून के तहत कार्रवाई की जिसने गड़बड़ की। अब देखिए, उज्जैन में एक धार्मिक जुलूस निकलता है, उस पर पत्थरबाजी होती है, क्यों होती है? और जो पत्थरबाजी करने वाले हैं उनके अवैध निर्माण है, उन पर कार्रवाई होगी। और ये केवल एक वर्ग के खिलाफ नहीं हुआ, यदि किसी दूसरे वर्ग के लोगों ने यदि रैप किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, यदि किसी ने गैंग रैप किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई। कहने का मतलब यह है कि जो भी कानून अपने हाथ में लेगा, वो मध्य प्रदेश में उसको ठीक से रहने का अधिकार नहीं मिलेगा। बात पूरी आपकी? बिल्कुल। मैं तरुण जी से सवाल करें। तरुण जी, विश्वास सारंग जी ने जवाब दिया, देखिए मैंने भी कहा तेज गति से चला। उन्होंने कहा कि जो है कि जिस तरीके से अपराधी पर कार्रवाई जरूरी है तो इसलिए बुलडोजर का मैसेज देना जरूरी है, लेकिन कांग्रेस कहती है जो बात वो कह रहे हैं। कांग्रेस क्या कहती है वो अलग बात है, मुझे तो ये सरकार चलाने का मॉडल समझ में नहीं आता। सारे कानून बने हुए हैं, संविधान है, सीआरपीसी है,
अपराध पहले भी होते थे, अभी भी हो रहे हैं, और अगर आगे हो तो उस पर भी सख्ती होना चाहिए। ये सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं देती कि ये अतिक्रमण 18 साल से आप शासन मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, आज आपको क्यों दिख रहे हैं? 2016, 2017, 2018 मध्य प्रदेश को मेडल दिलाया सरकार ने। एनसीआरबी की रिपोर्ट में लिखा है, मैं मौखिक नहीं कह रहा हूं, कि सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई। ये बुलडोजर से थोड़ी रुकेंगी। ये कानून व्यवस्था जब सरकार ठीक करेगी, कानून का भय लोगों में, अपराधियों में होगा, और सही तरीके से व्यवस्था चलेगी, तो घटनाएं नहीं होंगी। 2020 में उनका ये कहना था कि भय हो जाता है अपराधियों में। भय, अपराध होने के बाद आप रोकने की बात करते हैं, अपराध हो क्यों रहा है? आप ये कहें कि मैंने तो बलात्कार हुआ तो उसके घर पे बुलडोजर चला दिया। क्या बलात्कार होने चाहिए इस प्रकार से? क्या मध्य प्रदेश को यह खिताब मिलना चाहिए कि वो एक रेप स्टेट हो गया है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेप मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। बुजुर्गों पे अत्याचार, 2020 का मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको देना चाहता हूं। हमारी महिलाओं के ऊपर, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये मौखिक मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र में इन्हीं की सरकार है, 25,640 मामले दर्ज होते हैं। तो आपके बुलडोजर का कौन सा भय है? किसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है? हम अगर बात करें बाल अपराधों की, तो 2020 में मध्य प्रदेश में 17,008 मामले बाल अपराध के दर्ज होते। अगर हम बात करें आदिवासियों पर अत्याचार की, जिनकी बहुत बड़ी संख्या आबादी के अनुपात में मध्य प्रदेश में है, तो ये एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सर्वाधिक अत्याचार के मामले मध्य प्रदेश में होते हैं। किसानों की आत्महत्याएं सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होती हैं। वर्ग विशेष की बात आप करना चाहते हैं और आप ये एंटिसिपेट करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां भी सरकार चला रही है, इनकी हमेशा से सोच ये रहती है कि सारे मुद्दों को गौण कर दिया जाए और ले देकर बात कम्युनल हो जाए। तो हम तो आपकी इन बातों में आने वाले हैं नहीं। चुनिंदा लोगों की, जैसे कांग्रेस ने भी कहा हिसाब। कि चुनिंदा लोगों की वर्ग विशेष की हम भी बात नहीं कर रहे हैं कि कई देखिए, बार किसी की शकल तो नहीं, ये कांग्रेस 4 दिन पहले मध्य प्रदेश के सिरमौर में एक घटना घटती है, रीवा में। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी एक विधायक, उनका एक ऑडियो वायरल होता है कि वो एक सीओ को, कार्यपालिक अधिकारी को धमकी देते हैं, और उसके कुछ घंटों बाद उनको उनकी गाड़ी से प्रशासकीय कार्य करने, जब शासन का कार्य करने वो जा रहे हैं, उतार के मारा पीटा जाता है। अभी तक वो अस्पताल में भर्ती है। आपने किसके ऊपर बुलडोजर चलाया? ये तो चुन चुन कर करना नहीं करना, जब अक्षमता को छुपाने के लिए आदमी बातें करता है, जब प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं होती तो हमेशा ये प्रयास करता है जवाब ले लेते हैं, विषयांतर किया, जवाब ले लेते हैं। आपने जो सवाल किया वही देखिए आ रही है, हम कि चुन चुन के राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, कहां जाएगा बुलडोजर, उसमें कि यहां नहीं जाएगा, वहां नहीं जाएगा। तो बुलडोजर की दिशा है क्या? मुझे लगता है कि तरुण भाई को ऐसे ही बात कहनी चाहिए, परंतु इन्होंने बहुत ही हास्यास्पद बात कर दी। उन्होंने कहा कि क्या कानून जब लागू होगा जब अपराध होंगे? तो कानून बने इसलिए अपराधी के खिलाफ तो कार्रवाई करता है। आपने आईपीसी की बात कर दी, आप किसी और कानून की बात करेंगे तो अपराध तो हो ही रहे हैं और आदि अनादि काल से हो रहे हैं। उसको रोकने के लिए तो कानून बनते हैं। किसी ने यदि हत्या की है तो उस पर 302 लगेगी, किसी ने हत्या का प्रयास किया है तो 307 लगेगी। अब आप कहोगे कि हत्या होने के बाद 302 क्यों लगा रहे? ये कुतर्क है, ये तर्क है। मेरी बात को ही आप साबित करें विश्वास जी। मुझे 2 मिनट में तरुण जी बड़े अच्छे से, मैं चाहता हूं कि शोर ना हो। और आप बहुत ही ज्ञानी हैं, आपके ज्ञान के पीछे के सामने मैं हाथ जोड़कर अपनी बात कह रहा हूं, मुझे बात पूरी करने दीजिए। मेरा ये कहना है कि सख्त कानून ये समाज को ठीक करने के लिए जरूरी है, और मैं ताकत के साथ कहूंगा कि यदि ऐसी घटनाएं होंगी तो बुलडोजर चलेगा और ताकत के साथ चलेगा। किसी एक वर्ग विशेष, किसी एक जाति, किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं। जो भी होगा, यदि कानून अपने हाथ में लेगा तो उसको माकूल जवाब मिलेगा। इन्होंने कहा कि क्या पहले अतिक्रमण नहीं थे? मैंने अपनी बात में कहा, इन्होंने मेरी बात को ही सेकंड किया है। देखिए, मुद्दा यही है, यदि किसी ने गलत किया तो उसके बाद जांच हुई और वो यदि अतिक्रमण था तो उस पर कार्रवाई हुई। उसमें गलत क्या है? करना ही पड़ेगा। क्या आप ये मानते हैं कि पत्थरबाजी करने वालों को शेल्टर दिया जाए? क्या आप ये चाहते हैं रेप करने वालों को शेल्टर दिया जाए? क्या आप ये चाहते हैं कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो? कल तो आप यही कहने लगे, सो कॉल्ड इस देश की दिक्कत तो यही है
कि इस देश की जो विघटन कर रहे हैं उसके साथ भी कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। मुद्दा तो यही आ रहा है, 75 साल की आजादी के बाद जो व्यवस्थाएं बिगड़ी है, तरुण जी की बात मुद्दा वही है, मुद्दा यही है। यदि आप ये कहते हो कि जो कानून अपने हाथ में ले रहा है हम उसके खिलाफ कार्रवाई ना करें, तो ये आपकी सरकारों में होता होगा। अब आपने बात कर दी कौन से आंकड़े लाए हैं, कहां से लाए हैं। यदि ये आंकड़े सही है तो मैं एक बात अमित जी और इसमें बोलना चाहता हूं। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, जो एफआईआर है वो तुरंत दर्ज की जाए। यदि आप इन आंकड़ों की बात करते हैं, ये आंकड़ों से इस बात को सिद्ध किया जाता है कि सरकार ने यदि कोई फरियादी आया है तो समय से उसका प्रकरण दर्ज किया। ये सरकार के लिए, देखिए जैसा आपने बोला कि अभी के अपराध नहीं है, अपराध हर समय होते हैं समाज में। हम तो पुराने समय से भी देखते हैं अपराध को रोकने में उस सरकार की मंशा क्या है, और ये सरकार की मंशा प्रदर्शित करता है जब किसी सिरमौर में, किसी रीवा में, किसी भैंसाखेड़ी में, मैं 1 मिनट में, आधा मिनट में खत्म करता हूं, भैंसाखेड़ी में, बरेली में, बाड़ी में यदि किसी आदमी के साथ कुछ गलत होता है, रात में 2 बजे भी वो जाता है और थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाता है। वो एफआईआर दर्ज होती है, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। इनकी सरकारों में क्या होता है, भगा दिया जाता था। टीआई कहता था नहीं, आप भगा दोगे, अपराध दर्ज नहीं होंगे तो आपको किसी आंकड़े में नहीं आएंगे। ये मतलब नहीं है यदि आंकड़े ज्यादा आ रहे हैं तो कानून व्यवस्था खराब है। आंकड़े ज्यादा आ रहे हैं तो ये बात भी इंगित करता है कि सरकार सजग है और सरकार संवेदनशील है। तरुण जी से अब हमें पूछ लेने दीजिए। तरुण जी, हम इस बात का जवाब देंगे जो महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाया कि निकट के लोगों पर ऐसा नहीं होता है। तरुण जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं सवाल कर लूंगा। मेरा कहना यही था, मैंने शुरू में इस बात को रेखांकित किया, हम वर्ग की, धर्म की, मजहब की बात ही नहीं कर रहे। हिंदुस्तान का कानून सबके लिए बराबर है। ये भटकाव तो आप चाहते हैं कि मुख्य मुद्दे से हटकर इस पे चर्चा आए। हम बार बार कह रहे हैं हम इस पे चर्चा नहीं चाहते। इतनी सारी बातें आपने भी बताई, यहां किया, यहां किया, यहां किया। अरे यही तो सवाल है कि इतना सारा अपराध मध्य प्रदेश में क्यों हो रहा है। फिर आप एक नया आंकड़ा देते, एक नई बात सोच के लाते हैं कि हम तो एफआईआर लिख रहे हैं। तो क्या आपके ही पार्टी के बहुत सारे जो राज्य हैं, आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो एफआईआर दर्ज नहीं करते? ये आपका गवर्नेंस का मॉडल है। मैं ये मानता हूं कि एक सभ्य समाज में अपराध होना के बाद कार्रवाई होना, ये तो हमेशा का नियम रहा है, कानून बने होना चाहिए। पर आपराधिक घटनाएं इस तीव्रता के साथ जो मध्य प्रदेश में घट रही हैं, क्या एक सभ्य समाज, आपका मतलब ये अपराध के आंकड़ों में कमी आना चाहिए, सरकार किसी की भी हो, ये आपकी प्रशासनिक फेलियर बताता है कि आपका ध्यान प्रशासन पे, आपका ध्यान सनी लियोनी पे जाता है, आपका ध्यान नेटफ्लिक्स पे जाता है, आपका ध्यान श्वेता तिवारी की बातों पे जाता है, और ये जो अपराधी अपराध कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, इनके ऊपर नहीं जाता है। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि आप इन चीजों के ऊपर कमेंट करते हैं। माननीय गृह मंत्री जी पत्रकार वार्ता बुलाकर मुकदमे दर्ज कराते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्यों नहीं आके सड़क पर लोगों से पूछते हैं कि वो कितने पीड़ित हैं। इस प्रकार का आपराधिक छवि जो मध्य प्रदेश की बन रही है, और इसका तो जो एक प्रतिबिंब है वो सब चीजों पे आता है। अगर अच्छा प्रशासनिक वातावरण नहीं होगा, सही एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा, तो क्या निवेश आएगा? और अगर निवेश नहीं आएगा तो हमारे बेरोजगारों को रोजगार नहीं समाज में किसी भी चीज में मेरा मानना संदेश के मायने होते हैं। ये कहना कि मैंने ऐसा हुआ तो मैंने उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की। अरे आप सरकार के मंत्री हैं, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, और आप ये मध्य प्रदेश की जनता को कहें कि हम कड़ाई के साथ में कानून व्यवस्था लागू करके अपराधों को हमने कम कर दिया, कानून व्यवस्था, मैं मानूंगा कि आप यही होती है कानून व्यवस्था। कानून का अपराध पालन होने हो के रहा बाद है, सजा देना कानून व्यवस्था नहीं है। नहीं, वो एक कानून की अलग व्यवस्था है। तरुण भाई, अपराध को रोकना, आप अपराध कंफ्यूज हो रहे कैसे हो, आप कंफ्यूज कैसे हो रहे क्राइम रेट कम हो। देखिए, सरकार का इकबाल और पुलिस का इकबाल, कानून का सख्ती से पालन के बाद ही होगा। इकबाल आपको खराब लग, लेट बी कंप्लीट। सरकार का दायित्व ये नहीं है कि उसने पॉकेटमारी की तो मैंने उसको तो पकड़ के एफआईआर लिखकर और कोर्ट में पेश कर दिया। कानून व्यवस्था है, कोर्ट उसको सजा देगा, उसने अपराध किया। सरकार का तो यह दायित्व बनता है कि पॉकेटमारी नहीं होना चाहिए। आप बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जब एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े आते हैं कि मध्य प्रदेश रेप में नंबर 1 है, मध्य प्रदेश बुजुर्गों पे अत्याचार में नंबर 1 है। हम एक एक करके सुन ले, मुझे इस पे आपत्ति, तमाम लोग हैं, एक एक करके मुझे आंकड़े लाए। मैं ये कह रहा हूँ ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आप 15 महीने के आंकड़े लाएंगे, एफआईआर करिए, आप बुलडोजर मेरे घर पे भेज दीजिए। आपकी सरकार 15 महीने रही, उसके आंकड़े हैं आपके पास? मैं देता हूँ उसके आंकड़े। 10 साल तक दिग्विजय सिंह की सरकार रही, आपके हैं? आपके सरला मिश्रा कांड कहाँ हुआ आपको मालूम है? नेहा साहनी कांड किसके कार्यकाल में हुआ आपको मालूम है?
देखिए बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। नहीं, बात दूर तक ध्यान रखिए, बात निकलेगी। सरला मिश्रा कांड यदि होता तो ध्यान रखिए, यदि हमारी सरकार होती तो जिनके नाम आए थे उनके घर पर भी बुलडोजर चलता। अरे बहुत सारे हमारी सरकार किसी को बक्षने वाली नहीं है। शुरुआत में कहा हमारी सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। मैं फिर कहूंगा, किसी का भी कितना भी स्टैग हो, मुख्य मुद्दा यह है कि सरला, आप बोलिए ना, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप एनसीआर के आंकड़े दे रहे हैं, आप बताओ, छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। दिग्विजय सिंह के समय क्या हुआ था बताइए ना। विश्वास जी, मैं तरुण जी से, उसकी आज सीएम हाउस तक गई थी भाई साहब। आप बहुत बातें कर रहे हैं रेप की और बहुत महिला उत्पीड़न की। कमलनाथ जी की सरकार थी, तो उनके मुख्यमंत्री निवास से 1.5 किलोमीटर दूर की बात एक मंत्री करे। 1.5 किलोमीटर दूर। पहली बात तो मैं भी कभी भी उस तरीके से, क्योंकि बड़े अच्छे से चर्चा हो रही है और इस चीज को लेकर मैं सवाल लूंगा। आप जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप स्पॉन्सर्ड हैं, आप बैठिए। आपने अपना सवाल कर लीजिए। आपका सवाल हो गया। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, बड़े शांति के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, हम लोग शांति के साथ चर्चा कर रहे हैं। आपने अपना सवाल किया, विश्वास सारंग जवाब देंगे उसका। नहीं, यदि ऐसे सवाल यदि अलाउड है तो बिल्कुल पूछिए। मैं दोनों पक्षों की चर्चा होगी, लेकिन मुझे बुलडोजर से मत भटकाइए। अभी बुलडोजर से मेरा ये कहना है, बुलडोजर से कोई नहीं भटकाएगा। परंतु मुद्दा यही आता है कि कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है जब पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई होती है, और उसका कारण समझ लीजिए। ये इतनी बातें कर रहे हैं एक वर्ग विशेष की, ये इतनी बातें कर रहे हैं कानून की, किसी वर्ग ये का। इतनी, अरे ये तो आप चाहते हैं कि इस पे चर्चा हो। ये आपने नहीं किया। आपके नेता चाहते यही है कि यही हो। तो यही बात करते आए भैया, आपके नेता तो बात ही ये करते आए। मैं ये फिर कह रहा हूं, आप बताइए अशोक गहलोत सरकार ने क्या किया? मंदिर तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाएंगे पे चर्चा हो रही है, कांग्रेस मध्य प्रदेश पे मैं जवाब लेंगे। मोदी जी पे बात करिए, मैं अमित शाह पे बात करूं। आपने अगर मैं ये कहूं इस चैनल पे ये बैठकर, आपने दूसरी सरकारों की हिंदुस्तान का गृह मंत्री क्या हुआ था गुजरात में, मैंने शोभा देगा। और ये जो महानुभाव व्यापम की बात कर रहे हैं, दोनों से ये ज्यादा दोनों से प्लीज, मैं सब दर्शकों से और खासतौर से जो हमारे साथ यहाँ पर कार्यक्रम में ये कह रहे हैं 80 लोग मर गए। कहाँ मर गए भाई? कौन सी जांच रिपोर्ट में आ गया? पहले तो किसने बोल दिया? हम कहने को स्पॉन्सर्ड आके यहाँ पर बोले और इस तरह के अर्थ का अनर्थ लगाए। बात खेत की हो रही है, खलियान पर पहुंचे तो ऐसे डिस्कशन नहीं होगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में कानून का राज है। जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई भी हो। लेकिन अब देखिए, चर्चा भी हो गई है। चर्चा में ये गर्माहट, मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश की सियासत में बुलडोजर की बात करते करते इतनी गर्माहट आ जाती है। बहुत अच्छे से हम चाहेंगे शोर ना हो, बड़े अच्छे से चर्चा हो। तरुण जी, जो मन में आपके सवाल है, जो आपकी बात अधूरी वो कर लें और अच्छे से हम बातचीत करेंगे। अमित जी, आपने बुलडोजर की चर्चा की। पूरे मध्य प्रदेश ने और पूरे हिंदुस्तान ने अभी सबसे लेटेस्ट बुलडोजर चलते हुए देखा। कहां देखा? कारम डैम के ऊपर जो 300 करोड़ का डैम बना, भ्रष्टाचार में टूट गया, उसके ऊपर 50 करोड़ रुपए बुलडोजर चलाए सरकार ने कि ये भ्रष्टाचार दिखना नहीं चाहिए। ये है बुलडोजर। अब वो जवाब दे लें, अब जवाब नहीं, मेरी बात बहुत समय दिया, इनने बहुत चीख चिल्लाहट की है, तो थोड़ा सा मैं तो बड़े गरिमा को ध्यान में रखते हुए बात। तरुण भाई लगता था कि थोड़ी बहुत समझदारी की बातें करेंगे। ये सर्टिफिकेट मुझे आपसे नहीं चाहिए। ये मध्य प्रदेश धार की एक ये प्राकृतिक आपदा के कारण यदि कहीं कोई गलती हुई थी तो तरुण भाई आपको तारीफ करनी चाहिए सरकार की। सरकार ने कोई किसी का भी नुकसान नहीं होने दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे 3 मंत्री वहां पर खड़े रहे, हमारे अधिकारी खड़े रहे। आप कह रहे वहां बुलडोजर चल गया। मजाक, ये डिस्कशन इंडिया टुडे का हो रहा है या मजाक हो रहा है? मेरा धार पर नेचुरल, यदि आप अगर ये इस प्रकार की बातें जारी रखेंगे और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपके चैनल के माध्यम से बना के देंगे, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, दोनों लोगों से आग्रह, मेरी बात सुनिए। मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आप मंत्री जैसे पद पर बैठ गए। मुझे बुलडोजर चल गया, आश्चर्य की बात है। मुझे ये बताइए, आप विश्वास जी और तरुण जी, मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं,
आप लोगों से फिर से, क्योंकि मैं चाहता हूं बड़ी शांति से चर्चा हो रही है और उस चर्चा में, क्योंकि ये भी बता दें, अगर आपने शांति मुझे कौन देखा, फैला रहा है? आपने इतनी देर मुझे देखा, आपने कभी मुझे देखा कि मैं, मेरा स्वभाव कि मैं चिल्ला के कभी सवाल करूं, मैं चिल्ला के सवाल नहीं करता हूं, ना मेरा स्वभाव है, ना मैं करना चाहता हूं कि मैं उस पिच पे जाके कहूं कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है। मैं एक निवेदन कर रहा हूं, मैं एक निवेदन कर रहा हूं। देखिए, ऐसे इस सदन में स्पॉन्सर्ड लोग लाकर पर्ची देकर, मेरे को ये आपके ऊपर सवाल है, मेरे ऊपर नहीं है। नहीं, ये विश्वसनीयता की बात है। मैं तो जबलपुर, नहीं, मैं अब ये कह रहा हूँ, इस तरफ से भी जवाब आया था, विश्वास जी इस तरफ से भी जवाब आया था। ये किसी श्रेणी में नहीं, ये किसी श्रेणी में आएगा, ये किसी श्रेणी में इसलिए नहीं आएगा। विश्वास जी मेरी बात सुन लीजिए। निवेदन ये है, ये यहाँ पर इंडिया टुडे के ऊपर नहीं, मैं ऊपर आई, आपने किया ना ये, आपका स्पॉन्सर है। मैं केवल सवाल का जवाब पे चाहता हूँ। आप उपयोग गलत कर रहे हो, मैं विश्वास जी आप सुन लीजिए, कर रहे हो। तरुण जी मुझे भी कहना पड़ रहा है, तरुण जी तो कुतर्क मत करिए, कुतर्क मत मेरा अगला सवाल है, मेरा अगला सवाल ये है, बुलडोजर मध्य प्रदेश में चलना चाहिए या नहीं? बहुत शांति से, मतलब मैं आपसे जवाब लूंगा और फिर उसके बाद में। देखिए, कोई भी सरकार को जनता चुनती है, जनतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का सबसे प्रथम दायित्व यह बनता है कि इस प्रदेश में शांति रहे। ठीक, कोई भी सरकार है, उसका दायित्व है। तो कानून बने हुए हैं, कानून की व्यवस्था करने के लिए अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सही ढंग से काम करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% अपराध बंद हो जाए, पर अपराध कम होगा। ये बुलडोजर तो तब आता है जब हम विफल होते हैं। बुलडोजर की कोई धारा मैंने नहीं पढ़ी कहीं कि इस धारा के तहत बुलडोजर चलेगा। मैं थोड़ा सा कानून जानता हूं, वकालत मैंने नहीं की है, मैंने ये किसी भी जगह पे नहीं पढ़ा कि इस धारा के तहत अगर ये अपराध होगा तो उसमें बुलडोजर चलेगा। उसके लिए लिखा हुआ है, कानून कहता है कि इस धारा के तहत इस व्यक्ति को ये अपराध करने की ये सजा मिलेगी। उसका सीआरपीसी में प्रावधान है, जेल जाएगा, इसके समय के लिए जाएगा, उसको फांसी होगी, उम्र कैद होगी। ये बुलडोजर की धारा तो ये तब लेकर आए हैं और अपनी सुविधा अनुसार उसका उपयोग करते हैं। मुझे बड़ी आपत्ति इस बात पे। विश्वास, मेरे राजनीतिक दोस्त, एक मिनट बैठिए आप एक मिनट, मैं देखिए, मैं आप इसलिए नहीं कहूंगा, देखिए हमेशा जब सवाल वहां से आता है, मेरी बात सुन लीजिए, अब मुझे मुद्दे पे बात कर लेने दीजिए। सवाल वहां से आता है तो फिर सीधे आरोप। ये पढ़िए क्या लिखा है। मैं गुजरात में ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कर रहा हूं, मुंद्रा पोर्ट में पिछले 6 महीने में 50,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा अमित जी निवेदन ये है, बहुत संक्षिप्त में मैं आप जवाब, क्योंकि मैं समय समाप्त भी हो रहा है, मेरा सिर्फ मैं संक्षिप्त में ही जवाब दे रहा हूं। विश्वास हमारे सिर्फ पॉलिटिकल संबंध नहीं है। जब ये विधायक नहीं थे और मैं विधायक नहीं था, तब से हम एक दूसरे को जानते, अच्छी मित्रता भी है, और मैं इनको एक बड़ा जिम्मेदार मंत्री मानता था। ताली तुमने जल्दी बजा दी। मतलब मैंने बात सुन लीजिए, आपने बहुत जल्दी ताली बजा दी। दर्शक है आप। मैं इनको एक बहुत जिम्मेदार मंत्री मानता था, पर मेरा कहना यह है, एक भ्रष्टाचार से बड़ा अपराध। शोर ना करें, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं सेशन के बीच में शोर नहीं चाहूंगा। आप चाहते हैं कि मैं उस तरीके से बोलूं कि जहां पर फिर मेरी आवाज सुनाई देगी और मेरी आवाज का सुर इतना जाएगा, मैं नहीं चाहता हूं। अच्छे सुन लेते हैं। भ्रष्टाचार से बड़ा अपराध क्या होता है? हमारे माननीय मंत्री महोदय ने एक जवाब दिया कि 3 मंत्री मुख्यमंत्री रात भर इसलिए नहीं सोए कि डैम टूट जाएगा। यही तो सवाल है कि डैम क्यों टूट जाएगा जब 300 करोड़ रुपए खर्च। चलिए, अब चूंकि सेशन का टाइम बहुत आपकी और आपने उसको छुपाने के लिए बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चला, अरे खड़े रहता तो ढह जाता और आपका भ्रष्टाचार लोगों के सामने आ जाता। तो इसलिए आप बुलडोजर का उपयोग करते हैं जब आपको टॉपिक डाइवर्ट करना होता है। तरुण जी देखिए, आप उनको बोलने दीजिए, सत्र का समय समाप्त हो रहा है। बहुत संक्षेप में विश्वास जी, संक्षेप में। देखिए, तरुण भाई ने कहा कि ये कानून जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने बोला भी, जवाब ले लेते हैं, हम जवाब ले लेते हैं, बोलने नहीं दे रहे भाई। और इन्होंने ये बोल दिया कि बुलडोजर किस कानून के तहत चल रहा है। मध्य प्रदेश में नगरीय विभाग को लेकर एक एक्ट है जिसको नगर पालिका अधिनियम कहते हैं हम। उसमें स्पष्ट प्रावधान है, यदि किसी की इलीगल प्रॉपर्टी है, यदि अतिक्रमण है, तो उसको डिमोलिश किया जाएगा, उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ये कानून है भाई,
ये कानून अब हमें एक सेकंड का टाइम बहुत जरूरी है। दिस इज मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा सत्र में दिस इज नॉट फेयर। नाउ दिस इज फेयर फॉर यू दिस इज नॉट फेयर। आई कैन you lie. So now I have to give your answer. I have to give you back what you do. This is not fair. मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा सत्र में सरकार ने कानून पास किया कि मध्य प्रदेश में कोई भी अवैध कॉलोनी नहीं है। मध्य प्रदेश में कोई भी अवैध निर्माण नहीं है। चलिए माननीय मुख्यमंत्री मैं आपको देखिए सेशन में तरुण जी अपने बात की सेशन में मेरे पास 30 सेकंड ऐसा नहीं हो। इनको चुप करिए ना। मैं तरुण जी से मैंने कहा मैंने आग्रह किया मुझे बड़ा आश्चर्य है 30 सेकंड आश्चर्य इनकी डिग्री पर ये कह रहे हैं कोई इलीगल कॉलोनी नहीं है, इसका मतलब अतिक्रमण नहीं है। आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई इलीगल नहीं है भैया। किसी का घर गिरने नहीं देगा। इलीगल कॉलोनी अलग बात है, अतिक्रमण अलग बात है। पूरा इलीगल कॉलोनी अलग बात है, अतिक्रमण अलग बात है। अब हम जवाब ले लें। अतिक्रमण में क्या अंतर है? अरे इलीगल कॉलोनी अलग बात है। इलीगल और अतिक्रमण में क्या तरुण जी आप थोड़ा पढ़ लिख के आओ। विश्वास पढ़ लिख के आओ। आपको जरूरत है। आप पढ़ लिख के आओ। मुझे मालूम है सेशन का 30 सेकंड मुझे फिर मालूम है। विश्वास जी बहुत संक्षिप्त में बहुत संक्षिप्त मैं ये कह रहा हूँ देखिए मैंने फिर कहा कि एक कानून हमने बनाया जिससे हम प्रिवेंशन और रिकवरी करते हैं पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी की। उसके साथ ही यदि किसी ने अपराध किया, उस अपराधी का यदि कोई इलीगल या अतिक्रमण है उसको डिमोलाइज करना ये कानून के तहत है। ये कह रहा है इलीगल कॉलोनी इज अ डिफरेंट थिंग और अतिक्रमण अलग चीज है। चलिए आपका जवाब बिना समय बात कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं मकान बने कहां बने जो भी गलत है, जो माफिया है, जो अनैतिक है उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा, माफी के साथ ताकत के साथ चलेगा। अगर वो भाजपा में शामिल हो जाएगा तो उसको क्लीन चिट मिल जाएगी, वो गंगा नहा जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपनी बात रखी। तरुण भानोट जी आपका आने के लिए बहुत धन्यवाद। विश्वास सारंग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।
पूरा भरोसा है कि आप लोग अपने इर्द गिर्द की कुर्सियों पर बैठे प्रतिभाशाली दोस्तों से जो बातचीत कर रहे होंगे वो बहुत जरूरी होगी, पर मुझे ये भी भरोसा है कि आप लोग भाई साहब चाय पियेंगे क्या? आप भाई साहब चाय लेंगे? चाय पियेंगे क्या? नहीं पियेंगे? तो मैंने कहा जलपान के सवाल भी यहीं से पूछ लिए जाएं। जी, अगर आप लोग बैठ जाएं तो हम लोग अगले सत्र की शुरुआत करें। जब ये अगला सत्र पूर्ण होगा तभी आखिरी सत्र के लिए जो उत्साही राजनीतिक कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं या जमे हुए हैं, है ना, उस सत्र की शुरुआत होगी। बहुत बढ़िया फोटो आ रही है भाई साहब, सामने देखिए ना, थोड़ा हमारी तो बात सुन लीजिए, हमारी भी फोटो खींचेंगे। इंडिया टुडे के इस कार्यक्रम के सेकंड लास्ट सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कोई किसी भी फील्ड में हो, चाहे उसके पांव घुटनों तक मिट्टी में धसे हों धान की रुपाई के लिए, या वही घुटने किसी मैदान में करतब दिखा रहे हों ताकि माथे का पसीना बहकर पांव तक पहुंच सके, या उस पसीने के उस भागदौड़ के पीछे की जो हसरत है कि हमारे हिस्से की हकीकत खूबसूरत हो, चाहे वो खूबसूरती हमें सत्ता के गलियारों में नजर आ रही हो, ब्यूरोक्रेसी पर टके राजचिन्ह में नजर आ रही हो, स्कूलों में, कॉलेजों में, कैंटीन के कहकशों में नजर आ रही हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिंडर में तलाशती खुशियों में नजर आ रही हो, सीवी में कौन सी चीज बोल्ड लेटर्स में लिखें इसमें नजर आ रही हो, उन सब नौजवान तबीयतों का, उत्साहों का उत्सव इस सत्र में मनाया जाएगा। मैं एक एक करके मंच पर मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा में चार चांद जड़ने वाले, जिनको अंग्रेजी की भाषा में अचीवर कहते हैं, ऐसे कुछ नौजवान लड़के लड़कियों को बुलाऊंगा और समझने की हम कोशिश करेंगे कि वो क्या है जो इस प्रदेश को और इस पीढ़ी को खास बनाता है। मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करूंगा नए नवेले नेताजी, और जो एक अटल सत्य सा बना दिया गया है कि राजनीति में कामयाब होने के लिए संसाधन संपन्न होना बहुत जरूरी है, उस चीज को धता बताते हुए अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी अपनी पृष्ठभूमि का जिक्र कर रहे थे, और हमारे अगले मेहमान जो कांग्रेस से हैं उनके बारे में भी वही बात कही जा सकती है। छिंदवाड़ा के युवा मेयर विक्रम सिंह के जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर। हमारे दूसरे अतिथि हैं, दूसरे पैनलिस्ट हैं सत्र के, वो जो जब मिडफील्ड पर करतब दिखाते हैं तो हम सांस रोके रहते हैं, जब वो विपक्षी गोल की तरफ धावा बोलते हैं तो हम उम्मीदों का जाप करने लगते हैं, जब वो डिफेंस लाइन की तरफ लौटते हैं तो हमें लगता है कि गेंद कब मिड लाइन के इस तरफ फिर आ जाए। भारत की हॉकी टीम के प्लेयर, ओलंपियन विवेक सागर जी, हमारी तीसरी मेहमान वो हैं जिन्होंने एक ऐसा कायदा, एक ऐसा पेशा चुना जिसमें बातों के अलावा भी बहुत कुछ करना होता है, जिसमें गांधी जी को सिर्फ 2 अक्टूबर के रोज याद नहीं किया जाता है, बल्कि स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का, खादी का जो मंत्र था वो हमारे जमाने में भी रेलेवेंट बना रहे, इसकी फिक्र करते हुए उन्होंने खादी की डिजाइनिंग के लिए काम किया, अभी भी कर रही हैं। उमंग श्रीधर डिजाइन्स की फाउंडर उमंग श्रीधर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेसी अतिरिक्त ताली बजा सकते हैं, कांग्रेसी परिवार से आती हैं। जी। और हमारे चौथे मेहमान वो जिनके
प्रतिष्ठान के जिक्र के बिना भोपाल का जिक्र अधूरा रहता है, और जिन्होंने अपनी वाइल्ड लाइफ की दिलचस्पियों को अपने प्रोफेशन के साथ जोड़ दिया है, जहांनुमा पैलेस होटल के डायरेक्टर एली राशिद साहब, आइए सब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस सत्र का विषय है बीइंग यूथ इन मध्य प्रदेश, व्हाट द यूथ वांट। बड़ा मुश्किल सवाल है, हर पीढ़ी में पूछा जाता है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। बताइए मेयर साहब, आपका माइक वो बाईं तरफ रखा है, क्या चाहता है मध्य प्रदेश का नौजवान? अभी तो पहले आपने इस चैनल में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। और मध्य प्रदेश में जो युवा है अभी तो सिर्फ रोजगार चाह रहा है, जो वो मेहनत कर रहा है, जो इतने वर्षों से अपनी लगन के साथ मेहनत कर रहा है, लेकिन सरकार उसके मेहनत पर पानी फेर रही है। और दिन ब दिन एक युवा की, एक विद्यार्थी की जो उम्र बढ़ते जा रही है, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा, आज वो इधर उधर भटक रहा है। तो सबसे पहली नीड अगर मध्य प्रदेश में किसी चीज की है तो वो रोजगार की है। विक्रम, एक नीड दर्शकों की ये भी है कि वो आपकी पृष्ठभूमि के बारे में और आपकी चुनावी सफलता के बारे में जाने। तो मैं चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश से बाहर के दर्शक हैं, जो इस वीडियो को, इस सत्र को देखेंगे, आप बताएं कि आपकी पॉलिटिक्स की शुरुआत कैसे हुई, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई। मध्य प्रदेश के लोग खूब वाकिफ हैं आपकी सफलता से। और लाख टके का सवाल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जाना चाहेंगे, टिकट कैसे मिल जाता है? देखिए, बड़ी दिलचस्प सी कहानी है, और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मेयर बनूंगा। और जिस लड़के का बचपना दूरदर्शन चैनल देख के, शक्तिमान और द डिटेक्टिव करण देख के बीता है, नीचे जमीन पर टीवी देख के बैठा है, वो आज इंडिया टुडे जो सबसे देश का नामी गिरामी चैनल है, उसमें अपनी बात रख रहा है। ये सपने से कम नहीं है, लेकिन इसके पीछे की एक कहानी है। मैंने कभी राजनीति में आने का सोचा नहीं था। हाँ, एक समाज सेवा का एक जज्बा था, एक जुनून था, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से निकल के आता था। बहुत सारी उपेक्षाएं मेरे परिवार ने झेली, तो मैं बचपने से देखता था। तो एक लगता था कि यार कुछ अच्छा करना है जिससे लोग अच्छा कहें। तो मैं धीरे धीरे समाज सेवा में जुड़ता रहा। फिर मैं जब कॉलेज में आया तो मैं एनएसयूआई से जुड़ा, क्योंकि माननीय कमल नाथ जी और नकुल नाथ जी छिंदवाड़ा के परिवार के मुखिया हैं और देश और प्रदेश के आइडियल हैं। तो मैं उनकी कार्यशैली से प्रभावित था, तो मैं एनएसयूआई ज्वाइन किया। फिर मैं यूथ कांग्रेस में रहा, लेकिन मेयर बनने का सपना मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। और टिकट मैंने कभी कमलनाथ जी से नहीं मांगी, क्योंकि इतना बड़ा सपना नहीं था। लेकिन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के पेज से जब सूची डली तो सांसें थम गई। मतलब कि छिंदवाड़ा से विक्रम आ के मुझे ऐसा लगा रहा कि झूठ है, कई बार ऐसा लगे कि फेक तो नहीं है। अच्छा। और निश्चित तौर पर एक संघर्षों से निकल कर आया हूँ, क्योंकि मैं, जैसा आप सभी को पता है कि स्कूल जाने के लिए लगभग 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलते थे। बैग नहीं होता था, कापी होता था तो पेन नहीं होती थी, किताब नहीं होती थी। मम्मी आंगनबाड़ी में थी, तो एक महीने में उनको 438 रुपये पेमेंट मिलता था। पिताजी किसान हैं, तो इतने कम पैसे में गुजारा करना संभव नहीं था। तो निश्चित तौर पर हमने कई बार इच्छाओं को मारकर, और हमेशा इच्छाओं को मारकर, पल पल इच्छाओं को मारकर अपने सपने को पूरा करने का हौसला था। और वो हौसले में पंख माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुल नाथ जी ने दिया, और उस पर मोहर लगाने का काम छिंदवाड़ा की जनता ने किया। चलिए, आएंगे इस छिंदवाड़ा मॉडल पर, क्योंकि सवाल ये भी है कि कांग्रेस छिंदवाड़ा मॉडल को प्रदेश में रेप्लिकेट क्यों नहीं कर पा रही है। विवेक, इटारसी में आप रहते हैं। मध्य प्रदेश का बड़ा एक जमाने में नाम था हॉकी की दुनिया में, आज भी है आपकी वजह से, पर रिप्रेजेंटेशन अब थोड़ा सा कम है, ये भी एक हार्श फैक्ट है। मैं विवेक की कहानी जानना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग जिस जमात से आते हैं, जिस पीढ़ी से, तो हमारे यहाँ तो बल्ला या हॉकी स्टिक, एक तो जिस दिल्ली में मैं रहता हूं बड़े दूसरे कारणों से उठाई जाती है। भाई साहब, आपने सही वजह से उठाई। तो आपने जब पहली मर्तबा हॉकी स्टिक उठाई तो किसी अड़ोस पड़ोस के अंकल ने कहा नहीं, बेटा ये सब क्या कर रहे हो, एकदम बीटेक करो, एमबीबीएस करो, जो हम लोगों को जरूरी किस्म की धमकियां दी जाती हैं कई लोगों की नजर में, मेरे हिसाब से गैर जरूरी, खेलना जरूरी है। आपकी शुरुआत कैसे हुई हॉकी में सर? सर आपने राइट बोला, क्योंकि आजकल स्पोर्ट्स को तो काफी बढ़ावा हो गया, लेकिन पहले के जमाने में इतना नहीं था। ऐसा आपने बोला कि दूसरे लोग आपको टॉर्चर टाइप का एक तरीके से बोल सकते हैं कि आपको बढ़ावा नहीं दे रहे, क्योंकि उस टाइम पे इतना स्कोप नहीं दिख रहा था स्पोर्ट्स में।
क्योंकि हर माँ बाप अपना सोचता है कि एक इंजीनियर बने बेटा, डॉक्टर बने, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में अपने बच्चे को फ्यूचर नहीं देख पा रहा था इसीलिए। तो मेरा भी यही था कि मेरे पापा टीचर हैं और एज अ टीचर वो मुझे इंजीनियर बनाना चाहेंगे। और मेरा लेकिन एक जज्बा था, एक अंदर से था कि नहीं, उस टाइम मुझे लगता था कि खेलना है बस, ये नहीं था कि मैं इसी में आगे बढ़ूंगा। तो मैं अपने सीनियर को देख के सीखा और एक अंदर से बोलते बिलीव, जो हम लोग अपने ऊपर करेंगे तो कुछ भी चीज़ आसान हो सकती है। तो वो चीज़ मैं अभी कंटिन्यू करता आ रहा हूँ, कंटिन्यू पहले भी किया हो, जिस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। एक तो ये खिलाड़ियों से सवाल पूछने का एक नुकसान होता है, नेता से एक वाक्य का सवाल पूछो वो निबंध सुनाता है, खिलाड़ी से निबंध बड़ा सवाल पूछो तो वो एक वाक्य में जवाब देता है। एक बात बताइए, एक आम भारतीय का, खासतौर पर जो नई पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी ने तो बलबीर सिंह साहब और सब लोगों को देखा, नई पीढ़ी हॉकी के बारे में जो समझ पाई है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, वो चक दे इंडिया देख के समझ पाई है। तो सच्ची मुच्ची में ऐसा होता है कि एक बड़े मैच के पहले कोच आएगा, 70 मिनट टाइप की एक स्पीच देगा, क्या होता है? या विद्या मेरी तरफ देखो विद्या, ऐसा कुछ होता है? नहीं, आई थिंक टीवी में दिखाया है वो एक अलग है और रियलिटी में भी अलग है, लेकिन कुछ सिमिलर होता है कि एक सपोर्टिंग का, जैसे उसमें दिखाया टीम बॉन्डिंग का, एक जब आपने देखा है कि चक दे इंडिया में जब एक फाइट करती है लड़की लड़के से तो वो एक साथ एकजुट हो जाते हैं। तो हर टीम स्पोर्ट्स में वो चीज़ है। और ऐसा आपने एक और पूछा कि लाइक क्या वो कोच बोलता है, और हाँ, मतलब जैसे ओलंपिक के मेडल का वो मैच था, उसके पहले क्या बात हुई आप लोगों की? ये जैसे 3rd पोजीशन का मैच था हम लोग का, लाइक वो एक था कि या जीतेंगे तो हमारे हाथ में कुछ आएगा, नहीं जीतेंगे तो हम जो 40 ईयर से कंटिन्यू जो इतिहास चला आ रहा है वही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो उस टाइम पे कैप्टन हमारे जो मनप्रीत सिंह है, उन्होंने बोला कोच ने काफी कुछ बोल चुका था, लेकिन उनके बाद हम लोग को करना था, क्योंकि फील्ड पे हम लोग को खेलना है। कोच एक मोटिवेट कर सकता है एक हद तक, लेकिन हम जब तक खुद से सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे हम लोग इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे और अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो वही था कि जो कुछ करना है हमें चेंज करना है ग्राउंड के अंदर, और वो टाइम कम बचा, 30 मिनट बचे थे उस टाइम आई थिंक, क्योंकि हम लोग 3-2 से लीड कर रहे थे और उस 30 मिनट में जो करना था वो हम ही को करना था। 70 मिनट 30 मिनट में बदल गए थे। या अच्छा, टीम में पंजाब के खूब सारे प्लेयर्स हैं। हाँ जी, काफी प्लेयर है। एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, श्रीजेश कंप्लेन कर रहे थे कि सब पंजाबी गाने बजाते रहते हैं। आपकी भी पंजाबी अच्छी हो गई होगी? हाँ, समझने काफी लगा हूँ और बोलने भी काफी अच्छा सीख गया हूँ काफी। अच्छा, उमंग, आई विल कम टू यू। खादी को कई लोग या तो बहुत आउटडेटेड चीज मानते हैं, या नेताओं के खाते में लिख दी गई चीज मानते हैं, या बहुत महंगा शौक मानते हैं। हाउ डू यू डील विद सच स्टीरियोटाइप्स? तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ बुलाने के लिए। खादी में जब मैंने काम करना चालू किया था तो लोगों ने बोला था कि आई मीन मैं बोलना नहीं चाहती, बट हाँ, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई हो और अब कोरियों का काम करोगी, तो कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटाइप था कि मेरी दादी, मुझे याद है हमारा घर करीबन 300 साल पुरानी बाखर है एक बुंदेलखंड में, और उस बाखर में ऐसे लेवल ऑफ एंट्रेंसेस हैं, सो सर्टन कुछ लोगों को कहीं तक आने का की इजाजत है, कहीं किसी को आंगन में आने की इजाजत है, कोई अंदर घर में एंटर कर सकता है। तो जात पात और छुआछूत और महिलाएं और पुरुष और ये सारी चीजें मैंने मतलब बचपन से देखी। तो 92 में पैदा हुए, बट 1947 में जीने का मौका मिला। मेरी दादी 93 साल की हैं, तो वो सारी चीजें जब मैं गांव में देख रही थी और मुझे ऐसा लगता था कि इसको बदलने की कोशिश किसी को तो करनी पड़ेगी। तो मुझे मौका मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए तो क्योंकि थोड़ा नेतागिरी अंदर खून में थी, तो वहां जाके और ज्यादा वो निकल के आ गई। और एक तो नेतागिरी, दूसरा बुंदेलखंड। जी बिल्कुल, तो वो जो दोनों चीजें जो बाहर निकल के आई, और फिर मुझे वहां पे देश की सच्चाई समझ में आई कि सिर्फ गांव में नहीं, बड़े शहरों में किस तरीके की छुआछूत और डिफरेंसेस हैं। तो इसको मिटाने का काम कैसे किया जा सकता है। फिर गांधी से जुड़े, गांधी की विचारों से जुड़े, और वहां जाके मुझे खादी मिली। और मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं गांव में पैदा हुई हूँ, गांव में पली बड़ी हूँ, प्रिविलेजेस हैं, बट उस प्रिविलेजेस में मेरी चॉइस क्या हो सकती है उसके बारे में मैंने फोकस किया। और 21 साल की उम्र में, 21 साल की हुई भी नहीं थी, मैं कॉलेज से जस्ट लौट कर आई थी और मैंने अपना एनजीओ स्टार्ट कर दिया था। तो लंदन जाने का मौका था क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सो सारी चीजें थी, बट मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक मेरे गांव को मेरी ज्यादा जरूरत है, लंदन में तो मेरे जैसे बहुत से होंगे।
तो इस चॉइस के साथ वापस आए, गांव में महिलाओं के साथ काम करना चालू किया। मेरा काम खादी को प्रमोट करना इतना ज्यादा नहीं है, टू बी फ्रैंक। मेरा जो खादी की सोच है उसके साथ जुड़ाव ज्यादा है कि ये महिलाओं को काम देता है, गांव में रह रहे लोगों को काम देता है, और ऑब्वियसली क्योंकि वो काम निरंतर रहना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए नई डिजाइन्स बनाना, ना मैं डिजाइनर हूं ना मैं टेक्सटाइल बैकग्राउंड है मेरा, तो मेरे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कमिटी IIM अहमदाबाद से मुझे पहला इन्वेस्टमेंट मिला था। मैं सिर्फ 24 साल की थी और मैं एक कमेटी के सामने बैठी थी, और वहां पे जितने भी लोग थे उन सबकी लाइफ का एक्सपीरियंस मेरी उम्र से ज्यादा था। तो उन्होंने कहा था कि वील गिव यू मनी बट ओनली इफ यू डिसाइड टू मेक अ टेक्सटाइल कंपनी आउट ऑफ अ हैंडलूम खादी टेक्सटाइल कंपनी। आई सेड आई डू इट। तो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम कि मुझे खादी के नाम पे इन्वेस्टमेंट मिला था, पहला क्राफ्ट इन्वेस्टमेंट था इंडिया का। और उसके बाद बहुत सारे लोगों से जुड़ने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला, बट मेरे लिए खादी फैशनेबल ज्यादा, सोच ज्यादा है, और मैं उसी सोच पे ज्यादा काम करती हूँ। इंटरेस्टिंग। एली, आई कम टू यू। एक ऐसे परिवार में पैदा होने के अपने चैलेंजेस भी होते हैं और फायदे भी, जो जिनका एक लेगेसी बिजनेस है ना। आप जहानुमा के पूरे इस एम्पायर से जुड़े हुए हैं, पर आप उसमें और 2 कदम आगे चले गए। आपने अपने वाइल्ड लाइफ के शौक को अपने प्रोफेशन में बदल दिया। थोड़ा उस जर्नी के बारे में बताएं। वैसे और ये भी बताइएगा, जैसा हम लोग, अगेन मैं फिल्मों का रेफरेंस देख रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पता होती या तो किताबों से या फिल्मों से, तो ऐसे जो बहुत प्रतिष्ठित व्यापारिक परिवार होते हैं उसमें ऐसा होता है क्या, एक अमिताभ बच्चन टाइप के पापा जो बेटा दादाजी गए थे, तुम भी जाओगे वहां कॉलेज में पढ़ने, ऐसे होता है क्या? और वो प्रेशर रहता है कि लेगेसी है उसी को आगे बढ़ाना है, या चिल टाइप का रहता है थोड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। नहीं, ऐसा तो कभी कभार होता भी है, बट लकीली मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज खुली हुई थी, और मैं एक्चुअली भोपाल से ही हूँ, मगर मेरा चाइल्डहुड जो था, मैं बोर्डिंग स्कूल में बाहर पढ़ा था, फिर कॉलेज भी बाहर था, मगर एक कॉलिंग थी वापस मध्य प्रदेश आने की। जब मैं कॉलेज में था, कनाडा में वहाँ पढ़ा था, तो एक ऐसी, मतलब वहाँ पर हर चीज़ मतलब हो चुका था, इन द सेंस के पूरा डेवलपमेंट was almost complete, but in India the opportunity थी, especially मध्य प्रदेश में, and no better place than Madhya Pradesh for wildlife, which was my passion from childhood. So having this background of hospitality, जहानुमा होटल, मैं अपनी फैमिली को ज्वाइन करा एक वेंचर खोलने के लिए, जो मड़ई में सतपुरा टाइगर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ लॉज है। तो इट वाज ऑलमोस्ट मैरिंग a profession, a legacy business of hotels with the passion for wildlife. But apart from the passion, it was also, while I was studying, I studied economics, तो उसमें एक मुझे इंटरेस्ट बना रूरल डेवलपमेंट का। तो ये रूरल बेस्ड टूरिज्म जो है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और टूरिज्म आउटसाइड द सिटीज, ये एक टूल बन गया रोजगार देने के लिए। जैसे विक्रम जी बोल रहे थे कि अपने मध्य प्रदेश के युवा का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट रोजगार है, तो जब हम लोग मड़ई में, और अब हमारा दूसरा लॉज है बैतूल ज़िले में, वहाँ पर काम करते हैं, तो 90% लोग जो हैं पूरे लोकल हैं, और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर आदिवासी। तो एक्चुअली इट्स also a tool for conservation as well, tourism, which is a passion for me to communicate this. Actually हमारे देश में एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि we don't see tourism as a conservation tool. So that is something which also I wanted to do, and it's very encouraging. मतलब टूरिज्म एक अपॉर्चुनिटी देता है आदिवासी क्षेत्रों में कि इतना हाई लेवल ऑफ एजुकेशन ना होने पर भी दे कैन पार्टिसिपेट इन इट वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ। तो ये सब जो मिक्स थे, मेरा जो एक्सपीरियंस था हॉस्पिटैलिटी में और पैशन था, वो सब इकट्ठा करके मैंने ये सब इंटरेस्टिंग।
एक सवाल पहले से ही बता देता हूं ताकि सब लोग सोच के रखें। मैं आप लोगों से आपकी जिंदगी का एक वाकया जानना चाहता हूं ताकि जो नौजवान या नौजवान तबीयत के लोग हैं वो उससे कोई सबक सीख सकें। आपके लिए वो सबसे बड़ी लर्निंग रही हो ऐसी घटना। अभी मुझे थ्योरी नहीं चाहिए। मंच पे ना हम लोग, कई लोग, आप लोग नहीं करेंगे, नौजवान लोग तो थोड़ा प्रैक्टिकल बातें ज्यादा करते हैं, बहुत हाई फाई बातें बोल देते हैं हम लोग स्टेज पे। ऐसा होना चाहिए जैसे वो स्कूलों में लिखा होता है सदा सत्य बोलो, नीचे नहीं लिखा होता है कि जब आपको कन्वीनियंट हो तब बोलो, जो कि हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं। एक घटना जिसने आपकी सोच को बहुत बदल दिया हो, जो जिससे और भी लोग सीख सकते हो। निश्चित तौर पर मैंने कैटरिंग का भी काम किया हूँ, कैटर्स का, और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कई बार अपमानित होने का अवसर भी मिला, लेकिन हमेशा एक धैर्यता के साथ आगे बढ़ना। कोई घटना आप विक्रम स्पेसिफिक बता सकें? कई बार जिनके घर पे शादियां में हम जाते थे, तो जो जिनके घर के काम करने जाते थे तो उनमें एक अलग एटीट्यूड होता था कि वो हमारी मजबूरियां नहीं समझते थे। उनको लगता था कि ये एक सिर्फ वर्कर है और इनमें भावनाएं नहीं है, तो डांटते फटकारते थे। तो ऐसा लगता था कि मुझे ऐसे बहुत सारी कम्युनिटी है, ऐसे बहुत सारे निचले स्तर के लोग हैं जो जिनके लिए काम करना चाहिए। तो हमेशा ये विक्रम क्यों है? क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान की समस्या है कि जो लोग हमें सर्व करते हैं, हमारी जिंदगी को आसान करते हैं, उनके साथ हम बड़ा प्रभुताई का व्यवहार करते हैं, एज इफ वी आर देयर मास्टर। जबकि होना तो उल्टा चाहिए, हम कृतज्ञ हों उनके कि वो हमारी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। भाई हमारे घर में शादी है, कोई आके अगर लड्डू बना रहा है या खाना बना रहा है तो आई शुड बी ग्रेटफुल ना। पैसा देके उसका आत्मसम्मान तो नहीं खरीद लिया ना। तो ये क्यों है हम भारतीयों में? आप तो नेता हैं, आपको पूरी पीढ़ी को संवारना है। निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों से अब निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि ठहराव कहीं पे भी नहीं होता है और लोगों में आने जो नई पीढ़ियां हैं उसमें आजकल हम देखने को मिल रहे हैं कि आधुनिकता के दौर पे इतना आगे बढ़ जा रहे हैं कि उनमें संस्कारों के पीछे, थोड़ा संस्कारों के लिए पीछे रह जा रहे हैं। तो अब अपनी आधुनिकता के साथ साथ अपने संस्कारों पे भी उस पर ध्यान देना चाहिए और इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, समानता की बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल जी। मेरी तरफ बिफोर यू आंसर, आपने कभी मैदान के बाहर भी हॉकी चलाई है? क्या? हाँ चलाई है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ विवेक ने कभी मैदान के बाहर भी हॉकी चलाई है? नहीं। थैंक गॉड। वो चलाने का मौका नहीं आएगा। मेरी तरफ से यही कि कीप गोइंग, लाइक कभी भी रुकिए मत, क्योंकि अगर आप कुछ अचीव कर लेते हैं या नहीं भी कर पाते हैं तो भी आगे बढ़ते रहिए। जैसे सुनाना पड़ेगा गुरु। बिल्कुल, उसके बाद ही सुनाऊंगा, बताने के बाद यार। जैसे मेरे साथ उदाहरण के तौर पे मुझे 2015 में एक कॉलर बोन की इंजरी हुआ और ऑपरेट हुआ था। उसमें मुझे रिकवरी में 6 मंथ लगे थे। तो 6 मंथ के बाद दोबारा से 1 महीने के बाद जब ग्राउंड पे आया, अगेन मुझे पेट का इन्फेक्शन हुआ जिसमें मुझे तकरीबन 8 महीने लगे। तो उसके बाद मैं इंटरनेशनल हॉकी में आया। तो ये मेरी एक अंदर से बिलीव था और यही था कि मैं रुकूंगा नहीं। तो ये चीज आज की पीढ़ी में मुझे लगता है कि ये चीज आनी चाहिए उनको, कि अगर आप किसी फील्ड में पीछे हो जाते हैं, लाइक नीचे गिर भी जाते हैं, तो भी हार ना माने, बस आगे बढ़ते जाए, कहीं ना कहीं आप जरूर मंजिल पे पहुंचेंगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के लिए इंजरी से उबर के आना बहुत मुश्किल रहता है। तो पर अभी यार बड़ा अच्छा सा लगता होगा वो मेडल मतलब ओलंपिक तो काफी हैवी मेडल है, और मेडल के अलावा वजनी, क्योंकि मेरे पास कॉमनवेल्थ का भी और एशियन गेम्स का भी मेडल है, लेकिन ओलंपिक का जो मेडल है वो काफी हैवी और एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। और बहुत संभाल के रखना पड़ता है। बिल्कुल। एकदम तिजोरियों में? नहीं, तिजोरियों में नहीं, अगर लाइक घर में सजाना भी जरूरी है क्या, ताकि बाहर से जो आए वो देख भी तो सके। वो आते लोग बोलते होंगे ओलंपिक वाला मेडल दिखाओ। या डेफिनेटली। वेरी नाइस। उमंग? तो मैं बहुत ही ये जिंदगी सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए जीती हूँ। तो मेरे पास, मैं कहानियां कहना मुझे पसंद भी है। तो जी, तो मेरे साथ कई ऐसे वाक्य हुए जो विच लेड टू वेयर आई एम टुडे, बट उसमें से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने एक पूछा है बट मैं 2 की जिक्र करूंगी।
एक तो जो निर्भया रेप कांड हुआ था दिल्ली में, और मैं सेम डे, क्योंकि मैं सिलेक्ट सिटी वॉक के बहुत ही पास रहती थी, मैं भगत सिंह से पढ़ी हूँ तो शेख सराय में रहती थी, और वो सिलेक्ट सिटी वॉक से बाहर निकल के वो बस ली थी और वो वहां से निकली फिल्म थी देखने के बाद। हाँ, तो मुझे मतलब वो एक चीज ने इतना ज्यादा झंझोड़ दिया था कि मतलब इतने प्रिविलेजेस के बाद किसी महिला के साथ इतना गलत कैसे हो सकता है। तो मैं करीबन 1 महीने सो नहीं पाई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे पेट में दर्द होता था और बहुत बहुत ही सिवियर कंडीशन हो गई थी। और उसके बाद मुझे I was dating someone at that time, and then my boyfriend said, "You will really become mad like this. तो तुम कुछ कर सकती हो क्या? You are already active in so many places." तो मैंने दिल्ली पुलिस के साथ एक नुक्कड़ नाटक डायरेक्ट किया था और करीबन 18-19 लोकेशंस पे हमने पूरे दिल्ली में जा के वो नुक्कड़ नाटक किया था। तो कहीं ना कहीं वहाँ वो मेरा एक वेंट आउट हो गया था कि मैंने कुछ किया, मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उसके लिए, बट वहाँ से एक जो चिंगारी लगी कि महिलाओं के लिए कुछ करना है, और स्पेशली गाँव में रह रही महिलाओं के लिए, क्योंकि मुझे इससे भी बदतर रेप कांड पता है जो हमारे बुंदेलखंड के इलाकों में हुए हैं, जिनके बारे में कोई बात भी नहीं करता। तो मुझे ऐसा लगा कि I come from a family of privileges, and this is a choice I want to make कि मैं अपनी लाइफ अपने गांव में रह रही महिलाओं के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ। पर अब महिलाओं के साथ काम क्या करेंगे? तो मैंने ट्रैवल करना चालू किया और मैं एक बार ग्वालियर में एक कत्तिन के घर में, जो चरखे पे धागा बनाती हैं, उनके घर में बैठी हुई थी, और उनका घर शायद इस स्टेज के बराबर ही होगा, इससे छोटा होगा, और एक कमरा था जहाँ पे 2 चरखे रखे हुए थे और दीवार पर कुछ सर्टिफिकेट टंगे हुए थे। और मैं उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछ रही थी कि आप खादी में काम क्यों करती हैं, कब से कर रही हैं, ऐसा वैसा। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई और उन्होंने फिर मुझे ऐसे दीवार पे दिखाया और उन्होंने कहा कि मैं खादी में काम सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि वो आप जो देख रही हैं। एंड देन आई लुक्ड एट इट एंड इट वाज अ नेशनल अवार्ड। बोलती मैं इट वाज अ नेशनल अवार्ड। ओके, शी सेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने बोली थी कि मैं अपने इन 2 हाथों से अगर किसी के लिए ताजमहल भी बना दूंगी तो मुझे वो नेशनल अवार्ड नहीं मिलेगा। और उस दिन मुझे समझ में आया कि महिलाओं को सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं है, महिलाओं को आइडेंटिटी की जरूरत है जो वो लैक कर रही हैं। उस छोटे से घर में 2 चरखों के साथ बैठ के भी वो इतना प्राउड फील कर रही हैं अपने व्यवसाय से जुड़कर। तो वो उस दिन मुझे रियलाइज हो गया था, बस यही है जो मुझे पूरी लाइफ करना है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग, उमंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। एली? तो आई डोंट थिंक ऐसी कोई घटना हुई है, मगर जो चैलेंजेस हैं रूरल एरिया में काम करने के, वो जैसे मैं पहले भी बोल रहा था कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज अनट्रेन। तो उनको ट्रेन करने के लिए टू गिव अ वर्ल्ड क्लास experience what guests are coming to us for, that is the major challenge, but we have to keep going, and that is our mandate also, to actually give the opportunity locally. But I remember one story, just to give you example, के हम लोग काफ़ी experiential tourism करते हैं। तो जैसे जब गेस्ट सफारी से आ रहे थे पार्क के बाद, we set up a surprise tea set up for the guests. It was a birthday of a guest and we thought we'll give them a surprise. So most of our staff are locally sourced and trained. तो उन लोगों ने पूरा setup set करा. It's a surprise. They go into the thick bush. Guest is supposed to have a big welcome there. और कुछ झाड़ियों में आवाज आई और सारे लड़के वहाँ से भाग गए। तो गेस्ट पहुंचे और वहाँ कुछ था ही नहीं। तो और फिर पता पड़ा कि वहाँ पर एक्चुअली ये कहानियों के वजह से लोग भाग गए। वहाँ रीछ बहुत आते थे, भालू बहुत आते थे, मगर एक्चुअली उस दिन कुछ नहीं था। कुछ झाड़ियों में कुछ मोर चला और ये लोग ऐसे करके, उनको लगा गेस्ट जब आएंगे तब आएंगे, भालू पहले आ गया, भालू पहले आ गया सबको। तो टू कंट्रोल द, बिकॉज अब यहाँ पर जैसे सिटीज में तो सब ट्रेन स्टाफ है, दे आर फ्रॉम अ होटल बैकग्राउंड, तो दे हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो
वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको कैसे मतलब ग्रूम करें कि ये सब चीजें लास्ट मिनट पे ये जो एक्चुअली सरप्राइज हमारे लिए सरप्राइज बन गया वो नहीं हुए। तो ये सब चीजें छोटी छोटी डेली आती रहती हैं, बट दैट्स द जॉय ऑफ वर्किंग इन सच एरियाज, यू नो, बिकॉज वी हैव basic, I mean, people who haven't studied beyond class 5, people who've never been to school, creating experiences which guests are paying for much more than a city hotel. So that is what is, you know, something which I really like doing. तो हम लोगों को याद रखना होगा कि हर बार जब झाड़ी में सरसराहट हो तो कोई भालू नहीं है। थैंक यू सो मच, आप चारों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप लोग अपने काम से अपने प्रदेश और नौजवानों को रास्ता दिखाते रहेंगे। यू विल बी अ रोल मॉडल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Please settle down. This is the grand finale of the India Today MP First Conclave, and it is both a great pleasure and honor to have Mr. Kamal Naad here, an old friend, but first let me describe him as a veteran Congress leader, one of the longest serving parliamentarians, union minister who held a host of important portfolios, and we met first time in 1992 at the Earth Summit. That's a story that we should talk later about. He was Mr. Third World at that time, defending India's rights and the Third World rights. And apart from that, more recently, former Chief Minister of Madhya Pradesh, Mr. Kamal Naad. Let's give him a very warm round of applause today. So let's begin at home, Kamalji. It's been what, 2 years and 5 months since you resigned as Chief Minister. Are you missing power?
नो आई एम नॉट मिसिंग पार. द गवर्नमेंट वेंट. ये सौदा करके जो सरकार बनी, मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर सौदे की कुर्सी पर मैं नहीं बैठना चाहता था. ये मेरा विधायक तो मुझे कह रहे थे हमें इतना पैसा मिल रहा है, मैंने कहा मौज करो, क्योंकि मैं सौदा करने वाला नहीं हूं और मुझे कुर्सी का की कोई लालच नहीं थी. सरकार गई कल के बाद परसों भी तो आता है. हाँ, वही बात पूछेंगे. What is your plan to win back Madhya Pradesh? You've got another elections virtually around the corner now. 1 year and a couple of months to go. हमारा मुकाबला केवल बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के संगठन से है. ये बात हमें सबसे प्रमुख है. दूसरी कि हमें पहचानना पड़ेगा कि राजनीति में कितना परिवर्तन हुआ है. 5 साल पहले, 10 साल पहले, जब मैं 42 साल पहले अपना पहला चुनाव लड़ा था, उस समय की राजनीति अलग थी. आज का समय अलग है. 5 साल पहले का समय अलग है. पहले 5 साल पहले 25% लोग सोशल मीडिया में थे. आज 95% सोशल मीडिया में हैं. जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है. ये आज बहुत बड़ा अंतर है. हमें ये जो परिवर्तन हुआ है राजनीति में, ये परिवर्तन केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, देश भर में है. देश भर में परिवर्तन हो रहा है राजनीति में, सोच में, समझ में, आशाओं में, स्वप्नों में. ये आज हमें पहचानना पड़ेगा. ये भीड़ जमा कर ली, बहुत बड़ी सभा हो गई, सरकारी भीड़, शासकीय भीड़ जमा कर ली, और जैसे आप ठेकेदार को देते हैं, जो होता है मध्य प्रदेश में, आप ठेकेदार को कहते हैं शामियाना लगा देना, तंबू लगा देना और 5000 कुर्सी ले आना और 5000 लोग भी ले आना. ये इससे ये जन समर्थन नहीं है. But your own party, apart from the MLAs that deserted you, continues to fragment. नहीं, हमारे पास Are you able to? जो जीतने वाले नहीं है, अगर वो जाते हैं और बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है वहां, उनको तो रोका नहीं जा सकता, जाए. So what are you doing to build your party strength? हम गांव लेवल तक, पहले हम एक मकान को देख के कह सकते थे, एक गांव को देख के कह सकते थे ये कांग्रेस का है. आज एक मकान को देख के हम नहीं कह सकते. बाप, बेटा, भाई, भतीजा, चाचा, चाची अलग अलग वोट देगा. तो जब तक हमारा गांव में संगठन ना हो, मैं मंडल सेक्टर बना रहा हूं और इसमें सही लोग आए. और मैं तो ये कहता हूं कि ये बात नेताओं को समझनी होगी. हमारे नेता जो हैं, किसी भी पार्टी के हों, अन्य पार्टी के हों, दे कैन बी ऑफ एनी पार्टी, unless they understand the change politics, they'll be wiped out. हम जैसे उत्तर प्रदेश में इतने कमजोर हैं क्योंकि हमारा गांव में संगठन नहीं है. वो कहता है रात को अगर मेरा बेटा बीमार हुआ, मैं क्या कमलनाथ को ढूंढने जाऊंगा? ये आज प्रश्न है कि आपका गांव में क्या संगठन है, हर वार्ड में क्या संगठन है. Talking about wards, the recent civic polls, municipal polls were there. How has the Congress done? You seem to have won some, but you've lost a lot also. No. We have done well. The question is, where were we and where we reached? This was a rehearsal. ये rehearsal था. हम पहले कहां थे और अब हम कहां पहुंचे? प्रश्न इस बात का है. और बीजेपी ने जिस प्रकार से पुलिस, पैसा और प्रशासन का उपयोग किया, अगर जन समर्थन था, if they have support of the people, they didn't need पुलिस, पैसा और प्रशासन. किस तरह रिजेक्ट कर रहे हैं, किस तरह दबाव डाल रहे हैं. पुलिस जाके उसके घर जा रही है कि भाई आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, हम आपके घर की तलाशी लेंगे, आप शराब बांट रहे हो. किस तरह से ये पूरे प्रदेश भर से शिकायतें आई. क्या आवश्यकता थी? आपके साथ जन समर्थन है, आप जीतिए. तो ये एक बहुत अच्छा रिहर्सल रहा और मैं मानता हूं कि हमने बहुत सफलता इस पे प्राप्त करी. Now, you all had won Gwalior as well as Marina. What is the significance of that? And your old friend, or is he foe now, Jyotiraditya Scindia? You see, it's not a question of foe or friend. The people there have voiced where they are. And as I said, politics has changed. Politics has changed. And this changed politics, this is a reflection of the changed politics. That in Gwalior and Morena, the Congress won.
such a big leadership of the BJP. So that's what the people want. Aaj, there is an atmosphere of change. 2018 we won. We didn't win because of anything else, but the people made us win. But they say that it was BJP that lost. The Congress just about got a majority. Fine, we got a majority. BJP came down substantially, and we went up substantially. Right. You got to make it relevant. You got to look at it relatively. And then the government was hijacked. Fine. You think people don't understand this? How the government fell. And in 15 months, which I had, 2.5 months went in code of conduct, Lok Sabha election. In 11.5 months, हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया. जनता गवाह है. अगर हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, शिवराज सिंह जितनी नाटक कर लें, जितना झूठ बोल लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ये आंकड़े तो मैं विधानसभा के आंकड़े बता रहा हूं. जो बिजली की बात थी, जो किसान के खाद और बीज की बात थी, all this is there. You think people don't understand this? You didn't mention about Jyotiraditya Scindia. You avoided the question. Do you still talk to him? What is your relationship with him? And what is your feelings to him 2 years later? My relationship with him is like that of any other BJP leader. He was a friend of mine, and you can't erase the past. But now that he's a BJP leader, the way I look at all BJP leaders, I look at him. Talk to him? You still do? I talk to him occasionally on something or the other. So there's no animosity. No hurt from your side that he betrayed you? You don't feel hurt in politics. Remember that. Let us come back to what you said earlier about Shivraj Singh Chauhan, the current chief minister in his 4th term. How is in these 20 odd months, how has he performed? It's more than 24, 2 years now. 2 years and 30 years. If he had performed well, if he had really built up something in the state, ये नाटक नाटंकी से आपको तो उनको न्यूज़ चैनल में आप क्यों बुलाते हैं? उनको मनोरंजन के चैनल में बुलाइए आप. हाँ. So, but tell us, what is he doing wrong? I mean, you were chief minister, you understood the issues. What are the things that you think he's... सबसे पहले तो वो झूठ बोलना बंद करें. आज जनता समझती है. उनका खाना नहीं हजम होता जब तक वो दिन में 1-2 झूठ ना बोलें और तरह तरह की घोषणाएं कर देंगे. 20,000 घोषणाएं, 20,000 announcements is made. It's a matter of record. 20,000 announcements in 20 years. What has been delivered? And we must remember one thing. People forget this. You announce a scheme, and I have seen this firsthand because nobody has contested or won more elections than me or conducted more elections in this country than me. You have a scheme, 20% are beneficiaries. The 80% who don't become beneficiaries go against you. मुझे नहीं मिला, इसको क्यों मिला? Then, in the delivery mechanism, the corruption, आप किसी को आवास योजना में मकान दे रहे हैं, उससे इंस्टॉलमेंट के लिए आप 20% भी इकट्ठा कर रहे हैं. And Shivraj Singh has institutionalized corruption. Institutionalized corruption. उन्होंने भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई है, पंचायत से लेके मंत्रालय तक. ये मैं नहीं कहता, ये आम जनता कहती है. पैसे दो, काम लो. You are giving, you say I will give to unemployed so much money or whatever. But जो देने वाला है वो कहता है 20% मुझे दो. आज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स में अभी एक बहुत बड़ा कांड हुआ धार जिले में. मैं गया था वहां. एक डैम मिट्टी का बना हुआ, सबने देखा, मिट्टी का डैम है, डैम बह गया. ये पहली बारिश थी डैम की, क्योंकि अगर ठेकेदार को इतने पैसे देने पड़े घूस में, वो ऐसा ही डैम बनाएगा, मिट्टी का बनाएगा. वो कंक्रीट का कैसे बनाएगा? अपने बीबी के जेवर बेच के तो नहीं भर जाएगा ना. You're talking about the welfare schemes. What is your stand on freebie versus welfare? That has become a huge debate where the Prime Minister talked of a Revdi culture. That must end. Where do you stand on this debate? You see, what is a freebie? I don't understand. There's a difference between a right. Now, when you say there's a right to education, there's a right to food,
It's not a freebie. It's your right. Now, when you talk of below the poverty line or you talk of the economically weaker sections, how do you call it a freebie? So we got to distinguish between a freebie. If you're giving industry a handout, that's a freebie. But जो गरीबी रेखा से नीचे है, जो गरीबी रेखा के आसपास है, जो गरीब है, वो फ्रीबी उनको कैसे कह सकते हैं हम? कि उनको भी तो अपना घर चलाना है, उनको भी उनकी रोजी रोटी की आवश्यकता है. This is what Arvind Kejriwal says. So are you in tune with him as well on this one? What is your opinion about Arvind Kejriwal? Arvind Kejriwal may be in tune with me. I'm in tune with myself. Coming to what Shivraj Singh Chauhan ji was here this morning, and he talked of the employment he's providing. The figures range from 1 lakh to 32 lakh or whatever it is that he's supposed to do. What is your sense of some of the promises he's made? He's also talked of industry coming here, that he's expanding it considerably. He's spending money on that. सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे देश भर में मध्य प्रदेश में. सबसे ज्यादा पलायन, people who migrate to other districts, to other states, मध्य प्रदेश. And 1 लाख, उनसे कहते हैं आप जरा ये हमें भेज देंगे नाम, 1 लाख कौन से हैं? ये टीवी के सामने बैठ के कुछ भी बोल दो, ये और निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट विल कम. इन्वेस्टमेंट comes by a vision. There's a difference between vision and television. And that is the point. So he's saying we are getting investment. He held for 15 years, he held investment summit. After every investment summit, he announced 70,000 crores, 1 lakh crores. I mean, the record is there of investment will come. But investment is an article of faith. You cannot demand investment. You got to attract investment. And that is it. Why will anybody come to Madhya Pradesh? The unfortunate part is, Madhya Pradesh 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है. जो आज तमिलनाडु या केरल में अपना सामान बेचता है, वो अपना उद्योग, कारखाना, फैक्ट्री लगाता है पंजाब और हरियाणा में. मध्य प्रदेश क्यों नहीं आता? मैंने भी एक सम्मेलन किया था उद्योगपतियों का, सबसे बड़े उद्योगपति देश भर के उसमें सम्मिलित हुए थे. मैंने कोई अनाउंसमेंट नहीं करा, कोई घोषणा नहीं करी. मैं मध्य प्रदेश की एक नई पहचान, अ न्यू रिकग्निशन ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश की पहचान क्या माफिया से होगी? मध्य प्रदेश की पहचान क्या मिलावट से होगी? So you have to show them that you are performing. One large company who wanted to come to Madhya Pradesh, I called them, I knew them all. In my years as a central minister, I've known the biggest industrialists. I said, why don't you come to Madhya Pradesh? Madhya Pradesh क्यों ना आते? कहते 3 साल तो हम जमीन के लिए रुके हैं, हर कदम पर पैसा दो, इसीलिए हम नहीं आते. They've set up a huge plant somewhere in Punjab or Haryana. मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आते? As I said, जब तक विश्वास उस प्रदेश में ना हो, आप उसी दुकान में जाते हो अपनी खरीदी के लिए जहां विश्वास होता है. पर अगर प्रदेश पर विश्वास नहीं हुए, कोई निवेश आने वाला नहीं है. आप यहां आके टीवी के सामने कुछ भी बोल लो, उससे कोई निवेश नहीं आएगा. नो इन्वेस्टमेंट विल कम. I see that the bulldozer culture has come to Madhya Pradesh. We had a debate just before your session on this. Where do you stand on that? And the fact that the chief minister is now getting a moniker called Bulldozer Mama. You see, शिवराज सिंह पहले कहते थे मैं किसान का बेटा हूं. सबसे ज्यादा आत्महत्या देश भर में किसानों की मध्य प्रदेश में, ये किसान का बेटा है. तब कहने लगे मैं मामा हूं. सबसे ज्यादा महिलाओं का अत्याचार पूरे देश भर में. आई एम कोटिंग यू फिगर्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स. सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश में. अब ये कहते हैं बुलडोजर. अब इनके पास यही बचा है बुलडोजर. अब 13 महीने चलाने कितना बुलडोजर चलाना चाहते हैं, ये याद रखिएगा कि 13 महीने बाद ये बुलडोजर उल्टा ना चलने लग जाए. Does Shivraj ji ever come and consult you, talk to you as a former chief minister and about the plans ahead? Do you have a relationship of any kind? नहीं, शिवराज सिंह जी जब मैं केंद्र में मंत्री था हम बहुत मिला करते थे. सबसे ज्यादा पैसा आज जो ये सड़कें देखते हैं, 4 लेन देखते हैं, 2 लेन देखते हैं, मैंने मध्य प्रदेश को दी. उन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया. जब मैं शहरी विकास मंत्री था, ये सब
ये मेट्रो की योजना मैंने बनवाई। मुझे तो कहते थे हमारे पास पैसा नहीं है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का, कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेट्रो की बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए लगता है। मैंने कहा मुझे पत्र लिखिए, मैं आपको पैसा देता हूं। तो मेट्रो भोपाल की हो या इंदौर की हो, मैंने शिवराज सिंह जी को कहा था कि मुझे शर्म आती है कि मध्य प्रदेश में मेट्रो नहीं है, तो मेट्रो तो होनी चाहिए। तो इंदौर और भोपाल की मेट्रो की योजना मैंने, जब मैं शहरी विकास मंत्री था, बनवाई थी। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने कहा इसको फौरन, वी मस्ट स्टार्ट दिस मेट्रो प्रोजेक्ट इमीडिएटली इन अ टाइम बाउंड मैनर एंड नॉट handouts to contracts to people who are connected with you, but on merit. You have to have. You are seeing आज हमारे पुल टूट रहे हैं, कितने सारे पुल टूट रहे हैं, कितने सारे रिप्टे टूट गए, कितने डैम और फटेंगे। ये क्यों? क्योंकि सबसे पहले भ्रष्टाचार, उसके बाद घटिया ठेकेदारों से काम करवाना। एक स्टैंडर्ड होता है, वो उसका पालन आप कर नहीं सकते क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा, घूस नहीं मिलेगी। Are you willing to stay in Madhya Pradesh and fight? The impression is that you keep flitting to Delhi all the time. You're most of the time there. You're not interested in Bhopal. What is the criticism is that? What is your view on this? I have not been to Delhi for a long time. Everybody knows that. मैंने कहा था कि What is a long time in your opinion? I've not been, I think, for close to 3 months. Okay. मैं दिल्ली नहीं गया। हमारे चुनाव चल रहे थे यहाँ, नगर निकाय के, जनपद के, जिला परिषद के। तो मैं अगर जाना पड़ता है, मैं 1-2 दिन के लिए जाता हूं, वैसे कोई लंबा मैं यहां से नहीं जाता। और मैं 23 में यहां मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया प्रदेश को, मैंने अपनी जवानी समर्पित करी प्रदेश को, और अब मैं जाऊं यहां से, ये मैं खुद स्वीकार नहीं कर सकता। मैं यहाँ रहूंगा। But the impression came because you gave up the leader of the opposition post. It looked like you were giving up the fight. ये मेरे पास 2 पोस्ट थे, मैं अध्यक्ष था और प्रतिपक्ष लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था। मैं महीनों से कह रहा था कि ये प्रतिपक्ष का नेता जाके विधानसभा में बैठो और शिवराज सिंह की बकवास सुनो, ये मैं सुनने को तैयार नहीं था। तो मैंने कहा कि ये जो सबसे हमारे वरिष्ठ विधायक थे उनको बना दिया जाए, और वही बन गए। मेरे से तो प्रेस ने पूछा था कि शिवराज सिंह जी इतराज कर रहे थे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठे नहीं है, जब मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा जिस उस समय में मैं 200 लोगों से मिल सकता हूं, उनकी बकवास मैं क्यों सुनूं। But you see yourself as this is the fight of your life, you feel. You've been in politics for so many years. Do you see this battle as your most important battle that you're fighting right now? You see, there is a difference between achievement and fulfillment. For me, this is a matter of fulfillment. I'm not looking to be that I'll necessarily become the chief minister, that I'm fighting for the chief minister's chair. I'm looking for fulfillment. And that is my goal. The Congress party, and let's talk a little bit of national politics now, is waiting for a president. The presidential poll is supposed to be scheduled for next month. But what is the mood in the party? Is Rahul Gandhi willing to contest? I don't know whether he's willing to contest. The question is, if he chooses to contest, very good. Because he represents a change in politics, a new thinking in politics. We must remember that. That's why people find him sometimes to be strange. He's not strange. He's got the new ideas of politics. And that is the important thing. Now, those ideas to trickle down may take time, but they will trickle down. But, you know, can Congress have a non-Gandhi president? Why should it always have a Gandhi to be president? Why can't you have someone, I'm saying in the recent past, why can't you have a non-Gandhi president? Someone like you, for instance. We've had non-Gandhi presidents. That's been some distant. Yeah, but there's a rallying point. There's a rallying point, and Rahul Gandhi is a rallying point across the country. I understand this country is a rallying point. Sitting in Delhi, Mumbai or Bangalore, without knowing what the ground is, people will make all kinds of statements. कहेंगे नहीं जी राहुल गांधी का क्या है, पर वो तो शहरी व्यक्ति हैं। शहर में केवल 55 सीटें हैं, हमारे जो बड़े शहर हैं। लोकसभा के केवल 55 सीटें हैं। There are only 55 seats.
And these cities think they know the country. I don't know whether that applies to much of your India today, but that is a fact. That's a neat dig. No, that's not a dig. I'm saying it for us because I understand it. People will talk about, the question is, this country lies, is across. There's no country in the world. ऐसा कोई देश नहीं है अपने विश्व में जहां इतने धर्म हुए, so many religions, इतने जातियां हुए, so many castes, इतनी भाषाएं हुए, इतने त्योहार हुए, इतनी देवी देवताएं हुए. ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जिन्होंने अन्य धर्म को भी जीवित किया. जो अन्य धर्म, they were born here, whether it's Sikhism, Buddhism, Jainism, इनका जन्म भारत में हुआ. ऐसा कोई देश है विश्व में? Do you see that desh that you're talking about splintering now? Do you see major problems across the country? You see, it's the ethos of this country. हमारे देश की संस्कृति जो है, इस संस्कृति पर हम अगर टिके नहीं रहे, on this ethos, जो जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने. Are those values decreasing with the BJP government and the Modi Absolutely. government? I think there is a massive attack on हमारे संस्कृति पर जो हमला हो रहा है. ये बहुत खतरे की बात है. धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, और ये जो प्रयास किया जा रहा है, हम कोई समाज लें, हम आदिवासी समाज लें, वो कहेंगे कि ये तो गोंड है, ये कोल है, ये भील बिलाला है, ये कोरकू है. तो इस तरह अगर ये बांटा जाए तो ये आवाज जो इतनी ऊंची आवाज हो सकती है, जब सब मिल के आवाज उठाएं, वो आवाज ऊंची नहीं. ये क्यों डरते हैं इससे? तो हमें ये संस्कृति को सुरक्षित रखना है. Now, supposing Rahul Gandhi does not agree to be the president, why don't you? I mean, look at, there's no one better than you. You know 9 terms as Lok Sabha MP. You know every chief minister that is there. You're the senior most leader. Maybe Congress needs someone like you. Why don't you? I've made it clear that I'm staying on in Madhya Pradesh. Now, if it means not being in Delhi, not being in Delhi. I said this, I've been saying this for some time, that nothing will tempt me to leave Madhya Pradesh. So you still believe that the best bet is a Congress headed by the Gandhis? Well, as I say, that's a rallying point. Every party needs a rallying point. And this is a rallying point for the party. Then you got to build a structure. One president can't do anything. It's got to be the structure beneath. And it's the structure beneath which is most important. Because every state has its own chemistry. You cannot compare Madhya Pradesh with Haryana. You cannot compare Madhya Pradesh with Kerala. Similarly, you cannot compare Maharashtra with Bihar. Every state has its own chemistry. That is the important thing. Now, if Rahul Gandhi, and since it's all around the corner, if he doesn't stand, do you think Priyanka Gandhi should? Why not? I think if it's between the party to decide and them to decide. But she would also be a very good leader. And you were talking about organization. It is always felt that the Congress has leaders but no organization. What do you think needs to be done for the Congress if you have to revive it? Well, we're going to have a organization in every village. We're going to take the party downwards. And the thing is that, why are we so weak in Uttar Pradesh? We don't have any party organization in the villages. And that's what I'm trying to build in Madhya Pradesh. And this is the biggest challenge. Not only to have an organization, not only to have names and faces, but to have the right names and the right faces. जो सही लोग हों, उनकी चयन करी जाए. ये आज सबसे बड़ी चुनौती है. हम गांव लेवल तक, बूथ लेवल तक ले जाएंगे. ये आज आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हर वोटर के पास, हम अभी 4 चुनाव पिछले 8-10 महीने में हुए उपचुनाव. There were 4 by-elections. We won Raygaon after 31 years. We won Damo against a formidable opponent. We lost Prithvipur because of police and Pesa. We lost Jobat. People say candidate theek nahi tha, whatever reason. But the 2 we won,
We won because we had a ground level organization. That was the reason we won. Shouldn't your party be taking a leaf from the BJP party, which is really a juggernaut when it comes, the way it organizes right up to the booth level? They've managed everything down the line. Why can't Congress do that? We are going to do that. And this BJP is saying that we've got booth level. All this humbug, I understand. I know what is their booth level. Okay, I know exactly what their organization is. And saying it and publicizing it more in the media, they have a formidable organization, undoubtedly. But we will also build a formidable organization. हमारा जो संगठन बनेगा, उनके मुकाबले में कम नहीं रहेगा. You know, Sonia Gandhi has fallen, whenever there's been a crisis, she's called you to sort it out. Yet you seem to have no major sort of position in the Congress. You're not in the CWC, you're not even in the recent Political Affairs Committee. Aren't you feeling a little neglected from this? No, I'm not. Why not? I'm doing what has to be done. She's given me the responsibility for Madhya Pradesh. Why should I dilute it? Why should I diffuse it? इसका बिखराव मैं क्यों करूं जो मुझे जिम्मेदारी है? मेरे पास समय नहीं है. मेरे पास समय नहीं है अन्य चीजों में इन्वॉल्व होने का. मैं तो खुद कहता हूं मुझे किसी चीज के लिए मत इन्वॉल्व करो. अभी अक्टूबर 23 तक मैं किसी चीज के लिए अवेलेबल नहीं हूं. Okay. Shivraj Singh Chauhan ji was, not in this time when this BJP's parliamentary board was reconstituted. His name was not there. Gadkari's name was not there. What is your opinion on that? Is he being demoted in some way? अब ये बीजेपी जाने किसको रखे किसको नहीं रखे. मुझे इसमें क्यों मेरे पेट में दर्द नहीं होता. वो रहे या नहीं रहे. वो जिनके पेट में दर्द होना होए. Why should I exercise my mind on this? ये क्यों नहीं है, क्यों नहीं रखा, इसको क्यों रखा? मुझे क्या लेना देना इनसे? Maybe he's like you. He wants to fight here itself. Maybe. But if he wants to fight here, let him remain here. That's what he's doing. But if he's not included in any committee or not there, that's BJP's issue. Let them decide. Before, I want to come back to the Congress party, and Amit Patel was there, and he was seen as a kind of a glue, and the old guard and the new guard, he could do things. He's no more. There is a search for a person like that. And again, I come back to it. You seem to be the perfect fit. Well, it's not a question of a perfect fit. Where there is something which is urgent, where there's need to talk to people, I talk to people. I can talk to all chief ministers. I can talk to all party leaders. I've known them for last 30, 40 years when they were starting. So when there is a need, I will do so. But that I can do on the telephone. I don't have to leave Madhya Pradesh to do it and get actively involved. I can perform some tasks as long as it doesn't deflect me away from the state. Now the country, I know you're saying no vacancies. You're going to stay right here. But coming to the organization and particularly the Congress, look at this. You have an economic crisis across the country. There's unemployment, there's inflation, and yet the Congress party is not able to build a substantial opposition against the BJP. Isn't that a failing? Well, the people are understanding it. Holding a huge rally, we are doing our yatras in Madhya Pradesh. Every state is drawing attention to what's happening in the country. The economic crisis, there's a difference. They'll give you fancy GDP figures. What is GDP? What does GDP translate into? At the end of the day, it's economic activity. What is your index of economic activity? आर्थिक गतिविधि क्या है? जिसके किराने की दुकान गांव में चलती है, वो जीडीपी से नहीं चलती. उसके आंकड़े जीडीपी में नहीं आते. जिसकी छोटी सी एक दुकान है, एक टपरा है शहर में, वो जीडीपी में नहीं गिना जाता. They are not a part of the market economy, but they are a part of our economic activity. So today, economic activity is tremendously down, starting with demonetization. So this index of economic activity, I used to quarrel with the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, and other economists on this issue. That what does GDP translate into? Does it translate into jobs? Does it translate into better trade? Does it translate into investment?
इन द एंड इट इज आर्थिक गतिविधि में क्या हो रहा है. जो एक पान का ठेला लगा लेता है वो उससे आर्थिक गतिविधि बनती है. Why can't the Congress come up with a counter narrative that is convincing for the people? What is the counter narrative the opposition should have? The counter narrative is very simple. Unemployment, the agricultural sector. Our country is 50% dependent on agriculture. Not 50% are not farmers, but they are agriculturally dependent. Who do two-wheelers manufacturers depend upon? On agriculture. Who does tractor people depend upon? Is agriculturally dependent. We must understand. In Madhya Pradesh, 70% हमारी अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है. हमें ये याद रखना है, कृषि क्षेत्र पर आधारित है. जो भोपाल या इंदौर का बाजार चलता है, कोई दिल्ली से नहीं आता खरीदी करने के लिए. जो किसान है उस की खरीदी पर वो डिपेंड करता है. So, if you look at the opposition party now, do you think they could come together with the consensus? Who should lead this opposition party? Should it be the Congress? Where do you stand on this? So far, you have not been able to come up with a convincing alliance to defeat the BJP. I think this is going to happen. In the end, the atmosphere will build up. You've seen it all. You've seen it all, how atmosphere builds up. You had I was General Secretary of the Congress in 2004, and I was traveling with Mrs. Gandhi. One day she asked me in the last campaign, that in the last meeting, what's going to happen? I said, there won't be a NDA government. She said, no, I'm asking you, we are coming to Tamil Nadu, what will happen in Tamil Nadu? So I told her what I think will happen. Now, Bajpayee ji was a prime minister who was largely loved by the people. Can you say this about Mr. Modi? I'm asking you this question. You say, this is your show. No, I'm saying it's a very obvious answer. Being loved is one thing, being feared is another thing. Right? You will go with the person who's loved or with the person who's feared. Well, let's see, but let us look at opposition leaders. Now, you had Nitish Kumar walk out of the NDA government, form a government with the RJD and Tejasvi. Where do you think Nitish Kumar could be a rallying point? Who is the opposition leader you feel could turn the tide, if you could call it that? Nitish Kumar understands the ground. He's walked out, understanding the ground realities. Let's remember that. Right. Okay? He was with me in the 7th Lok Sabha. He was with me in the 8th Lok Sabha. I've known him well. In fact, I talked to him 7 days ago because he's been a very old friend. He's seen the reality. And he thought it's better to dump the BJP than to carry the baggage of the BJP. Why? Why? Because he senses the mood of the people. That he's not an opportunist. I mean, what opportunist? He was chief minister. What was the opportunity he was looking for? There's no other opportunity. So he decided to dump the BJP, knowing that this is going to be a burden. So you think this is a turning point? Of course, everything in politics triggers something. This will also trigger something. What is your view of Arvind Kejriwal? Now, in the India Today Mood of the Nation polls, he seemed to have emerged ahead of the others in terms of, heading an opposition coalition. Need not necessarily have the Congress include. What is your opinion about him and the fact that he won Punjab, the AAP won Punjab as well? Well, Arvind Kejriwal is limited to Delhi. Let's see this. Now Punjab. Now Punjab, but Punjab also by, I say more by default than by anything else. We gifted it to him. Congress gifted it to him. Let's remember that. Arvind Kejriwal to spread himself across the country is very difficult. There are 4.5 lakh villages. 4.5 lakh गांव हैं अपने देश में. हर गांव में आप 3 चीजें देखेंगे. एक फूल का झाड़, एक पूजा स्थल और एक कांग्रेस कार्यकर्ता. Okay, finally, I think we are just a couple of personal questions now. Looking back at what happened, why did you lose the chair? Why did you have to resign as chief minister? Did you see the threat coming? I knew the threat from many months. MLAs would come and tell me, हमें इतना पैसा दिया जा रहा है, ऐसा अभी इतना पैसा मिला तब second installment मिलेगा.
I could see it happening. I was not unconscious of it. It didn't come as a surprise. And that is it. I saw it coming, but I was not going to play the card that I come and now play the same card as the BJP. I was very clear on that. You've known me to take positions. He was with me. ये मेरे साथ पृथ्वी सम्मेलन में 92 में थे. पृथ्वी सम्मेलन जब मैं देश का पर्यावरण मंत्री था. You have seen the stand I took against the biggest powers at that time, right? And so, what position I took with conviction, not as a bargain. What was the breaking point, actually? I mean, people would say a leader should be able to diffuse these crises, win over people that are doing this thing. Could you have done something to prevent it? I could have also made a deal, but I was not willing to make a deal. मैं सौदा करने के लिए तैयार नहीं था. और अगर बनती है इनकी सरकार, ठीक है, बना लें. I knew. They said that they've kidnapped them. I told all our people, इनको kidnap नहीं किया, ये मर्जी से गए हैं. They used to talk to me from the hotel in Bangalore. हाँ कि हमें आज इतना पैसा मिला है, इतना पैसा मिला है. They used to tell me. So I said, take the money. Some of them did not even know where to keep the money. One MLA came to me one day. I was in the chief minister's house. That I've got so much money. So I said, very good, मौज करो. तो कहता है, मैंने कहा, मैंने सोचा ये हवाबाजी कर रहा है. मैंने कहा, है कहाँ? इसे मेरे मोटर में पड़ा, आप मेरे लिए जमा कर लोगे? Finally, do you have any regrets of that whole period? Anything that you really feel? Well, my only regret is that I was not able. I tried to create a new vision for Madhya Pradesh. I could not complete it. It was an incomplete task. I had initiated it. We came into government after 15 years. You had bureaucracy, IAS and IPS officers who had only known the BJP government. Everybody has his own style of functioning. I'm not being critical of anybody. I knew government. I had initiated certain things. I had priorities. One of my criticisms is that I didn't give enough time to the media. True, I didn't. Because I thought I'll do it 2 months later. The press would say, आप मुझे हमसे कभी मिलते नहीं हैं. I said, मैं बाद में मिलूंगा. जल्दी क्या है? मैं काम तो चालू करूं. I had to completely change, have a systemic change. There was no sense of urgency in anything within our system. There was delivery systems. It's not having a scheme, it's the delivery system which must be perfect. Unless इसकी delivery system ठीक होता है, इसका कोई मायने और मतलब नहीं है. Finally, you said you have a vision. What would the vision you would present Madhya Pradesh when you go to the polls? What is the government you will really bring? First, the biggest challenge is unemployment. And unemployment cannot come without investment. One industry leads to such economic activity. Somebody will start a dhaba, somebody will start a bus service, somebody will start operating trucks. I had a very major cement company come to me who were not in Madhya Pradesh. And they said, okay, we'll come, we want this land, we want these quarries, we want this mining. I said, done. But I have one condition. I said, what will be the capacity? He said, so many million tons. So I said, so how many trucks will move out? He told me that 500 trucks per day will move out. That means going and coming back after 1 week or 8 days. How many trucks is that? That will be about 3,000 trucks. I said, 3,000 trucks must be Madhya Pradesh registered. That will be my condition. So one industry creates this. The question is to attract investment. Attract investment. Next is in agricultural sector. The farmers access बीज और खाद के लिए किसानों को कितना भटकना पड़ा. बीज और खाद के लिए आज क्या भाव हो गए. और ये आज उसको बोनी करनी है, बीज नहीं है, उसके बाद उसके पास खाद नहीं है. Because there is a systemic failure. It's not that they are short of fertilizer. बीज की कमी नहीं है हमारे पास, खाद की कमी नहीं है, पर जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, we'll have to change all this. Accountability, कि इसकी जिम्मेदारी दी जाए. मैं गया था, बाढ़ आई थी नीमच मंदसौर में. मैं वहां गया, मैंने कहा आपको मुआवजा मैं दिलवाऊंगा. मैं वापस आया तो कहते हम सर्वे करेंगे.
मैंने कहा किस चीज का सर्वे करेंगे? तहसीलदार जाएगा। मैंने कहा हफ्ते भर में इनको मुआवजा मिले। आज ये लोग गवाह हैं। मैंने कहा फाइल का पेट बाद में भर दीजिएगा। हाँ, मुझे इनका पेट भरना है, आपके फाइल का पेट नहीं भरना। And they got it within a definite time. What would be the slogan that, a catchy slogan that you'd say that if you come back, this is the kind of government? The BJP is already saying 200 seats milna agli bar. What is your slogan? BJP said that in 2018 also, 200 पार। अगर शिवराज से पूछे वो हमारी 230 सीटें, वो कहेंगे 250 पार। हाँ, तो मैं शिवराज नहीं हूं। मैं ये नारों पर, इन घोषणाओं पर नहीं चलूंगा। मैं कहूंगा मैंने नीति और नियत का परिचय दिया है। अब आप चुन लीजिए, 20 साल इनका देख लीजिए और हमारे 15 महीने गिन लीजिए। Kamal Naad, you're a man of time. We've run out of time. Thank you very much. Ladies and gentlemen, let's give a very warm round of applause for Mr. Kamal Naad, former Chief Minister of Madhya Pradesh. Thank you very much, sir.